Good morning, everyone. Morning, ma'am. Good morning. Namaste. Good Hare morning, Krishna. ma'am. Namaste. Jai Hind. Good morning. Okay. You guys are ready Yes, for ma'am. your breathing session? Okay. Yes. Now, everyone make your back straight. Lift your chest up. Roll your shoulder blades back and relax. Elbows towards your body. Palms up towards the ceiling. Once you are comfortable, gently close your eyes. Now connect with your best friend, your breath. Only you and your breath. Just see how you inhale, how you exhale. Only and only connect with your breath. Effortless breathing. Just see how you inhale, how you exhale. Slowly bring your awareness towards your nostril. And see how the cool air goes in through your nostrils. And a warm touch of air goes out through your nostrils. Full awareness towards your breath. Just outside your nostrils, see how the cool air goes in. Feel the sensation. And a warm touch of air goes out. Now slowly make your inhalation and exhalation long. Slow, deep, long inhale. Slow, deep, long, controlled exhale. Full awareness towards your breath. And slowly lengthen your inhale and lengthen your exhale. If you are inhaling in 4, try to inhale in 5 count. Count in your mind. If you are inhaling in 5, try to inhale in 6. Make your inhalation and exhalation long. Slow, deep, long inhale. Slow, deep, long, controlled exhale. Slow, deep, long inhale. Slow, deep, long, controlled exhale. Along with your abdomen, concentrate on your chest, concentrate on your throat. And with each inhale, move your concentration from your pelvis to your navel, from your navel to your heart, from your heart to your throat. And with exhale, from your throat down to your heart, from the heart down to your navel, and from the navel all the way down towards your pelvis. श्वास लेते समय धीरे धीरे पूरा ध्यान गले तक. And with exhale, move your concentration from your throat down towards your perineum, towards your pelvis, towards your Mooladhara.
effortless breathing. बिल्कुल धीमा गहरा लंबा श्वास लीजिए. उतने ही धीमे गहरे लंबे श्वास को जाने दीजिए. Now I still close. Left hand in Agyana Mudra, right hand Vishnu Mudra or Nasagra Mudra. Prepare yourself for Nadi Shodhan Pranayama. Close your right nostril with your thumb. With your right thumb. Inhale from the left nostril. Exhale from the right nostril. Very slow. Again, only and only connect with your breath. You and your breath. If your mind wanders here and there, bring it back to your breath. Count in your mind. Try to make your inhalation and exhalation long as much as you can. Very gentle, slow inhale, slow exhale. Sit like a statue. No changes in physical body except your thumb and your ring finger. Very gentle. Inhale. Very gentle, long, controlled exhale. Now, after your inhalation, close both the nostrils and hold your breath. श्वास को रोक लीजिए. Once you feel exhausted, exhale from the second one. So after your each inhalation, hold your breath. जैसे ही आप श्वास लेंगे, श्वास लेने के बाद आप श्वास को रोक लीजिए. And then exhale. After your each inhalation, hold your breath. Antaraya Kumbhak. Hold your breath. Once you feel exhausted, just simply slow, controlled exhale. So try to inhale in 6, hold for 6, exhale in 6. Only you and your breath. Last round. Once you fully exhale from your left nostril, then you can relax. Fully, everyone, fully exhale from the left and then relax. I still close. आंखें बंद रखेंगे. बिल्कुल धीमा गहरा और लंबा श्वास लेंगे. Next we are doing Brahmari Pranayam. You just first listen the instructions carefully with closed eyes. It's absolutely fine. Just close your eyes. Connect with yourself. In Brahmari Pranayam, you first have to close your ears with your index finger. Inhale from both the nostrils. अच्छे से श्वास नासिका से लेंगे.
And when you exhale, जब आप श्वास को छोड़ेंगे, make a humming sound, which is like a humming bee breath sound, bee sound. When you exhale, make a humming sound from the back of your throat. Actually, nasal sinuses are the reservoir for nitric oxide, and humming exercise can help to liberate this nitric oxide into your lungs. And there is a very deep connection. If there is a low nitric oxide, your high BP, heart disease, and many erectile dysfunctions or irritable bowel syndromes will occur. So we have to maintain this nitric oxide in our body. And humming bee breath is a very excellent pranayam or a very excellent breath work for maintaining this nitric oxide. So first, lift your hand up. Close your ears with your index finger. Chest up, shoulder relaxed, neck free. Close your ears with your index finger. कानों को बंद कर लीजिए. Now inhale from both the nostrils, श्वास लीजिए. And when you exhale, make a humming sound from the back of your throat. We do 5 rounds of humming bee breath. First, deep inhale. Ears still closed. Eyes still closed. Inhale from the nostril. And when you exhale, make a humming sound from the back of your throat. Complete your 5 rounds, everyone. Make a humming sound and feel the reverberation at the back of your throat. Every time you exhale, make a humming sound from the back of your throat. Once you complete your 5 rounds, you can rest your hands back on your lap. Now we do 5 rounds of Om chanting, but all the 3 sounds. So once you utter the sound feel the reverberation at your navel. And once you utter the sound O, feel the reverberation at your heart level. Lastly, once you utter the humming sound or the M sound, feel the reverberation at the back of your throat, just like in a humming bee breath previous in the Brahmari. Same. So all the 3 sounds together in a Om chanting. A, U, and M. A, O, Both hand in Agyan Mudra. Chest up. Deep inhale. धीमा गहरा और लंबा श्वास लीजिए. Again, inhale. You guys, 3 more rounds. Deep inhale and utter all the 3 sounds together. One more. Again, inhale. Last one. Again, inhale.
Complete your 5. Complete your 5 rounds and then relax. Once you complete, you can. Now everyone relax. Rub your palms and do cupping on your eyes. Once you feel the warmness, then do cupping on your eyes. One more round. Rub your palms. Do cupping on your eyes. Gently open your eyes into your hands. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Neva. Thank you, Annie. Thank you so much. Thank you, everyone. I feel that take good care, Neha. Yeah. I sense that you have some issues with the throat. My throat, yeah. Actually, 6 to 7, 7 to 8. अभी end में आके last hour में थोड़ा अभी half an hour का actually I have time 10:30 से class है. No, okay, 1 hour का भी time है आज. तो इतने rest होगा. हमारा टूल ये है. इसीलिए हमें और उसको रेस्ट नहीं मिलता है. हमारा वही कहती हूँ ना, हमारा शस्त्र ये है. That's it. Okay. Thank you, everyone. Shukriya. Hare Thank Krishna. Bye. Hare Krishna. Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, good morning. Good morning. नितिन जी, आप बिल्कुल आज अच्छे जैकेट में हैं. Very good. It started to become a little bit cold, ma'am, here in Gurgaon. Yeah. Same here in Ghaziabad and Noida. आज तो सूरज थोड़ा चंद्रमा जैसा दिख रहा है फिलहाल अभी तक. अब कब वो सूरज, of course fog है तो धूप तो आएगी, but we'll have to wait. कब तक आएगी? Good. Good. So you are there in Gurgaon? Yes, ma'am. My battalion's at the Sona Road in Gurgaon. अच्छा, Sona Road. तो आप पास हुए, हमारे पास ही हैं इसका मतलब. जी मैम. NCR के national capital. Yeah. Good. Great. Good to see. So welcome to day 8, as discussed yesterday. In fact, yesterday it was a very different day. We started with our regular meditation. Then there was a session on Thrive. And then it was coaching for solutions, where we had a great discussion between coach, leader, and coach. And then there was a session in channelizing stress, in which we had a great model, which was about pressure and performance. Today, we are going to talk about one of the 7 talents of a leader. The theme of today's session is, or today all the sessions is, developing your organization. We start the day with leading through change, followed by building organizational culture. And then we'll talk something about inclusion and then resilience. When it comes to change, they say, if you change the way you look at things, the things you look at change. Change is not outside. Change is inside. It's all in the mind. That's what one of the masters that I met used to say. It's all in the mind. You are there till the time the mind is there. The mind gets resolved, you are not there. But how many of us understand this? How many of us dwell onto this?
Change is something which is happening since the day we have come out of the wombs of our mother. Change will be there till we close our eyes for this human birth. Change is internally. We say that we don't like change, but we need to look at our body, which keeps on changing second by second. There are cells who come into existence. There are cells who die. The body keeps on changing. Science says that our entire body changes in 12 years till the body which is your skeleton also changes. So how about resisting change which is outside? And this is exactly what the subject is, or the context is. How do we as leaders look at change which is happening? I remember we started our session on the basis of that what we have as an individual, the coming generation is not. There is always that messy middle. We are all in the world going through a messy middle. We have all together faced an universal adversity, and now we are going towards a new phase. Change, if we have a foresight, if we have the patience to understand it, we can lead the way. And to do so, to discuss about what is that all about and what are the few behaviors around change, I'm joined by my friend and colleague, Dr. Pooja. Hi, Pooja. How are you? Hi, Vani. Good. Am I audible, Vani? Yes, loud and clear as always. Yeah. Thank you. Thank you for joining, Pooja. I know there are certain issues at home, but that's exactly how we are. Putting up the smile and the show must go on. Absolutely. Absolutely. So if you need any help, just let me know. Have you got the PPT? Are you able to access it? Pooja, are you able to access the PPT? Vani, I'm ready. Okay. Yeah. Okay. I'm able to access the PPT. Perfect. Great. So to talk about how do we lead change, I'm joined by Dr. Pooja. She is going to take you through the session on leading through change. Over to you, Dr. Pooja. Your prologue is always interesting, man. Thank you, sir. Thank you, Vani. Namaskar, everybody, and a very good morning. We are again back here. It's my pleasure, it's my privilege in this opportunity that I'm connecting again and again, on various days for various topics. And every time, I have got a very good participation, a feeling of togetherness when we are discussing, various behavioral topics, which are actually very close to my heart, starting from the traits of leader, then to understanding others. And the last session that we had, on the day 8, it was all about building strong teams. And I'm sure with this session, which is my last one for your BSF workshop, that is leading through change, we will again, generate that spark. Early morning, high on energy. I'm sure you've had tasty as well as, a healthy breakfast. So we are all high on energy levels, and we will discuss and deliberate and work more on the prologue that Vani has already shared with us, all about change. I'm sure all of us sitting here, we've seen the pandemic world. We've entered into the new normal. We've seen, how humanity overall has changed due to the virus that struck us 2 years back. And life in all spheres, not only professional, even personal, our expectations, our beliefs, our way of looking at life, our way of looking at work, our ways of doing work, in fact, they have all undergone a tremendous change. We do understand at this point of time कि BSF में आपके procedures और work में बहुत ज़्यादा change नहीं आया होगा, but I'm sure the outlook has changed, and pandemic is one such factor in our recent times which has brought about the change. Do you agree with me, both on your personal and on your professional front? Yes, your views on it. Jitendra ji, do you agree it has brought a great change in our lives personally and professionally? Yes, madam, I fully agree with you, and especially
the way of looking towards life Yes, after sir. this pandemic is completely changed. Sir, any ways BSF has changed during this period in any of the ways? Madam, this is the reason which In its working. this is the reason, madam, we are going for the online courses. Yes, absolutely, absolutely. So the way we are connecting with online, क्योंकि technology हम सबके पास थी, but sir actually March 2020 से organizations ने जिस तरह से ये technology अपने employees को engage करने के लिए और काम करने के लिए use करनी शुरू करी, that has changed the world. Many of the organizations now, if we talk about the corporate sector, so many of our clients which were actually paying huge rents for their organizations, for their multinational organizations, they have preferred to work in the hybrid mode. Now they are calling people on rotational basis, and the others are working at home. So they are able to, really reduce down and cut down on their infrastructure cost, because something that was used as a necessity during COVID, it has become a way of life. So I'm sure, there are so many changes that we felt, but we will also discuss it with, perspective of how BSF has changed, not necessarily during the pandemic, but say over the last 2 to 3 decades, what has been the change? So my very first year, the time you joined BSF, what has exactly changed in the overall perspective and way of functioning of BSF? What has changed from the times you joined BSF till now? Let's share our thoughts. Let's connect on voice. Vishalji, what has changed? Aapne itne sir, so many years you've been with BSF. So what has changed in BSF? One change I have witnessed, the voice of dissent in under command. Okay. NCOs, constabulary ranks, it has become more, it is being encouraged and heard more than they were being heard before. Not talking about officers. The trainees, it has brought drastic change in their status. One thing is there from the days we joined. We clearly lost connection. Yeah, I think Dr. Pooja's screen looks freezed. Dr. Pooja, can you hear us? Okay, so yes, Vishalji, the voice of dissent. Anybody else who would like to share as what is the change that that you have seen since you have joined BSF? Vishalji, you can also share. Ma'am, in BSF actually with our promotions, basically our work profile has changed and our views have also changed. So there are two parameters, the organizational change and our change in BSF. So initially when we joined, basically we were company commanders. We are having under around 100 people around us, and we are basically more operation oriented. So we were graded at how many seizures you have made or how many militants you have killed, and that was your profile. And as we have increased, it has become more administrative and less of operational. So that is one aspect of change which BSF has changed along with us. And secondly, there are power groups in the BSF also. One power group is basically on the field and another power group which is in administrative. So it depends on what the priority or leadership is giving. It is giving whether it is giving more importance to field operations or whether it is giving more to our administrative operations. Here again, the profile of BSF has changed. Initially, we were governed by what the army had told us. Basically, we were basically platoons, sections, battalions. Now, more or less, it's become police administration. So we are doing nakas, we are doing patrolling and things like that. So operational vision has also changed, and administrative, because administrative of army and police are totally different. So at present status, we are in between army and police, both administrative and operational views. So there is a little bit of confusion here at this moment. It depends on what our future leaders take us, whether we will become a complete
police force, or we'll go back to our military role, which we are having 10 or 20 years back. That is my view, basically, ma'am. I think I would like my colleagues also to comment on that. Absolutely. Vijay sir, I was just listening. Sorry, everybody, I just got out of the meeting. And let me tell you at the start, due to some personal reasons, I am taking this session from home. So if at all my Wi-Fi goes for a toss, then Vani is there to have a backup. Vijay sir, but I listened to your entire thing, and you very rightly said there are operational and administrative ways which have changed. And yes, sir, you mentioned a very great word out here, that there is some kind of chaos in the present state. And so let me tell you, you've set the context for my session, because chaos is one thing. Whenever, as leaders, even you would be leading some change, because you are getting that change perspective from the top. So you have to bring down that change, which is in your teams. So definitely there will be a state of chaos, which we call it as messy middle, every time in the change. And here we would be focusing, how you get together your team whenever there is chaos, whenever there is uncertainty and messy middle. Thank you so much, Vijay sir. And like Vijay sir has led the discussion, and he wants others, his esteemed colleagues, to comment on it. So any of the comments, I can see Khanendra sir, good morning. Morning, ma'am. Kaise hai sir aap? I'm absolutely fine, That ma'am. bright, beautiful smile, very nice, sir. Thank you, ma'am. Yes, sir. Sir, please go ahead. Ma'am, basically, I slightly differ with Vijay. It is not the chaos. Rather, you can say it's basically a conflict sort of situation. Okay. Slightly, that is not that important, what I personally feel. Yes, there is a shift as far as functioning is concerned. We are definitely now try to more orient towards the policing. It is not the police, rather policing, because as per mandate, we are supposed to go for policing also. It is basically the policing. So that there is a slightly change in concept, change in perception. That is one issue. Okay. Second issue, what I have seen in change, that is the interaction level. When I joined about 25, 26 years back, at that time, I used to see my commandant hardly once in a month. Yeah, once in 2 months, not even more than that, in border actually. But now it is so frequent that on daily basis, otherwise weekly basis, we used to interact. Weekly basis, we used to visit the companies. On regular basis, we used to visit. So interaction level has gone up significantly, and people to people contact has gone up significantly, at least within the BSF parlance. And thirdly, the change in dynamics in the mindset of the constabulary, and particularly the ranks of constable. Earlier, most of those are basically either maximum 10th or below 10th standard people were there, or they were having less, you can say, I cannot say ability, but less analytical sort of things were less as on that what we have seen among the constabulary. So they are now it is more personalized. Otherwise, earlier it was very common. CO ने बोल दिया, okay, done. उससे आगे तो कोई there is nothing. एक बार कमांडेंट ने बोल दिया, it is final. उससे आगे पीछे कोई सवाल ही नहीं उठते थे. सर, बट आजकल लॉजिक ज्यादा यूज हो रहा है, आजकल एनालिसिस ज्यादा यूज हो रहा है. That is the new generation challenges. Yes, ifs and buts, a lot many ifs and buts are there. As on that, when you pass an order, you have to see from that perspective also. Absolutely. So these are few sentences. There are many more sentences also are there. But as Vijay has stated, once again I would reiterate on that point. It is not basically the chaos. I should not say chaos, but it's slightly shifting is there. Our role has been remodeled. I must say it is remodeled. It is not even shifting. It is remodeled as on that. And it is more try to orient towards policing sort of. Absolutely. Thank you so much, Khanendra sir. And again, I am sure Vijay sir का भी chaos से मतलब यही होगा कि जब change हो रहा है तो change में transitions हो रही हैं, and that is changing the way you are expected also to change. Thank you, Khanendra sir. Very amazing points of discussion that you brought forward for the group. Particularly, what I could understand from the discussion is that there is a change in perception. Your under commands have changed. They have in terms of demographics and
entirely in terms of their mindset. They have changed. So definitely a challenge for you also as a commandant to deal with them in a different way. And then yes, some changes from the top are happening, and you being a very important part in the hierarchy, you are the one also who has to bring about those changes in your under command. Raghavendra ji, good morning sir, kaise hain? Morning, ma'am. How are you sir? Ma'am, I'm fine. Bright tie sir, matching with your background उधर पीछे से. I think BSF के लोगों से आपकी tie match कर रही है बिल्कुल. Matching, but I have not thought of it. हाँ जी सर, बताइए सर, please share your perspective. टाई भी शायद BSF की है मैडम. अच्छा, okay, okay. हाँ जी राघवेंद्र जी, we would like to listen to you sir. Yeah, ma'am. Although there is nothing new which I am going to say, but I just want to add what they have stated. Yes sir. As far as change is concerned, definitely there is a change, and everywhere there is a change. Yes. And as far as BSF is concerned, there is a changes in all the spheres. If we take whether it is infrastructure or it is a weaponry or it is a training. And as far as the concept is concerned, yeah, there is a change in the concept also. We were earlier, when we joined, it was a border guarding. We shifted from border guarding to the border management. The terminology management, they came because ultimately there are so many agencies. Earlier, the BSF was working as a loan, as a kind of border guarding, but ultimately there are so many other stakeholders also. Yes. And the concept of border guarding, it has been changed into the border management, where the police, customs, and other intelligence agency also have a important role to play. In fact, the border population is also at the part of the border management. So there is a change and there is a shift from the concept. And with the particularly this communications and interaction that has been covered upon by Mr. Khanendra. So that is there because of the mobile and other kind of thing. And the command has a shift towards the managerial style of working. Yes. Earlier, we used to, what we saw as a commanders when we were joined the BSF, they were actually giving the orders and it is being complied with in all kind of things, and there was no if and buts. But now with the change and all people, they are the constabulary who are coming, they are learned. And they have in their mind some kind of queries. So now the commanders, they are satisfying, they are addressing those kind of things, logically explaining to make them understand what is the actual requirement. So there is a shift between this command and managerial kind of thing. That's what I have to say, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. आपने बहुत ही बेहतरीन points again for the discussion carrying it forward. And sir, आपका border guarding से border management shift हुआ तो definitely the range of activities and the duties have also changed. And in fact, the scope has been enlarged. And definitely as a commandant, as a leader in your organization, your jobs have also undergone a change over a period of time. Now, your jobs undergoing a change on one side, Raghavendra ji, and secondly, like Khanendra ji also explained, and I think you are vouching for the same thing. The undercommands have become more smarter, given the technology, given the education levels, and given the kind of world that is there today. So definitely, चाहे BSF का एक authoritative model चल रहा है, but I'm sure with my discussions with all of you in the past few days, what even I have understood, and with other BSF leaders when we are discussing, definitely, sir, you rightly said the shift is happening from more of authoritative style of management to a democratic style of management. So that shift is a biggest change, and how each one of you is changing in that shift again is very different. Your change journey, sir, would not be same as Jitendra ji or Tripathi ji. You would be changing at a different pace and in a different style. हम सब अलग-अलग तरीके से change कर रहे हैं. And sir, obviously, Raghavendra ji, you have kids at home? Yeah, ma'am. Sir, आपके बच्चे हैं? हाँ, ma'am, I have 2 kids with me, sir. 2 kids. Sir, daughter, son? No, I have 2 sons, ma'am. And I'm sure the way you are managing those 2 sons would also be entirely different. I'm sure they have different personalities, or they are same. Yeah, ma'am. Actually, both of them, they have different personality because the elder one, when he was born, so I was a very strict kind of parent. And when the younger one born, I was a very free kind of the person.
And So you had to be I- because the time was flying by and the change was. I changed myself after seeing all kind of things when I became the parent first time. So that Yes. time I was not that much having experience of a Yes. parent. Yes. And what I was doing, what my father used to do with me. Yes. So little bit I was strict also. I was more disciplined kind of person. Yes. And later I shifted myself with the changing environment. And I started giving him free kind of atmosphere so that he. Absolutely. Raghavendra ji, I'm sure all of us would agree, जिनके भी there are 2 kids at home, बेचारा पहला वाला हमारे सारे गुस्से सारे डिसिप्लिन का शिकार होता है और उसके बाद सेकंड वाले टाइम पे वो भी हमें समझा देता है कि ऐसे नहीं चलेगा and हम खुद भी समझ जाते हैं. Now this is the change. If we take this example, you know, every time I'm sure ये सबके घर में यही एक कॉन्सेप्ट होगा कि सेकंड वाला चाइल्ड अपने आप ही हमारे अंदर चेंज ले आता है. And this is the reason, you know, when you would have joined BSF, you had joined with a mindset, but the way you have been managing your under commands and the way they have been changing generation over generation, I'm sure you have all evolved and changed your leadership and management styles with those under commands, just like we change with our children at home. और हर बच्चे को मैनेज करने की जैसे एक चेंजेस लाना उनके साथ उनकी लाइफ में चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना is a altogether different battlefield for us. I'm sure that is happening with each batch of new under commands joining you. Do you all agree with me? That's the biggest change as a leader that we have to incorporate in our day-to-day working, other than the strategic changes which BSF obviously wants us to incorporate. Anybody else? Thank you so much, Raghavendra ji. Amazing views. Anybody else who would like to share here? Kamal sir, आपके कोई views? सितलो हो सर, कैसे हैं सर? सितलो सर, फाइन मैम. हाउ आर यू सर? फाइन सर, कोई चेंज आप बात करना चाहते हो? एनी चेंज सर यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन द लास्ट few years? Sir, with your teams, with BSF? The change is that as most of my colleagues has already stated, it's the force has become more troops oriented. Yes. Okay. And sir, how has your role changed in terms of managing, not in terms of doing work, but in terms of managing your teams? We also change according to the wishes of the under commands. Okay. The entire group, Sitlo sir has spoken in the morning. So my challenge again is met. Last time I was told it's a big challenge to get him to speak. Sitlo sir, thank you. Sitlo sir is very, very precise with words. So I do understand, sir, आप उसको उतना शायद elaborate नहीं करते हैं, but I have got your point. You've changed with the way the teams and under commands have changed. Thank you so much, Sitlo sir. But please be with us in the entire discussion. We would love to listen to your valuable input, sir. Kamal ji, going back to you, sir. How are you, sir? Ma'am, basically our role has not changed. Our role is same, but due to some challenges, coming up challenges, we have to introduce new technology and so that to meet those challenges. Okay. Okay, sir. ये absolutely, sir. आपका basic profile वो same रहा है, but आसपास हमारा culture और हमारा way of working जो change हुआ है, इसकी वजह से हमें adapt करना है, right, sir? But sir, technological change में since new generation, those are very multimedia oriented, and we have to tackle those problems also. Absolutely. Sir, when technology is being introduced gradually, do you feel there are any challenges as a leader for the commandants with the technology? But we should take it very positive. Since we had change is always should be well accepted. It is for the betterment of the whole system also. Okay, so getting everybody to understand that it is for the betterment of the system, it's easier to accept the change. A very valid point that you brought to the discussion. Getting everybody to understand on the importance of change is half the battle won. Thank you so much, Kamal sir, for your input. Jagirji, you have raised your hand. We would love to listen from you, sir. Madam, good morning. Good morning, sir. कैसे हैं? I am fine, ma'am. Thank you. Yes, sir. मेरा basically Kamal has hit in the bull. उनका जो कहना है, I fully agree with him. देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट में दो तरह के चेंज होते हैं. चेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट, या चेंज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. राइट. तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में
बॉटम से भी चेंज हो गया, टॉप से भी चेंज हो गया। जो मिडिल लेवल है, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, हाँ जी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको चेंज मैनेजमेंट के लिए, हेलो हेलो, या हाँ जी, जागीर सर, आई एम एबल टू लिसन। हम सुन रहे हैं, जागीर बोलो। चेंज मैनेजमेंट के लिए there is always there are certain interventions which are required. ओके, तो उस चेंज को मैनेज करने के लिए जो मिडिल लेवल लीडरशिप है, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, हाँ जी, वहां पे वो इंटरवेंशन हमें मिली नहीं। तो उस चेंज को मैनेज करने के लिए राइट, हमारे से एक्सपेक्टेशन कई गुना बढ़ गए। जो नीचे हमारे जो अंडर कमांड है, they have also new expectations which were not earlier. राइट, तो ऊपर में भी चेंज है, वो भी चाहते हैं कि यस, जो नीचे वाला मांग रहा है उसको आप दीजिए। बट हमारे पास में रिसोर्सेस या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, देयर इज डेप्थ ऑफ दैट, कोई उसमें इस टाइप का इंटरवेंशन नहीं हुआ। तो डेफिनेटली द मिडिल लेवल इज फेसिंग ह्यूज चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज। तो चेंज इज बेसिकली, चेंज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इट इज अ मैनेजमेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। लेकिन हमारा जो मिडिल जो बॉटम लेवल है, दे आर चेंजिंग एंड देयर रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग। टॉप में उनको लगता है कि यस, ऑल देयर एक्सपेक्टेशंस शुड बी मेट। हमें उनकी सारी जो मांग रहे हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनकी पूरी होनी चाहिए। लेकिन जो बीच वाला है, उसको मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट शुड आल्सो बी मेट। एब्सोल्युटली जागीर जी, मैं आपकी बात सुन रही थी, मेरे बैक ऑफ माइंड बिल्कुल वही चल रहा है। सेम सिचुएशन हम सबकी पर्सनल लाइफ में है विद दिस एज ग्रुप। पेरेंट्स हैव रिमेन्ड वेयर दे आर एंड दे वांट ऑल चेंजेस टू बी इंट्रोड्यूस्ड बट नॉट दे चेंजिंग। Children with new expectations और change हमें करना है. So we become in the messy middle, and you are right, probably not the right resources, not the right training, and not the right support given to those in the middle to bring about that change. So मेरा जो अल्टीमेट, मेरा जो एम था, जो मेरा जहाँ यहाँ पे बताने का मेरा एम ये था कि अगर नीचे चेंज हो रहा है, नीचे एक्सपेक्टेशंस आर नो हैव इंक्रीज, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो मिडिल लेवल लीडरशिप की जो रिक्वायरमेंट है, इफ दे आर प्रोजेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट, ऊपर से चेंज आना चाहिए। दे शुड आल्सो एक्सेप्ट दैट कि यस यार, इनकी अगर समस्या है मिडिल लेवल लीडरशिप की, तो दैट आल्सो हैज टू बी सॉर्टेड आउट। Yes, sir. Your expectations also need to be taken care of if the change is to be brought about in a gradual में। जैसे ही जागीर सर बोल रहे थे, काफी सारे hands raise हो रहे हैं। I'm sure everybody wants to contribute here. We'll take up Jitendra sir first. Jitendra sir, good morning, sir. Good morning, ma'am. हाँ जी सर, बताइए प्लीज। Other than these points, everybody has given the points जो कि वाकई में हमने last 26 years plus में changes observe किए हैं। हाँ जी सर। And one thing which I have observed more is the recognition part. Earlier, the BSF was not recognized as it is having an identity crisis, a sort of. Okay. And we were considered that we are the part of the army, we are them like that. But during this period, BSF has established its identity and proved their presence. Number one. Number two is the approach towards the civil and approach of civilians towards the BSF. Okay. Sir, that has the approach that you're talking about to the civilians and how civilian expectations are. Now, how does that challenge you for change, sir? मैडम, एक्चुअली पहले हम लोग अवॉइड करते थे सिविलियंस के साथ इंटरेक्ट करना, बट अब ज्यादा करते हैं। अब हमको इंटरेक्शन ज्यादा करने का मौका भी मिलता है और हम लोग करते भी हैं। सेम विद सिविलियंस, पहले हम सिविलियंस को एंटरटेन नहीं करते थे अपने पास, नो वी आर अप्रोचिंग देम। Yes, so sir, your way of working has changed, and to incorporate that in the entire team again is your responsibility to get them as one of the important stakeholders. Okay, absolutely. Thank you so much, Jitendra sir. Khanendra ji, sir, points add करेंगे इस पे? Sir, you have to unmute. हाँ जी sir. Ma'am, इसमें one thing I would like to add. Yeah. Basically, we have been trained to be commander, but act as a manager. We have been made to act as a manager. That is the crisis that we are facing, the conflict. Right. I agree to Zageer to some extent. Yes, there is a change. Bottom has also been changed. Top has also been changed. In between, we are the sandwich. So we need to be changed. For that change, we require the input that has not been provided.
Absolutely. basically. But we need to be changed ourselves. That role of manager and role of commander is totally different. Yes, but they have been merged together. Yeah, that has been merged together. Rather, we become more manager. In fact, the present role, if I analyze, it seems to be more of a manager than of a commander. Right. Because considering the input that you receive from the bottom, that Right. if you have to manage them, because they are well informed because of social media and technologies. Yes. So you have to So be they with are them well throughout. informed. Yes, but we are not being trained accordingly. Yes. To make ourselves change. That is one issue that I want to just add. Okay. So I think with this discussion, the context has been very well set. In this session, we would be discussing, how at your own personal level, you can, be more open to change and you can manage change better. Just give me a second so that I just share these slides out here. And I'm sure with this context, our discussion is going to be more enriching in, the minutes to come. So is my slides visible, Khanindra sir, if you can just confirm me? It's visible, ma'am. Okay. So let me first discuss with all of you what we've planned, the session flow that we've planned. Why change we have already discussed. And just to brief everybody's point here, BSF has changed. To take points, from Raghavendra ji, who very well said that BSF has changed from border guarding to border management. So the scope of the duties has changed. Taking points from what Jagir ji said, that the expectations of the top and expectations of the lower levels have changed. So forcibly, the middle level or the commandants have to change. But yes, there are some issues because the right kind of resources, training, and the support is lacking out here, which will enable them to change better. Khanindra sir just said change is there and they have to change because the role has changed from an autocratic leader to more of a manager at this point of time. Now, Vijay sir said, that there are a lot of administrative issues, and there is something like messy middle in the picture that is a challenge for the new age leaders. So this part we've already discussed, thanks to your inputs. Why does change fail is what we're going to discuss. And another important aspect that we would be discussing is how do you get you and your team ready for change? Now, here we would be discussing what challenges, come in the starting of the change, in the middle of the change, that is the transition stage. Then based on research, we have brought a framework of 5 kinds of employee attitudes. Now, when we are discussing those, keep yourself in picture and also keep your undercommands in picture. Because whenever your top is initiating any change, then you are also as a team member for those change. And when you are bringing that change in your team, then you act as a leader for those change. So, but these 5 employee attitudes are present in the entire team of any organization. So let's identify what are those attitudes of people and how do we manage them. How do we spot those people in your team and how do you deal with them effectively is what we are going to do based on this research framework. I just said, I would humbly request you, keep yourself, think of any change that has happened, maybe a technological change, maybe any change, in your professional front, maybe any change in managing your team that you have brought about, and just keep in mind, introspect what were the issues and how, a better action plans could be made for that. So let's move ahead out here and get moving to this session. Yes. Now, recent change. Let's start with the discussion. Any recent change that you have made for your undercommands and for your team or in your managerial and leadership position. आपने कोई चेंज जो या तो ऊपर से टॉप मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट थी या आपने खुद इनिशिएट करा कोई चेंज. Why did you do that change and what were the challenges? और आपने कैसे ओवरकम करे वो challenges? Any change that you have introduced? Maybe professional requirements, maybe as your own leadership requirements, you have brought about that change. Any change which the group wants to discuss here? Anyone? I'm sure you are all changing your ways of managing in the recent past. Maybe during pandemic times, you changed your way of working. Any such change?
Tripathi sir, has there been any change in the way of working? आपने कोई recent past में कोई change अपनी team में introduce करा हो? Maybe a small change. जहां पर अभी हम हैं, हाँ जी सर. इस लेवल के कमिटमेंट्स हैं कि उनको ही पूरा कर लें तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है. Exactly. तो चेंज के बारे में बहुत कुछ सोच नहीं पा रहे हैं यहाँ पर. Okay, so one thing that is again, Tripathi ji, you've given me a great point to discuss. Change requires time. Change requires mindset. Am I right, Tripathi ji? Only when we are free from our day-to-day working, we can think of what betterment can we do. बिल्कुल सही कहा मैडम. बिल्कुल सही. So Tripathi sir has also given us one more reason, you know, why leaders need to focus on the need for change. क्योंकि अगर हम day to day working में ही रहेंगे तो we continue to work in the same way. So maybe one of the ways to introspect is, you know, maybe we try to find a little more time and see if we can manage our teams a little more differently and more effectively given the challenges that we are facing, you know, the more changed demographics of our under commands. Sir, any change which BSF wanted to change from top to bottom and you were a part of that change strategy and you have brought about those changes or challenges the? Any one of you? कोई BSF led change था which has been brought about, maybe technology or any other thing, and what? I have to say one thing regarding this change, what you are talking about in the term of the BSF. Right, sir. You might be aware and you have also gone through the papers that recently the jurisdiction of BSF has been changed. Yes, sir. As far as from the top level, or you can say the government level. Yes. So as far as where our deployment is, Bengal is concerned, our area of jurisdiction have been increased from 8 kilometer to 50 kilometer, 50 kilometer. Yes, sir. And that was a change from the top level. Okay. And accordingly, after changing that area of jurisdiction, and now BSF can go deep inside, just for the kind of the things and with the intelligence they have to act upon, or they have to carry out the operation. Although we have to carry out the operation with the help of the police or with the assistance of the police, but definitely our jurisdiction have been increased, and that has been somewhere disturbing the center and state kind of things also. Okay. So by virtue of changing this, then definitely our working style or somehow are going to the depth areas for the patrolling or the operation, that has been also increased. So there is a change in that. Our nature of work is absolutely, absolutely. So, sir, aapke particularly, if I talk about you and your team, are there any particular challenges that you are facing, Raghavendra ji? Yeah, definitely, ma'am. There is some challenges which we faced initially because ultimately our mandate changed and we were not that much clear about that particular thing, and our team was also not clear what to do and what not to do. Initially, then we work out some strategy to address this kind of thing. Okay. And we started approaching the police frequently. And now the troops initially they were hesitant in going deep inside because earlier we were guarding our border and we are limited to 1 kilometer, 2 kilometer kind of situations. And now our people, they are going in depth and deep inside, that is around 15 kilometers, 20 kilometers. They were initially hesitant about it, but thereafter now it become a routine. And yes, they are moving very freely and with clear mind, frame of mind. Sir, again, इसमें I would say when you are leading such a team, आपका role एक बहुत important role रहा होगा, sir, जब आप बता रहे हैं, and this is how a very important input for all of us. Any change will bring about. Raghavendra ji has pointed to a very important concept which our research also supports. There will always be non-clarity initially. तो जब वो नॉन क्लैरिटी रहती है उसमें राघवेंद्र जी यू वुड अग्री विद मी, उसमें आपका रोल अगेन सिंक्रोनाइजिंग द टॉप एंड सिंक्रोनाइजिंग द बॉटम, आपका रोल एज अ कमांडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू ब्रिंग इन सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी एंड यू नो रिमूव द इनिशियल बॉटलनेक्स दैट योर अंडर कमांड्स वुड बी फेसिंग, क्योंकि उनके भी बहुत इश्यूज होंगे, उनको भी नहीं समझ आ रही होंगी चीजें. एंड इसमें से डू यू अग्री विद मी दैट द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट? If I may say something. Please, sir, please, please. The discussion reminds me of an old quote that I learned long back in my school time. The yes, old order changes yielding place to new. You must have heard it long back. Yes, sir. So the world has been dynamic, our rules have been dynamic, the life has been dynamic, and the challenges has also been dynamic. Yeah.
So we have to change and we have to adapt ourselves to the coming challenges. Yes. If we don't, if we remain stubborn, if we remain steadfast in one thing, then probably, I mean, we'll be put into oblivion. So Yes. one has to change himself as per the situations, as per the challenges, to meet those challenges and to meet those whatever the task that has been given to the Absolutely. सुरेंद्र जी आपने बिल्कुल सही कहा, Now- नहीं change करेंगे तो outdated now हो coming जाएंगे। to the BSF or to the personal front, unfortunately or unfortunately हम वो जनरेशन है जो अपने माँ बाप से भी पिटे और अपनी औलाद को भी नहीं पिटे। Yes, sir. वो तो सर सबके साथ बिल्कुल सही है। जब भी ऐसे ही सर, जब वो जागीर सर बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था, we are listening to our parents and now we are listening to our kids also, and we are actually sir समझ नहीं आता है how to balance. So I am sure the middle level management का भी यही हाल है। मतलब we in our late 40s and early 50s or touching 50s, I mean we are the generation which मतलब कई बार तो हमारे पापा और हमारे सीनियर्स, हमारे बड़े भाई बहन, हमारे सीनियर्स हमें क्यों थप्पड़ मार दिया, हमारी हिम्मत भी नहीं होती थी इस बार चाटा क्यों पड़ा। But same we cannot replicate to our children now. Yes. This is the change. This is one of the biggest change that I can now, is so far as the personal life is concerned. Well, as far as the profession is concerned, well, there has been introduction of technology. There have been introduction of zero error syndrome. There have been educated soldiers have started coming in. So they will not take every bullshit that you may give as it used to be earlier on. You will not be taken on your Facebook. You will be judged at every step. Yes. Because you are, after all, dealing with the people who have also studied, who have also been, and some of them are as educated as you are. Yes. So they might be at the lower rank, but you are being judged, are being assessed at every stage. Yes, sir. हम एक शब्द भी बोलते हैं तो it has to have a meaning, and it is and I always I mean I've realized it that even a word that is spoken out of me being a CEO of a unit, I mean it is assessed and it is being a judgment is passed on me. Yes, sir. Through that word. सर सभी लोग इतने जजिंग हो गए हैं, और सर टाइम्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया है कि यू नो बीइंग एट द मैनेजरियल लेवल, इफ वी आर सेइंग, सर सुरेंद्र जी ने बिल्कुल सही पॉइंट दिया, वी आर ऑलवेज इन अ पब्लिक स्पेस, वी आर ऑलवेज बीइंग असेस्ड, आवर स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर ऑलवेज बीइंग questioned, even if the under commands are not coming and telling it to you, but yes, those discussions are going on. So how you are changing and managing them is the biggest challenge at this point of time. Very well said, Surinder ji. But before I move on to you know, take inputs from Khanindra ji, I will go back to Raghavendra ji because I want to finish that discussion. Raghavendra ji, are you with us? Raghavendra sir? नेटवर्क इशू हो गया मैडम उनका। अच्छा हाँ, चलिए कोई बात नहीं, we'll get back to him again. Khanindra sir, you've raised your hand, sir, please. Sir, unmute करना पड़ेगा. Coming to the point of Mr. Raghavendra, I would like to add further. Yes. Ma'am, because of the additional role that has extended jurisdiction, that is 50 kilometers. Right. So now there is a state of conflict between state and center. Yes. Because BSF being represented the center with central agencies. So state is feeling that center is trying to intrude into the jurisdiction of center. Intrude into the jurisdiction of center by extending the jurisdiction of BSF. Okay. And that is why at this stage, as commandant, we are finding somehow difficult to coordinate or collaborate with the state agencies as far as operation in the jurisdiction area is concerned. So that is one reason, I think that is one factor that is associated with conflict between center and state in the context of BSF, ma'am. Yes, absolutely. And sir, again, your role as a commandant here, what is the change that you have to bring about in your style, in your working? This was my question I wanted to ask Raghavendra ji, but you yes, can answer. Definitely, ma'am. As per this is, we are uniform force.
We are supposed to follow the policy of government. We cannot question, we cannot disobey. So we are definitely there to implement the policy of government. We just can, at the most, in certain forum, we can raise the problem. Otherwise, we cannot say that we cannot follow this principle. We just cannot go by this principle. We just cannot say that. So our role is very clear that we're supposed to follow the center. Yes, how and where we have to perform, that depends upon. Yes, this is our endeavor as a commandant. My endeavor is to take the state agencies together so that there is no conflict or minimum conflict. I cannot say no conflict. I can say minimum conflict. Absolutely. I can minimize the conflict level and can work smoothly. That is my endeavor. But yes, there is issues. There is no doubt. There is issues with respect to this extended jurisdiction. Yes, yes. So you can only raise your concerns, you can share your observations, but at the end you have to get that work done through your team also. Definitely. Definitely. So isme Khanendra sir, meri aapse key points I want from you is when you have any change, we're talking about this jurisdiction, maybe any change, jahan top se aapko change समझ आ रहा है कि हमें करना ही करना है, but yes, you cannot question because you are at that level, you have to follow that change now. But when you try to get that change done from your team, your under commands or through your stakeholders, but they definitely would discuss and raise concerns to you. So what do you think would help you to bring about that change from them? आप वो change उनसे कैसे करवाते हैं सर? उसमें आपके क्या traits हैं? Ma'am, basically I'll have to explain them the requirement. This is as per my opinion, as per my observation, as per my say work functioning style. Definitely, I will tell them that this is the requirement of time, and we supposed to do this, and this is the requirement of our higher ups. So we supposed to do this, and this will also help them. The better point from that action, I will explain them that this will help you. How it will help you in discharging your duties and how it may be added value to your duties also. That I'll definitely try to inculcate among them. Okay, so let's take the discussion in this direction only. Very rightly said, Khanendra sir, you've given us excellent 3 points. First, communicate, clarify, because and tell them how it is going to add value for them. हम जब दूसरे को benefit दिखाते हैं, then they get with us in the change process effectively. Jagir sir, your inputs on this, sir, please. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं. हाँ जी सर. इसमें एक छोटा सा जो I want to add. हाँ जी, please. Previously, all the commanders were task oriented, purely task oriented. Right. And now it is a mix of task oriented as well as people oriented. Yes, people oriented also. Yeah. We have to take care of our people also. Yes. इसके अलावा मैं जो एक बड़ा broader perspective में एक जो ऐड करना चाहता हूँ point. हाँ जी सर. मैं थोड़ा सा पुलिस के साथ भी concern रख रहा हूँ. मैं we are also looking after police, state police. Right. Due to advancement of technology, the criminals have changed. They have changed their modus operandi also. So they have become very smart. They have become smarter and smarter day by day. Yeah. With every change in technology, they are changing their modus operandi. They are adopting very fast adaptation of technology by the criminals. Yes. Somehow, all the uniformed forces, they are far lagging behind in modernization. There are even the state police, they are not up to the level they should be. They have not modernized. They are not making pace with the change of technology. So the similar problem is in BSF also, in our force also. We are also not able to adapt to the changing environment in technological perspective. So this is very important change which is required to be managed. It has to be managed. We are not able to manage this change. So then that means one of the points that we can get is to manage any kind of change, a proper training has to be provided. Training is the key for any change, probably technological trainings more to be given at the end so that, you can manage the other aspects, the criminals better. Maybe police also needs more training. Definitely, it has to be. It has to be. Only the troops will be tax heavy only with training. Without training,
So firstly, there will training is be- another aspect as a leader that you will have to concentrate for your teams. Definitely. Yes. So we've got 4 good points how any leader can bring about a change: communication, clarify, speak more and more to them, keep channels open, where they can come and they can discuss their concerns with you, explain to them the benefits. And yes, with Jagirji's discussion, training is one important area because others have become smarter. So you have to get your team to become smart. Can we have more inputs? Is change may? Others also, please share your inputs. What has been the challenge with you particularly? What has been the challenge with you? Like Raghavendra ji discussed, then Jagir ji has also added point, Surendra ji added point. What has been your... Chandrakant sir, are you there? The camera is showing a frozen view. Chandrakant sir? I think it's... Okay, वही मेरे को लगा कि सिर्फ यहाँ तो सीट खाली है. Chandrakant sir, good morning. Good morning, ma'am. How are you, sir? सुबह से बात नहीं हुई. Fine, ma'am. Hi, sir. सर बहुत डिस्कशंस हुई हैं चेंज पे. सर आपके कुछ इनपुट्स. सर हाउ मैं भी सुन रहा था बहुत सारे चेंजेस के बारे में. People were discussing and some of them are real game changer. Yeah. The group. Sir, what is the challenge you face as a commander in midst of all these changes happening? I'm sure last 10-15 years the way you are working, so many changes would have happened. Sir, आप एक basically क्या challenge face करते हो या आपको क्या opportunity लगती है इस change में? Ma'am, all these changes are opportunity in a sense and challenge at the same time. Right, sir. बहुत सारी चीजें नहीं होती है तो you may resist because of personal thing or you may be having a different opinion, but you have to assess the overall requirement, and if it has been introduced by say government of India or say ki hierarchy, certainly after certain experiments, certain weighing the things, weighing all the pros and cons, then only it would have been introduced. Yes. Some good practices which is adopted by other organization is copied by the similar organization. Absolutely. That way, and there are certain changes which is not in the hand of even say the hierarchy in our organization. It has to be introduced by government of India. Yes. So you will have to adopt and adapt at the same time whatsoever changes are taking place. Absolutely. And it is up to individual concerned, be it commander at our level or even our higher ups. They have to adapt to the changing circumstances. Some new gadgets will be introduced which were not earlier. Certainly men have to be trained to use them, utilize them. So changes has to be welcome. It may be for good. It may appear for some time to not be so good. But at the end of the day, you will find yes, it has got some utility. चंद्रकांत सर, वेरी वेल सेड सर. अगर आपको याद है सर, हमने एक अंडरस्टैंडिंग अदर्स का सेशन करा था सर. आपको याद है आपका क्या पर्सनालिटी टाइप आया था? ड्राइवर, इंस्पायरर, सपोर्टर या रिफ्लेक्टर? Unfortunately, I could not participate. Oh, sir, you were not there in understanding other session. Sir, I'm sure. I was there, but I could not participate. I was a bit late. सर मेरी एक छोटी सी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सर, आपको जब टाइम मिले 2-3 मिनट का सर, पेज नंबर 74-75 पे वो असेसमेंट है सर, जरूर करिएगा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पर्सनालिटी टाइप सपोर्टर आएगा. क्योंकि सर द वे यू हैव गिवन योर पॉइंट, सर प्लीज करके मुझे भी बताइएगा ये. The way he has given points is only and only showing the positive aspects of supporting change, because he says view every change as an opportunity and have trust. That means when your seniors have come up with the change, he says probably it would have been tried and tested. So as a participant to the change, he is very, very trust focusing. और सर ये एक बिल्कुल सपोर्टर या रिफ्लेक्टर की बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स है जब आप अपनी टीम के साथ इतना पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चलते हैं. आई एम रियली श्योर सर, प्लीज ये करिएगा आज एंड प्लीज. यस एब्सोल्युटली. अच्छा, जागीर जी इज सेइंग यस ही इज एक्चुअली, क्योंकि देखो हम सब अपना अपना चेंज, जो भी हम इस चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स में होते हैं, वी ऑल व्यू इट वेरी डिफरेंटली. व्हेन वी आर 30 people here in this meeting, I'm sure not everybody would be agreeing to what we are saying. Some would say the change has been given to us and now we have no other option but we have to change. That is one mindset.
another mindset, like Chandrakant sir just said, probably there's always an opportunity in a change, and we need to trust. If we are getting that change directions from above, we need to trust and we need to be with them. Sir, aap ek bahut bada support people, sir, over the period of time we are just going to discuss the employee attitudes, और sir आप उसमें खुद identify करना, you would be a promoter for change, I'm sure. So we need to look out for people who promote change, and we need to create teams. कई बारी as a leader हमने building strong teams में भी discuss करा था, every time you will not get the right team, but you can work on your team with little effort and get people on the right track. So let's find out who are the promoters of change in our team, get their support and get going. क्योंकि बहुत बारी टीम में ऐसे लोग होंगे जो हमें बारी बारी क्वेश्चन करेंगे, हमें जज करेंगे, बट जब हमें कोई चेंज लाना है and the top has said that this change has to be brought about, there is no question. We need to find people who are with us and who will get the team with us in change. Do you agree, Jagir ji? Do you agree with this? Tripathi ji, do you agree with this? Yes, yes, no, I fully agree. Okay, okay. So now we move on from here. Fantastic discussion that has been flowing in. Another, okay. So this we have done here. Okay, so some change drivers, I'm sure, you know, whether BSF or any other organizations, these are the change drivers which, you know, force any organization to change. The first is performance gap. हमें कहीं ना कहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी टीम लेवल्स पे दिखता है कि वी आर नॉट डूइंग इट दैट वेल, एंड दैट्स द ट्रिगर पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू कि हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा. आपका बटालियन, आपकी टीम वो टारगेट्स नहीं अचीव कर पा रहे जैसे आप चाहते हैं, या अचीव कर पा रहे हैं तो उस तरीके से नहीं अचीव कर पा रहे जैसे आप चाहते हैं. सो दैट्स वन ट्रिगर पॉइंट दैट यू नीड चेंज. Technology, we all agree, technology has been changing, and we've been interacting with a lot of people from BSF, and a lot of technological changes have come in BSF. हालांकि जब मैंने पिछला सेशन अभी नवंबर वाला लिया था, 14 to 26 November, BSF 4th batch had come. One of the senior commandants, he was not very, like I said, everybody will have different views. तो sir's view was कि मैम ये technology तो कर दी है, अब हम पेपर वर्क भी करते हैं और हम ऑनलाइन भी सब चीज भेजते हैं, सो इट हैज एक्चुअली डबल्ड आवर वर्क. तो मैम इससे अच्छा ये नहीं होता तो हम सिर्फ पेपर वर्क कर रहे होते, बट एवरीबडी हैड डिफरेंट व्यूज ऑन इट. So that's also because I think the kind of organization BSF is, pen and paper is also very important, but at the same time technology incorporate करना भी बहुत जरूरी है. So is it that the work has doubled? How many of us shared this opinion that technology is actually doubling our work? Yes, to some extent. Yes, to some extent, ma'am. Definitely, but to some extent, suitable use of technology will definitely reduce the burden. Yes. But probably ये जो होते हैं मैम, चेंज के साथ हम नहीं चल पाते हैं, या चेंज को हम प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है. टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. यस, यस. न्यूक्लियर, वही न्यूक्लियर पावर में पूरा दुनिया को डिस्ट्रॉय करते, वही न्यूक्लियर पावर दुनिया में उजाला भी लाते हैं. तो इट्स डिपेंड अपॉन द इशू हाउ वी सी बेसिकली. यस, और हमारा क्या माइंडसेट है, उतना ही सर हम टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए भी हम उतना ही तत्पर रहते हैं. इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज इन आवर माइंड, वेदर टू चेंज और नॉट, whether to accept it or not to accept it. We have to accept, ma'am. We have to accept. There is no option. But sir, हम कितनी willingly accept करते हैं, उतना ही जल्दी हम change कर जाएंगे. Technology का मैम basically it has a initial resistance phase. So in technology generally we go with the bath, what you can say that U-shaped curve. So once you are introducing, it will go to drop, then it will be static, then the people will come to know about the advantages. Yes, sir. And skills to use it, and then it reaches the optimum which is desired. So initial resistance is always there, and that is because the first part, that is performance gap, means the introduction of technology should be based on proper gap analysis. Yes, sir. Yes. Not as per the readily available items available in market, or you have some fascination or liking for a particular product. So if there is a gap, means the gap analysis is not proper and the technology has been introduced, then it is not going to fulfill the desired
goal for which it has been introduced. So there is initial hesitancy always with the technology. Absolutely, Sanjay sir, बहुत ही बेहतरीन point आप लेके आए कि every time introducing technology is must and we have to be a part of it. But every time coming up with the technology without a proper clear mind map that why we need that technology will not work. And sir, U-shaped तो definitely है. But sir, इसमें I hope Sanjay ji you would agree with me. As a commandant again your role is important क्योंकि the lower downs, as we go down in the hierarchy, people will be more apt to use technology. It is more problem at the middle level that people are not ready to accept the technology, and their changes have to be brought about in their mindset. Do you agree, Sanjay ji? In our case, the middle ranking and the lower formation is more eager to learn the technology. The problem with the policy maker, they are not fully aware that how it will be utilized. The correct mapping has not been done for technology. There were systems and equipments where the power backup or the charging facilities even not available were introduced. But there were two type of people. One, they said that कुछ नहीं से तो कुछ better है. हाँ जी. Second थे बोलते थे कि कब तक हम ऐसे wait करते रहेंगे. Absolutely. पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन अल्टीमेटली जो यूजर है उसको बॉक्स से निकालता नहीं है आइटम. हाँ जी. And it will complete all the exercise related with that equipment on paper. Right. Right. So if you will try to get any data which you can extract to fructify that project which you have implemented, generally you will not get. हाँ जी. हाँ जी. I get and it has a problem because the people are not willing to use the technology. Yes. Because it has a double-edged weapon. It will monitor you also, what you have done with the equipment, and as well as it doesn't give you much time to relax. Yes sir. और सर बहुत ज्यादा streamlined और efficiency भी बढ़ जाएगी, effectiveness भी ज्यादा in demand रहेगी. तो yes, initial resistance. ये मैम forces में in general these are manpower intensive organizations. Right. It is always a scope of mismanagement of HR. Yes. So technology पे focus ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ manpower की scarcity होगी, and you may be finding some odd people has to be paid. ये एक certain composition आपके पास रहेगा ही रहेगा, और वार हुई नहीं. 71 के बाद तो वार हुई नहीं है. हाँ जी. All our structure and system and equipping of units are based on that both type of peace as well as war. Absolutely. Absolutely. HR जहाँ resources ज़्यादा है वहाँ टेक्नोलॉजी की थोड़ी इनहिबिशन है. मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यूज ही नहीं होती, यूज होती है, लेकिन जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है जो डिफरेंट और कंट्रीज बॉर्डर गार्ड कर रही होंगी वैसे नहीं यूज हो रहा है. इंडिया में कम है क्योंकि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर हियर. So curtailment of manpower is also not possible for government also. Railway, post office, uniform services, military, you can observe simply that it's not simply a employment and employee and employer relation. It's a source of livelihood for many people also. Yes sir. और उसको हम टेक्नोलॉजी से रिप्लेस नहीं कर सकते. बट सर, looking at it, a lot of technology changes have still been introduced in the last few years, and definitely इसको हमें और streamline होता ही जाएगा in the time. We were the first one who yes approved their modernization plan immediately after Kargil. BSF, even if Modi had started their modernization late. Right. We got approved from Cabinet Committee on Security in 2000 only. Right. Right. Immediately after receipt of that report of Kargil review report. So BSF is one of the pioneers. Even we were having our EDP cell long back in 80s. Right. Other organizations were issuing payslip, typed payslip on typewriter. We were getting from the computer. Yes, sir. Absolutely. So that's there's always good points about technology that people need to understand and need to adapt. And we are the only one in whole Asia who are manufacturing with our resources and manpower the tier spoke cells, which almost many countries in the world and Asia are using. Okay. Okay. That's great, sir. That's Yes. great. Very, very valid. Technology is always a tool in end of BSF. We were never very
what you say, ignorant about the technology. We are always with the pace. Yes sir. And sir Sanjay ji, मैं यहाँ पे फिर से ही वो point introduce करना चाहती हूँ कि again it's your mindset sir. Sir आपका क्या personality type आया था संजय जी, if you remember? Driver, inspirer, reflector driver के बीच का था balance. Exactly. Again, like I said, those who have a very, very positive mindset to support any change, they would be more of, people who are in their own zone, thinking, analyzing things more and coming up with a positive mindset. So reflector hai, definitely you would think and then judge and then you would take the right step. Sanjay ji, perfect point. Khanendra ji, we'll have a quick input from you, sir, and then Raghavendra ji has also raised his hand. Ma'am, as far as technology is concerned, any change, I must say one thing before coming to the next point. Any change, it is always resistant by human being, because human brain is designed to resist any change. So that's a fact. As far as technology is concerned, ma'am, technology, if it suits to the people who are using to that, so definitely people will love to have that. But there are certain point at certain things which have been introduced. Say, if you introduce that, if it doesn't suit to your requirement, then there will be naturally there will be kind of resistance. Yes. So here the conflict comes where it is coming, because we are demanding certain technology which are required, urgently required. That is not being provided. Rather, they are interested in something other. Then only people will resist. Otherwise, normally technology is most welcome, and BSF adapt to this type of technology, and BSF generally prefer to use the technology. We are using various technological solutions to our problem, but what we are required, if that is being provided, it is a most welcome solution. Otherwise, then it's cherry on the cake. Yeah, that is the point. That is the point. Cherry on the otherwise, cake. People will, otherwise naturally there will be a kind of resistance. Otherwise, people are most welcome. And as far as your that point, that is somebody is telling it is doubling the work. Not everywhere. At certain point it may be there, but certain point it is definitely helpful to the people. Organization. It is definitely helping. Yes. So we have to look at the bigger picture. Not only, whenever we are incorporating any change, probably the workloads will increase. Non-clarities would be there. More of the strategic planning would have to be done. But then again, for organization success, for your success, we'll have to look at the bigger picture कि उसको adopt करने से क्या फायदा है. Raghavendra ji, would you like to contribute something, sir? You've raised your hand, Raghavendra sir. Yeah, ma'am, I raised the hand, but ultimately what point I want to cover, that Khalin has already covered it nicely. Okay. But I just have to emphasize on this particular point that resistance to any kind of change. It is a human nature and human psychology. The person used to resist to any change. Whether now we are talking about a technology, if we will not take the technology also, yes. If you change the way of doing the things, then definitely a resistance will come. So as a commander or as a at that particular place, it is you to justify it and to bring a change. It is not only technology. If you will change your way of functioning also, then there are normal kind of reactions where there comes a resistance. Yes, and we need to overcome those resistance by our managerial styles. Absolutely, very well said. What our observation here, Nitin sir, Ajit sir, Dinesh Pal ji, Amitabh ji. Today I have no contributions. Madhusudan sir, सिर्फ एक ही chat पे मुझे reply मिला आज. How are you doing, sir? आज serious है. Madhusudan sir is not contributing today. Ma'am, everything fine. Everything fine, sir. I hope we are in for the discussion, sir. कोई disagreement? नहीं, कोई नहीं. कोई नहीं. Okay. Amitabh ji, others all, Nitin sir, Dinesh Pal sir, Israel sir. No, not hearing from you. I hope all okay. Cameras on नहीं है. I hope they are busy in their work, sir. Sir, if you are there, we would love to listen from you all also. Ma'am, एक ही point है. हाँ जी sir. टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस, लेकिन उसको हैंडल वही करेंगे मैम जो हमारे जो कांस्टेबल्स ही है. हाँ जी. उनको एक्सपर्टाइज है, उनको नहीं मतलब शामिल करते हैं साथ. विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज यू हैव टू मैनेज दैट. दैट इज द ओनली इशू.
That is the only issue. वर्कलोड तो बढ़ रहा है, लेकिन हाँ जी, मैनेज सर। भी वही कर रहे हैं जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज है। अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको सर, और ट्रेनिंग और Technical- फैसिलिटेशन होना चाहिए। मैम उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो उनका लेवल तो वही है मैम। एब्सोल्युटली। अब आप टेक्नोलॉजी है, इसके लिए तो आपको टेक्निकल लोग चाहिए। चाहिए ही That टेक्निकल। we are not catering for. We want to manage within the own resources. Though we crib, but we have to manage and we are managing also. Initially वही आपने कहा कि जितनी जल्दी अगर आप उसको रेडी समझ करेंगे जाए उतना बेटर है। करना तो है ही सर। कर तो रहे हैं मैम, अभी भी कर रहे हैं। यस, बेस्ट पॉसिबल वे से। अभी एक नया हो गया है कि परसेप्शन मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके। ड्यूटियां कम नहीं हो रही है, लेकिन अब ये कभी झंडा लगा दो, कभी साइकिल रैली कर लो, विद इन रिसोर्सेज ड्यूटी आपकी तो उतनी है, वो तो करनी है। प्लस ये एडिशनल जो टास्क है, वी आर आल्सो डूइंग दैट, वी कैन नॉट से नो, वी आर डूइंग इट। कितने मैम गुड मॉर्निंग। टाइम एंड एनर्जी। प्राइमरी टास्क और सेकेंडरी टास्क भी होता है, केवल हो रहा है। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इजराइल सर, कैसे हैं? आज सुबह से तो कैमरा ही ऑन था। मैम ऑल फाइन, दिस इज नो लैंडलाइन कनेक्शन एट माय वर्क प्लेस। Okay, difficult situation. Yeah, I am attending the course on mobile connectivity only. Oh, देखो, this is the positive attitude. हमने कोर्स छोड़ा नहीं है. Sir is finding. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, very good, yes, sir. Very good, sir. Please be with us. Would love to listen from you. Yes, ma'am. दिनेश पाल sir, thank you कैमरा ऑन करने के लिए। सर कैसे हैं? दिनेश सर अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर पूजा, इजराइल Good से morning, कुछ ma'am. कहना चाह Thank you, रहे ma'am. I'm good, ma'am. Okay, good, Dinesh sir. We spoke to Israel sir. He is saying, Vani, that he is connected through mobile. उनका चल नहीं रहा है आज connection. अच्छा, वो कुछ पॉइंट बोलना चाह रहे थे इजराइल जी। Israel sir, you want? Yeah. No points, ma'am. Just Pooja ma'am has, remembered me. That's why I was interacting. Sir, I remember Yes, each and everybody. आज नितिन सर भी नहीं बोल रहे हैं सर। मैंने आपको बताया आज मेरा BSF के पूरे इजराइल भगवान का दर्जा मत लो, याद करने पे मत आओ। नहीं सर, मैं याद कर रही हूँ। सॉरी एसके बट प्रेजेंट लगाना भी जरूरी है भाई। ऐसे भी अवतरित हो जाया करो बीच बीच। नहीं sir, on a serious note, I was remembering, because discussion is going on really well, so I want everybody to participate. Yes ma'am, I was privy to all the discussion, ma'am. Okay sir. And very welcome topic. My point on this is that firstly we should have a strong foundation. We have a very BSF, and some change drivers you have also mentioned, change for the sake of change. Right, sir. This should not happen. This should not happen. We should understand. Yes. Connection. We should ensure that we are following the existing system. Yes. और सर चेंज तभी होना चाहिए जब चेंज की नीड है, अदरवाइज इट विल क्रिएट रेस्टलेसनेस इन द सिस्टम। कई जगह ऐसा देखा जाता है मैम कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला हिसाब किताब होता है। हाँ जी सर, हाँ जी। वो नहीं होना चाहिए। जी। Absolutely. Yes, before we take a break, thank you so much Israel sir. Before we take a break, Amitabh sir, how are you? Good morning Amitabh ji. I think फिर सर का कनेक्शन वीक है। सर अभी बीच में कैमरा पे आए थे, फिर सर नहीं है। सितलो सर इज देयर। आई जस्ट वांट टू सी अजय तिवारी सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? Good morning, ma'am. I'm fine, absolutely fine. Sir, discussions are fine with your viewpoint and perceptions and I agreement? joined a bit late. Okay, sir. Some official commitment, I joined late. Okay, that's why I am listening carefully. Sir, please, sir, when we resume after the break, sir, we would love to have inputs from you also, sir. Sure. Yeah. Sanjeev, sir, how are you? Sanjeev Kumar, sir, good morning. Good morning, ma'am. I'm fine. How are you, ma'am? I'm fine, sir. थोड़े inputs आपसे भी, sir. कैसा चल रहा है, sir? Are you with us in this discussion, sir? I'm totally with the class, ma'am. But so no class or discussion, sir. I'm also attending the office also.
Okay, we do understand Hemant sir, Ajit sir, Ram Awad sir, Anand Kumar ji, I'm sure Anurag Maini ji, Nitin sir, you're all with us. Sanjay Singh sir also. Pamai sir, are you there? You're not visible on the camera, sir. Dr. Pooja will make sure that everybody talks, and that's Yeah. good about her. I will make sure, otherwise how will I listen to them? And today, as I said, I'm attached to this group for 12 days and my last session today. So I want to listen to everybody. Hemanji, good morning, sir. जैसे जैसे कैमरा ऑन हो रहा है, I'm capturing everybody. Good morning, ma'am. कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, fighting fit. सर, ओके सर, अब हम बस एक ब्रेक लेंगे सर, उसके बाद हम आपसे भी इनपुट्स लेंगे. ठीक है मैम. Perfect. So Vani is waiting eagerly कि मैं जल्दी से break announce कर दूं. So Vani, I announced the break. It is 10:51. We meet at 11:05. Is that okay, Vani? Okay. 11:05. Okay. Yeah. You want to give them 15 minutes break? Yeah. Right? Let them get charged up. Then 1 hour of discussion is there. ठीक है. Let them enjoy their cup of coffee. Okay. Thank you, everybody. We meet at 11:05 sharp. Welcome back, everybody. Dr. Pooja, are you there? Yeah, I'm there, Vani. Okay, great. So we resume from here, Vani? Yeah. Okay, thank you so much. So welcome back after the tea break. I could just hear in last few seconds, very interesting discussions going on. I do understand it's a time, we are not in the physical mode. So in the online only, you have this mode of discussion. But anyhow, we have to continue with the session. So let's go ahead with where we left in the session. Let me share these slides here with you. Okay. So far we've discussed some of the change drivers. Now in the next part of the session, what we would be focusing is about other aspects of change, and also a very interesting discussion we're going to have in this part of the session that would be on 5 types of employee attitudes. Okay. Now we come here with a very amazing model for change that has been followed for decades, and a model which is tried and tested by the various change agencies, tried and tested by the various change agents in the organization. Now what this model talks about it, and I'm sure you all would also be working on the same model. The first is the current state, जो हमारी आज की state है. Like we've had discussions, most of you have contributed. आज की state थोड़ी सी state uncertainty की है. अगर आपको पता है कि from the top what change is needed, probably a more transparent and a better communication is needed to the lower down level to explain them why the change is needed. So current state, जब हम change नहीं कर रहे हैं, we all want to be in that state, क्योंकि चेंज के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा. सो करेंट स्टेट इज फेमिलियर, हम अकस्टम्ड हैं. अब जब हमें चेंज करना है तो हमें अपनी फर्स्ट एक इनिशियल रेजिस्टेंस ओवरकम करनी है, और सेकंड अपने अंडर कमांड्स की इनिशियल रेजिस्टेंस ओवरकम करनी है. सो व्हाट विल हैपन इज, वानी, इज द स्लाइड विजिबल टू ऑल? Just wanted to check up. Khanindra sir, is it visible? Yes, visible. Thank you. I just wondered, if it is not visible. Second, when we move on, would be a messy middle. Now, this is again very important. Vijay sir ne starting mein bhi bola tha, some amount of uncertainty is there. Operational administrative issues hain. So currently, yes, I would use the word sometimes it becomes chaotic. क्योंकि जब हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, जैसे राघवेंद्र सर ने भी एग्जांपल दिया, जो रिस्ट्रिक्शन चेंज है, क्लैरिटी नहीं थी, तो उनको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में भी इन्वॉल्व करना पड़ा, फिर अपनी टीम को भी डायरेक्शंस देनी पड़ी, इनिशियल रेजिस्टेंस ओवरकम करनी पड़ी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स गॉट बेटर. सो दिस इज द मेसी मिडल, जहां पे हम सारा काम करेंगे, जहां पे हमें एक्चुअल चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए not only we ourselves have to be ready, but we have to make others ready who are reporting to you. Now, this is where your leadership skills, your managerial skills come into picture. जैसे खनिंद्रा सर ने भी बोला, over a period of time role change हो रहा है, more from an autocratic leader, it is coming to a manager. So messy middle is the place where your leadership capabilities become very, very important. क्योंकि आपके अंडर कमांड्स को भी लगेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चेंज है या कोई भी चेंज है, मे बी देयर इज फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, अनसर्टेनिटीज है, they will not understand why they will have to change or how the change brings value for them. There might be apprehensions कि इस change से कहीं हमारी जॉब पे क्या impact पड़ेगा.
So all that is where as a leader, your role becomes very, very important. And then is the future state, जब change अभी जिस stage पे हम जाना चाहते हैं, obviously जहां पे हम हैं हम बहुत settled हैं, जहां जाना चाहते हैं वो हमें पता नहीं होता है. But yes, the accepted fact is we have to change, otherwise we are no longer valuable to the community that we are in, whether personal change or professional change. Har change uncertain hoga, unknown hoga. We would not know what are the controls, we would not know how the new role is, but in spite of that we have to change. And just like sirs, various commandants also said, senior commandant said, हम एक positive approach रख के जो tried and tested models हैं, अगर हम उन models से change करें तो I'm sure the change is going to be better. So let's now understand, how do we follow this model in our day-to-day changes. So first, getting your team ready for the change. Isme we have already discussed inputs, communication, training, clarity, be with them, think of the strategy. These are the various things where we get our team ready. So just a few points which our team, content team has also noted down here, and most of these have been discussed by you. Sharing the big picture. Generally, how many of you have used it that you explain them that this is how things will be and this is how we are looking at and this is what your role is? Do you follow this approach? And now I want your inputs. जब हम कोई भी change अपनी team में introduce करते हैं, do you follow this principle of sharing the big picture with them? Yes, definitely, ma'am. Overview जो briefing है उसका वो part है. Okay. And so do you think कि ये briefing जितनी अच्छे से हो उतना ही you get people's participation for the change? हाँ, briefing से they make them understand the concept, so they can participate with their input. Okay. And sir, one more question, sir, like you've been doing it for years and years now. So sir, do you feel that now people have, with this times, people have more queries and more concerns when you are briefing them as compared to say 5 years, 10 years down the line? Not exactly. Even in the different situation, the reaction will be different. In the cases, there were less question, but the execution was very perfect or near to the achievable or desired target of commander. However, there may be more queries now. Okay. We are getting the troops and under command, those who are highly qualified. More queries, more questions, but execution, they lack that perfection or dedication. This is my personal take. Okay, perfect, sir, perfect. And Vishalji is also saying without explaining the big picture, we can't get their heart and soul into it. Yes. And sir, explain big picture में भी leader का बहुत important role है कि वो big picture कैसे explain करी जाए. There are different ways to get things done from others. So how good are you at explaining that big picture to your troops, to your team will also, to an extent, set the criteria for success for that change. Then creating a sense of urgency. Now this means कि हमें दिखाना है कि ये change इतना important क्यों है और क्यों हमें सबके efforts इसमें चाहिए. Now this is again very, very important. क्योंकि जब तक हम एक sense of urgency नहीं create करेंगे कोई change नहीं करता है. Unless and until most of us even would not take upon our fitness regime. Now it is when we go to the doctor, generally an alarm bell rings. And that sense of urgency is created. कहीं ना कहीं blood reports में कुछ cholesterol ऊपर नीचे आया है, weight issues आए हैं, thyroid आया है, diabetes आया है. God forbid ये सब हो. But then that sets a sense of urgency, and then we become actually, more conscious about our lifestyle and health. Similarly, जब तक हम एक sense of urgency नहीं create करेंगे कि ये change क्यों चाहिए और ये change कितना important है, हमें teams की participation नहीं मिलेगी. Now, this is what we've been discussing, the stronger connect in all sessions, that I have taken the earlier 3 sessions also with all of you. I'm sure. No, ma'am, sir. I would like to submit urgency. What is the need of urgency that is important and immediate also? Yes. थोड़ा सा negative impact नहीं देगा. Why वो तो बोलते हैं कि अभी तो ये चल ही रहा था, इतनी जल्दी क्या हो गई कि अभी बस 15 दिन में इसको लागू कर देना है. So sometimes when the change, they understand the importance or necessity of that change. Right, sir. Right. And they are willing to accept it. Then I don't think we need to create that urgency. Create the urgency. It will be automatically generated. That is another thing. Right.
Sir, very, very valid, sir. That's another viewpoint, and I am totally with it, sir. इसमें sir, I think जब हम ये slide भी बना रहे थे, back of our minds we had this thing only कि क्यों उसकी importance है और हमें क्यों वो चाहिए अभी, वो change अभी क्यों चाहिए, and you know why can't we wait further for the change? This is the motive of saying that create a sense of urgency, so that you know everybody gets on action in time. This is the only meaning, right, sir? Okay, then stronger connectors, I think all the commandants present here would agree with me. Jitna hamara people connect stronger hoga, like sir also said initially, you know, Jagir sir has raised his hand. Jagir sir, we'll just get back to you. Sir, you only said hum more move kar rahe hain task orientation se people orientation tak. To jitna stronger people connect hoga, utni jaldi hamari team hamare sath khadi hogi change ke liye. Yes, Jagir sir. Yes, ma'am. इसमें कुछ एक चेंजेस, वो चेंजेस होती हैं जो जिसमें विच आर ट्राइड एंड टेस्टेड, राइट, जिसकी हमारे पास में कुछ केस स्टडीज अवेलेबल होती है, और if the change is as it is a pilot project, so then definitely there will be the bigger level of resistance. yes. और अगर कोई चेंज ऐसी है, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पे जहाँ मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे हमने एक we 2.5 years back we introduced e-office. Okay. e-office जिसमें totally it is paperless. तो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ चेंज, तो there was huge resistance. Everybody was not willing to accept it. सभी बोल रहे थे यार काम बढ़ गया, ये तो हमारा काम डबल हो गया, ट्रिपल हो गया. लेकिन gradually when there were some case studies of other departments were put in front of employees, and we implemented that. और 6 महीने के बाद में, when all were tech savvy, they were it was in their habit कि e-office is much better. तो सभी ने realize किया 6 महीने के बाद में, हाँ जी sir, this change has it has expedited all the files. जिस फाइल को पहले 2 दिन लगते थे, वो फाइल 10 मिनट के बीच में होके वापस भी आ जाती है. तो दिस इज द वे. अगर चेंज, मेरा कहने का यहाँ पे ये था कि अगर चेंज जो ट्राइड एंड टेस्टेड ऑलरेडी है हमारे पास में, कुछ उसका प्रूफ है कि इसमें इट इज वेरी एफिशिएंट, उसको हम बड़े कंफर्टेबली चेंज इंप्लीमेंट कर सकते हैं. और जो नई चेंज है, समथिंग व्हिच हैज टू बी टेस्टेड, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, लोग एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट करते हैं. सर ऑब्वियसली, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही पॉइंट. जो हमारी ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिनसे ऑलरेडी लोग देख चुके हैं बेंचमार्क्स की इससे फायदा होगा, पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट. बट यस सर, जैसे कोरोना ने हम सबके लिए अनसर्टेनिटी कर दी थी, गवर्नमेंट्स वर नॉट नोइंग व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी टू फॉलो. सो एवरीबडी, इनफैक्ट एवरी गवर्नमेंट वाज आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग. वी एक्सपेरिमेंटेड विद द वैक्सीनेशंस आल्सो. पीपल वर एप्रीहेंसिव कि वैक्सीनेशन लगवाएं या नहीं लगवाएं, यू नो. सो समथिंग, those kind of apprehensions were very difficult to manage. And imagine sir, even at the police level, even at the government levels, NGO levels, corporate levels, so many awareness programs were being done to make people a part of it कि हम ये change कर रहे हैं and it is for your betterment, although we do not have tried and tested results because it's a novel situation. वायरस पहली बार ये वाला आया है जो कोरोना का है. So डेफिनेटली सर, आपका एग्जाम्पल बिल्कुल एप्ट है. जिसके लिए हमारे पास केस स्टडीज है, जिसके लिए हमारे पास एविडेंस है, वहां लोगों की पार्टिसिपेशन इजियर है, और एज अ कमांडेंट, एज अ लीडर, आपके लिए भी वो चेंज लाना इजियर है. बट द चैलेंज इज व्हेन इट्स अ न्यू सिचुएशन. एंड सर हियर व्हेन द सिचुएशन इज न्यू, जागीर सर, आई एम श्योर यू वुड अग्री विद मी, देन शेयरिंग द बिग पिक्चर कि ऐसा होगा या ये प्रोजेक्शंस हैं, ये चेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है. Totally every time being with your team and keeping channels of communication open. और कई बारी सर उस वाली जर्नी में, जागीर सर, जैसे आपने कहा, जहां चेंज पहले उस तरह का कभी नहीं हुआ है, इट्स द फर्स्ट टाइम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, वहां बीच में ट्रांजिशन टाइम पे फेलियर्स भी आएंगे. एंड एज अ लीडर, owning up to those failures will make your team motivated. यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा. हाँ जी सर. हम डेफिनेटली द लीडर विल हैव टू पोर्ट्रेट अ बिग पिक्चर. Yes. लेकिन यहाँ पे उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ दैट प्रोजेक्ट, yes, उसको भी साफ करना वहां पे exactly, एग्रीमेंट पे, वहां पे एग्रीमेंट पे लाना पड़ेगा कि अगर ये नया प्रोजेक्ट है, लोगों को यहाँ पे समझा के, मेरे ख्याल में ये करना पड़ेगा कि अगर इसके ये फायदे हैं और इसमें अगर ये नुकसान भी हो सकता है, और ये चैलेंजेस भी हो सकते हैं हमारी जर्नी में. एग्जैक्टली. और कई बारी सर उस चैलेंजेस में वी आर ऑल ह्यूमंस.
You know, you are also leaders. You are not, we are not, you know, almighty that कि हमारा जो हमने plan करा वो होगा ही होगा. Sometimes, you know, there will be a lot of changes, lot of failures also happening. But yes, every failure is a lesson in the change journey. Sir, अब हमने pandemic की बात करी, तो governments all over the world, even they failed at some point of time or other. तभी सर पहले जब यूएस में हमारे केसेस ड्रॉप होने शुरू हुए, हमारे सेकंड और थर्ड वेव में जब इंडिया ने कंट्रोल मैकेनिज्म्स करे तो यूएस में केसेस बढ़ गए. सो यू नो देयर इन द स्ट्रेटजीज देयर कुड बी सर्टेन फेलियर पॉइंट्स. Similarly, when we are in leadership roles, BSF or any other organization, there would be failure checkpoints also. So a leader has to be together with the team in those failures. People will fail क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई चीज पहली बार ही हो रही है. But here, what becomes most important also is that you keep on coaching and supporting people. Sir, अगर हम अपनी फैमिली में भी कोई चेंज लाएं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई चेंज लाएं, आई एम श्योर यू नो एज अ हेड ऑफ द फैमिली, इफ यू आर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज अ बिग पिक्चर, देन you, your spouse and your kids are with you. You have to explain them why that is important for your family. Keep connected with them, keep explaining them, supporting them that yes, we are all together in that change. और उस चेंज में भी कई बार चैलेंजेस आएंगे, तो हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर अभी अटके इस पॉइंट पे, probably we'll get the success, and this is the way of life. I'm sure you agree with me, Jagir ji, on this. Khanendra ji, Khanendra sir, you've raised your hand, sir. You are a valuable input. इसमें एक पॉइंट है. I am having one point like to add. हमारा यहाँ जो भी टेक्नोलॉजी ऐड होते हैं मैम, इसको आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन जनरली मतलब इंडक्ट किया जाता है. तो इसमें there is scope of failure is very limited. Yes, the desirable result, you may not get 100% desired result, but there will be result. But failure, the word generally may will not apply. I may or my colleague may or may not agree with me, but generally I feel we generally do not have that experience कि ये टेक्नोलॉजी हमने लाया और इससे ये फेल हो गया. तो ऐसे मैंने तो कम से कम I have not seen. ओके खानेंद्रा सर, इसमें हमारा जो कहने का मतलब है, प्रोबेबली व्हेन वी आर डूइंग समथिंग एब्सोल्युटली नोवेल, आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई, जैसे फ्यू ऑफ द लास्ट डिस्कशंस विद बीएसएफ कमांडेंट्स, तो एक हमें सर ने बताया था कि वो नक्सल्स वाले एरिया में थे और वो उनके साथ लोकल्स के साथ मिलके दे वर डूइंग समथिंग, एंड देन यू नो इनिशियली इन द फर्स्ट फेज द प्रोजेक्ट डिड नॉट टेक अप वेल. And then they realized, you know, where more of the local support was needed. So it was a checkpoint where the team did not succeed as they wanted to succeed. They learned their lessons and then they moved ahead. So इसमें ये मतलब नहीं है कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही फेल हो गया, बट कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग रखे कि अगर कहीं किसी पॉइंट पे हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, वी चेंज आवर स्ट्रेटजी एंड वी मूव अहेड. This is what we want to say. I agree, ma'am. That is why the term exactly the failure, that word that I mean to say. Yes, there may be certain point. That is why I mentioned categorically that I may not get the desired result, 100% desired result. But yes, there will be result and there will be positivity. I mean to say, yes, they say, for example, that example that you have quoted. In that case also, it was not total failure. It is not total failure, but sir, एक point पे अगर process में किसी step पे अगर हमें problems आ रही हैं या वहां तक हमारे वो desired outcomes नहीं आ रहे हैं या success नहीं मिल रही है, then we don't have to stop there कि ये change नहीं होगा. We have to keep may be modified. And here leaders' motivation is important. That may be modified accordingly, and that modification is required at that point of time. Right. We got your point, sir. Failure word you don't want to use here, but yes, there will be bottlenecks and challenges. So we need to accept that we've not received the desired outcome. I just want to correlate my point with Mr. Khaninder. Yeah. Khaninder he is telling that there is no as of now there is no such technology that which has never been failed. So I want to just give one example to my dear Khaninder. Tata introduced Nano. Yeah. It was a very publicized project. Yeah. And it miserably failed. Nano miserably failed. So sir, expectations इतनी high raise करती थी उस project में. Ma'am, इसमें मैं भी बोल रहा हूँ कि I would like to add to that, Mr. Zagir, one thing. In our context, I am telling whatsoever technology we have introduced, it is हमारे में भी है. हमने we also tested so many technologies. We tested Loris, we tested BFSR,
So do you think they're so BFSR is not a failure. BFSR is a requirement. They are not so effective. It is not. That I mean to say, why I am telling it is not failure. It is desired result of 100%. You may. Sir is talking about the terminology being used, Jagir sir. Khanendra sir, I got your point and Jagir sir's point also. Jagir sir भी यही बोलना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है हम जो भी चेंज एंटिसिपेट करें उसके सेम रिजल्ट्स आ जाए. बोलना Khanendra sir भी चाह रहे हैं, but Khanendra sir does not want to use the word failure here. Sir, we got your point, but yes, we use it in this way कि हमें हमारे desired outcomes अगर किसी भी point of time पे नहीं मिल रहे हैं, we are not there to stop. We are there to coach and support as leaders, and we move ahead. Probably we try another path, another way out. Definitely. Vishal sir, you had also raised your hand. Sir, you wanted to add something, Vishal ji? अब इसमें जो हमारा subordinate staff है, they must also be convinced and confident enough from our briefing and our support that our commander is standing with us, even if there is some lapse occurs and there's some failure occurs while trying to do this. Yes. It's not that he will leave me out. Okay, you have failed. This is your lapse, or lapse on your part. They must have that confidence, and that comes from this our coach and support. Coach and support. And sir, ये पूरा का पूरा जो हम मॉडल ही डिस्कस कर रहे हैं, very rightly said sir, this model is getting your team ready. And sir, आपने बहुत सही कहा, you have to be there with the team. I don't remember, but one of the senior commandants here only had given an example मेरे last वाले session में कि जहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था और 10-10 steps ले रहे थे, तो 2 step एक ले रहे थे, फिर आगे खड़े हो रहे थे. So he was there with his jawans crossing that the challenging way. So yes, you have to be there. You can't only guide and tell your team that this is what has to be done. हर change में जब तक आप अपनी टीम के साथ continuous support में नहीं खड़े हो रहे हैं, change के success उतना जल्दी मिलने की उम्मीद कम है. We have to be, we have to move from the autocratic to a democratic way अगर change हमें लाना है. And so that is same. Even governments, police, all the higher authorities, even if they have to get any change from the citizens, even we see so many support groups coming together and convincing people about the change and being with us. एक सिंपल सा रेड लाइट पे हम अपनी कार का इंजन नहीं ऑफ करना चाहते, उसके लिए हमारे आगे पीछे कितने लोग हैं एक्सप्लेनिंग अस द इम्पोर्टेंस एंड ब्रिंगिंग अबाउट दैट चेंज इन आवर ड्राइविंग एट्रीब्यूट्स, बट वी एज सिटीजंस डोंट वांट टू डू इट अनलेस एंड अनटिल हमें कोई बहुत बड़ी उसके पीछे चीजें नजर आ रही हैं जो हमें बेनिफिट कर रहा है. But वो करते हुए भी we don't want to change. That's a human nature. So imagine, getting a new novel change where you will have to get it done through your teams. And when we are talking about a team size of 1,000, 1,200, it's actually a big challenge for the commanders also. When earlier also, while working as a staff officer in battalion or as battalion commandant, most of us, when we go to the fields during the night hours, we used to ask every local commander how many HSTI you are having, how many monocular you are having, how many are functional, where is your monocular, what is, show me how it is working. So I take that and start looking from that. So that way he also finds that the commander is genuinely interested and very much concerned about the use of this technology. So by our own actions, queries, we also generate interest in that. Absolutely, बिल्कुल सही कहा विशाल जी. आप एज अ लीडर रोल मॉडल हैं. एंड सर जो हमने लास्ट टीम्स वाले सेशन में भी सर अगर डिस्कस करा था जहां पे शेयर्ड वैल्यूज एक टीम की होनी चाहिए. सर विशाल जी जो आपने एग्जांपल दिया वो एक्चुअली एक कमांडर, एक लीडर अपने बिहेवियर से वो शेयर्ड वैल्यूज ही इनकलकेट कर रहा है टीम में कि आई एम देयर विद यू इन दिस चेंज. एसके सिंह सर, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू सर. मैम इसमें two small points. One, the man behind the machine is most important. Right. Secondly, whatever technological changes you are trying, it has to have a realistic goal. Yeah. अभी आप यहाँ देखेंगे इन जनरल एनसीआर में अगर जाती हैं आप मेट्रो से लेकर के और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आनंद विहार, एवरीवेयर यू हैव जस्ट प्लेस डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर एंड बैगेज स्कैनर. हाँ जी सर. And you know the output.
So it discourages people. If somebody is sitting there is scanning some item and there a bomb has been now found in one of the train. So if the man behind the machine or the person who is using that technology is not proficient enough, then it discourages people further to use that technology. हाँ जी, बिल्कुल सही से. Negative feedback. So having in possession a good manager should always have all three categories of equipment in his inventory. That is obsolete, obsolescence, and state of art. Yes, sir. So we generally don't use the equipment. We just go for a state of art. वैसे ही है, जो कोई आदमी दांत नहीं साफ कर रहा, उसको दातुन की जगह वो सीधा ऑटोमेटिक जो है वो ब्रश ही मांगता है, फिर उसको कैसे यूज करेगा? तो एक्सपेक्टेशन एंड टू बी रियलिस्टिक. It has to be realistic. बिल्कुल सही. Singh sir, बिल्कुल valid point. The man behind the machine and what kind of technology and is it realistic or not? That is again important, you know. And as a leader, we have to see how do we get our team, you know, in that perspective ready. And sir, by the way, I stay close to Anand Vihar only, sir. I am in Preet Vihar. I am also in East Delhi. Ma'am, he also knows that by using this technology, this is going to bring more accountability to me. Yes, yes. और सर वो स्कैनर में भी है और continuous observation में भी है because of the technology. And if lapse occurs, then it will be said that you have been given this machine, and still this lapse has occurred, so he will be more accountable for the mistake. Yes. So it is best way that this is not there. मैं एमटी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पब्लिक परसेप्शन पे जो ये सीसीटीवी की जो प्लानिंग है ना दिल्ली गवर्नमेंट को, यू जस्ट वॉच इट. हाँ जी सर. अगर आप इसको 24 घंटे फीड को भी अगर आप रिजर्व रखना चाहेंगी या 72 घंटे या 30 दिन का जो डीवीआर चाहिए आपको, स्टोरेज यू नीड इन सर्वर यू कांट इमेजिन. इमेंस है सर, इमेंस. सर मैं आपको इसलिए सो एक्चुअली हमने कैमरा लगा दिया, तो ये जो ये टेक्नोलॉजी को से दुनिया को बेवकूफ बनाने की जो ट्रिक है ना, वो इंडिया में ही है. यस सर. सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो. उसके लिए स्पेस इतना चाहिए, हमें इतना मेमोरी चाहिए ये सब चीजों के लिए, बट वो बैकअप प्लान्स इन प्रोसेस और रेडी नहीं है हमारे पास. बिल्कुल. जो ऐसी जगह पे कैमरे लगाए जाते हैं जो डेड जोन है, और उसके एक रीजन या तो हैबिटेशन नहीं है, चाहे इलेक्ट्रिक पोल नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. और मजेदार बात है कि 40% ऐसी प्लेसेस पे ही हमने कैमरे लगाए हैं, लेकिन उनके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी और उसके तो बंदोबस्त नहीं है. जो उसकी पावर कैपेसिटी है उससे वो रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज इट विल बी ऑफ. यस सर, बिल्कुल सर. सो अ प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन फर्स्ट इज नेसेसरी. रियलिस्टिक. आई मीन टू से आप उतने नंबर्स नहीं फेवरेबल बनाओ, बट व्हाटएवर यू डू इट शुड बी विजिबल ऑन ग्राउंड एंड इट शुड उसके रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए एंड फोकस्ड अप्रोच से. एब्सोल्युटली सिंह सर. Totally agree. Now, I'm sure most of you have an answer for yes here. Does your team share a common response on why we are going through the change? Anybody with a no here? I'm sure with great leaders like you, all of you have been communicating the big picture to your teams. So moving ahead, now when we are sharing the big picture, we already discussed, but some pointers here. When we are sharing the big picture, the why of the change is important. और वो change अभी क्यों? जैसे हमने sense of urgency अगर कभी है, तो वो change अभी हमें क्यों शुरू करने की जरूरत है, ये भी पता होना चाहिए लोगों को. Plus your people should also know, your team should also know what is in the future state. क्या क्या challenges आ सकते हैं और किस तरह की हम vision रख रहे हैं उस change से, so that people are prepared. Then what could be the pain of change? Now again very important. हमारे different milestones of change आ सकते हैं, especially जैसे राघवेंद्र सर ने भी हमें पिछली बारी बोला, if it is a team size of 1000, probably it is a team size of 5 to 10, you know, where he is working directly day in day out, and then they have their own reportees. तो at least उस वाले group को तो ये जरूर पता होना चाहिए कि what could be the pain spots. They should be very clear about the picture. जहां पे भी हमारी confidentiality allow करती है, everybody should be on the same page. Then how as a leader can you do it? We've been discussing again and again, communicate, communicate, communicate. There is no other option. Reinforce through your behaviors. Consistency is बहुत important है. ये नहीं कि आज हमने change drive करा,
एक पार्ट आ गया, उसके बाद हम थोड़े से ढीले पड़ गए. Energy levels should be same at all stages of change. Otherwise, people will also lose their energy level. I always believe it personally. जिस तरह से एक लीडर की एनर्जी लेवल है, इट इज एनर्जी लेवल्स आर कॉन्टेजियस. जो आपका विजन, आपकी एनर्जी, आपकी मोटिवेशन है, वो ही आप अपनी टीम में नीचे फ्लो करते हैं. सो set behaviors for your team which you want them to replicate. Clarify the roles. Now again, this is your role as a leader. आप कितना प्रॉपरली अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहे हैं, कितनी प्रॉपरली आप अपनी टीम में काम डिवाइड कर रहे हैं, और उसको आप कितनी प्रॉपरली मॉनिटर करके, रेगुलेट करके फीडबैक लेते हैं. आर यू with me in this, that setting tasks clearly with your under commands, feedback and continuous monitoring is important, otherwise the team will fail. Do we agree with this? Yes. So anything that you have done unique in this area, जब आप कभी कोई चेंज ला रहे हैं, आप अपनी टीम में कैसे काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आप अकाउंटेबिलिटीज कैसे सेट कर रहे हैं, इम्प्लिसिट अकाउंटेबिलिटीज भी आप सबकी कैसे सेट करते हैं? Any examples that you would like to share here? Your way of working, maybe others can benefit with it. आई एम श्योर सर, आपके डेफिनेटली यूनिक वेज होंगे. अगर हमें अपने बच्चों से भी जब कोई काम कराना होता है, तो हम किस तरह की अकाउंटेबिलिटी सेट कर देते हैं, या हम कैसे उन्हें मोटिवेटेड रखते हैं. अगेन इट डिफर्स फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर. आई एम श्योर व्हेन वी आर ब्रिंगिंग दिस चेंज, व्हाट काइंड ऑफ मैनेजरियल स्किल्स यू आर यूजिंग of how can I action it would be different. Please think about it. खानेंद्र सर, कोई चेंज लाए और आपने उसको डिफरेंटली मैनेज करो बेटर आउटकम्स के लिए? Yeah, basically, ma'am, the change that is introduced, anything change, matlab any new task that I have assigned to anybody. Yes. So initially I make it clear to everybody why it is supposed to be done. Right. And what is the benefit out of the project they will derive. Right. So that thing at the very initial stage it is explained, and mainly whatsoever benefit is there for them itself, that is explained well. Secondly, yes, constant feedback, how much you have done and what you have done. Basically, हमारा क्या होता है at a time, multitasking means a specific task has been given to some individual, say construction related to a construction of a house or construction of something. So in that case, the individual is also not exempted from his duty. He will do his task not less than 8 to 10 hours during daytime, and night time he will be assigned some other duties. So that is definitely a demoralizing factor, and I ensure that जो बंदा सुबह से उस particular task में लगा हुआ है, उसको शाम को किसी additional काम ना दे दे, additional duty ना दे दे, उसको exempt कर दिया जाए. So that is the kind of incentives given to the people. So ठीक है भाई, तू दिन में काम कर ले, रात तो उसको तुम आराम करो, next day then again you can work. So that is compassion from the leader, and that goes a long way. Probably every time we can't monetarily compensate, but these behaviors from the leader again go a long way in getting the commitment. Raghavendra sir, so you've raised your hand, sir. Yeah, ma'am. Good morning, ma'am. Yeah, I just want to add on this particular aspect, the purpose of the change. It has to be clearly conveyed to the team. That is what a commander has to be the part of that particular thing when they are trying to bring a change. Right. So the communication itself is clarify that particular thing where the commander is going to give the purpose, first of all, to clear in their mind to why we are going for a change. Right. That is, I'll give an example. If we are going for a change of some kind of a domination plan where we are dominating a certain kilometers of the border, and ultimately we are seeing that this is not giving the results, what desired result which is required. Still, there are various gaps which we have to cover. So as a commander, we have to bring some kind of changes for our domination of that particular area. Right. Now, once you are going to change that complete deployment, then definitely the purpose is required to be clarified to the team. And your team, maybe whatever you are dealing with, but what I have seen it, what is there in your mind, it is you to explain it on the ground, to make them the thing understand, and the change is accepted easily rather than
a kind of resistance, and with the change also they are not performing to your expectation. Right. So you have to go to that particular level. When the change is there, definitely you should be in close proximity to clarify each and every aspect of that change which you are bringing in the system or in your battalion or in your organization. Yes. So here the leader or the commander has to move to that particular directions and available on the ground. Yes. And initially, once he will be available on the ground and the change is taking place, then definitely with his availability, the persons who are going for a change, they'll have a confidence amongst them. Bilkul, And bilkul, ultimately, then purpose can be achieved. This is absolutely what tactical. What I In have continuation to what Raghavendra has said, brought out elaborately in this heading, what is it? We have to tell them what has been the expectation so far and how we have been able to meet that, and what are the new expectations now, revised expectations for which we have to work. So that point is, it's part of what Raghavendra has told. We told in the ground that some particular patch is not being addressed properly, so new strategy to be devised. So it is there only that these expectations are due to the fact that this gap has been not being properly addressed. Absolutely. Expectations of earlier, what they were and what now they are of the higher ups. वो clearly outline करना है. Absolutely. Very well taken point, sir, Vishal sir. And I'm sure, with these kind of things, you are definitely getting that to the level of change. So this is what we were talking about. Sometimes आपको ये देखना है कि वो change किस तरह का है. Not every change, like sir also said earlier, not every change would be urgent. So depending upon what is the level of urgency, you will have to tell your team, is the change, is it usual business that we are bringing about the change, क्या वो routine change है, उसकी medium level urgency है या उसकी high level urgency है. जब हमारा ये decide होगा, then only we can get the team to create that sense of energy. और अगर कहीं sense of urgency हमें चाहिए, तो उसके लिए भी we will have to work, we will have to focus on what are the actions and outcomes which are immediately desired. जहां changes immediate चाहिए. For example, situation has come up and you need to take some tough decisions and you need to change your modus operandi. So you have to be in and out there to create that urgency of change with your team. So वो depend करेगा आपका change कितना urgent है या कितना important है. Stronger connect, we've already talked much about कि आप अपनी टीम से connect कैसे establish करते हैं. Organization से over the top to bottom connect कैसा है, आपका अपनी टीम से top to bottom connect कैसा है, and within the team वो connect कैसा है, that's also equally important. First is top to bottom, you with your team, and then all the team members together, do they share the same connect within the team? Now again, that is your credibility as a leader कि आपकी टीम में cohesiveness कितनी है और सबका connect कितना है within the team. So on all these three parameters, people connect is extremely important. Now I will quickly move to the most interesting part of the discussion now, this is what we've discussed already in detail in the now. In the middle of change. Now, this was all, that we need to coach and support. We need to be with them throughout. We need to explain them the big picture. We need to accept our, failures or not achieving the desired outcomes. This was all the part of getting your team ready for the change. Now, when the change is happening, जो सबसे tough stage है, जहां uncertainties है, जहां कुछ चीजों में आपको भी clarity नहीं होगी, and probably you are also seeking the clarity from the top. How do you build your stronger team? कैसे आप वो चीज कवर करेंगे? Now this is research framework. 5 तरह के employee attitudes हम सब में हैं, which favor or which do not favor change. Like I said, हम change को कई बारी कुछ लोग आपको दिखेंगे जो आपके साथ खड़े होंगे कि yes sir, we are there and we do understand कि इसमें effort लगेगा, but ये change करना जरूरी है. जैसे आपने बात करी, लोगों को समझाया टेक्नोलॉजी में जो फाइल 2 दिन लगा रही थी, वो फाइल अगर 10 मिनट में मूव कर रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल्दो अगर एफर्ट है, सो यू हैव पीपल हु आर देयर स्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट.
बट हर कोई आपकी टीम में इतना पॉजिटिव और इतना प्रोमोटर नहीं होगा. नाउ probably I would leave it to you to introspect कि आप भी इसमें से कहाँ हैं. When your top needs a change, when your bosses want to have this change expectations from you, who are you? And also please try to introspect who are your team members. उन सबको आप कैसे deal करते हैं. Now let's understand what is this. The very first is, अगर हम यहाँ पे देखें, just let me use a marker out here, just give me a second. Use a spotlight. Okay, if we look here, हमारे पास इस एक्सिस पे एनर्जी है, मींस चेंज को लाने की एनर्जी, या एनर्जी इज मूविंग हियर लो टू हाई एनर्जी लेवल्स. डेफिनेटली हमें हाई एनर्जी चाहिए चेंज के लिए, बट हाई एनर्जी के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है कमिटमेंट टू चेंज. यहां मूव हो रहा है कमिटमेंट नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक. अब लेट्स स्टडी द फर्स्ट वन, कॉम्बैटेंट्स. कॉम्बैटेंट कौन है? एनर्जी लेवल तो बहुत हाई है बट वो नेगेटिव है चेंज के लिए. दे आर पीपल हु हैव हाई एनर्जी लेवल्स बट दे आर नेगेटिव टू चेंज. नाउ दे आर कॉम्बैटेंट्स. आई एम श्योर आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, वो एंथुसियास्टिक बहुत है बट वो उस चेंज के लिए एंथुसियास्टिक नहीं है. Probably they are the ones who will, आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये बहुत क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, अपने कंसर्न्स रेज करते रहेंगे चेंज के लिए. जनरली आपको उसकी नेगेटिव आउटकम्स बताते रहेंगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. सिंह सर इज स्माइलिंग. सिंह सर, आर देयर पीपल नियर टू यू who are combatant? नहीं मैम, ये पूरी फोर्स में एक जनरली यू विल फाइंड इट इन एवरी कैंपस, उसमें लिखा रहता है जोश में होश नहीं खोना है. हाँ, जोश में होश नहीं खोना है, राइट. तो थोड़ा कम होश से ये लोग काम करते हैं जो ज्यादा जोश में रहते हैं, इसीलिए मैं उससे कनेक्ट कर रहा था. Okay. But sir, to everybody, all these senior commandants here, do we find combatants around us जो एनर्जी में तो हाई है बट कमिटमेंट टू चेंज में उनकी कमिटमेंट लो है? तो जनरली दे कैन बी स्पॉयलर्स टू चेंज, क्योंकि वो बाकी टीम को भी नेगेटिव कर सकते हैं. उनकी खुद की एनर्जी लेवल हाई है तो वो एनर्जी स्प्रेड करते हैं सब में, बट वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं कि नहीं, इस चेंज की जरूरत ही क्या है. दे आर ऑलवेज टॉकिंग अगेंस्ट द चेंज विद हाई एनर्जी. डू वी हैव कम अक्रॉस सच पीपल? Maybe colleagues, maybe under commands, even maybe people up in the higher kisi brainstorming sessions mein where we are discussing change, we can identify such people. Anybody has an experience or any comments here for combatants? Resistance तो होगा visible, there must be a different point of view, लेकिन ऐसा नहीं होगा जिसको ओवरकम नहीं किया जा सके, क्योंकि जो चेंज तो अगर पॉलिसी का पार्ट है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट. ओके, तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ सर एक पॉइंट सिंह सर है यहाँ पे कि क्या हम हाई ऑन एनर्जी और नेगेटिव कमिटमेंट टू चेंज हमारी कम है या फिर हम इधर है? सो दैट मींस व्हाट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से इज मोस्ट ऑफ द पीपल मोर ऑफ ए प्रमोटर. Yes, towards promoter side, even if they are high in energy, not considering any good aspect, they will not oppose it, knowing that they will be marked and they will be dealt accordingly. They'll be dealt, sir, but yes. Probably हो सकता है वो combatants हो, but the policies are such that yes. Or warnings and discipline is such that they will become promoters. In spite of all the creeping, he will do that. He will do that. तो सर कई बार ये भी हो सकता है कि वो जो आप मुझे बता रहे हैं in spite of cribbing, he will be a passive supporter. वो commitment to change most of them they convert over a period of time into that category. हाँ, तो सर इसका मतलब हम ये assume कर सकते हैं कि वो passive supporters, most of the under commands are there, but they become promoters with the right leaders approach. Yes. Yes. Okay. Others on this, do you agree that most of your under commands would be passive supporters? So we don't talk about combatants or angelic troublemakers here, those people who are negative. We assume कि अगर उनकी commitment to change थोड़ी यहाँ पे भी है, तो with your support, this commitment to change can move here. Is that so? Is that so, everybody? Yes, ma'am. Yes.
Yes, it is there. It is there. That may be changed. That may be changed, but not completely. It may be enhanced. सर अब मेरा क्वेश्चन आपसे, सर आपने बिल्कुल मुझे सही कॉन्टेक्स्ट दिया। तो सर अगर आपके कुछ लोग, सपोज आपके जो इमीडिएट रिपोर्टीज हैं, वो उस चेंज के लिए पॉजिटिव तो हैं, बट उनकी एनर्जी इतनी हाई नहीं है चेंज के लिए, तो आप उन्हें इस कैटेगरी में प्रमोटर कैसे लेके आएंगे? विद योर लीडरशिप। I'll support them. I'll support them whatsoever best possible way to support them. Okay. So I'll definitely support them to bring to that level कि okay भाई, वो अगर if he is in the fourth category, mean passive supporter, he will definitely pose some problem. Sir ये नहीं हो पाएगा, this is not there. Right, बिल्कुल right. So I'll try to provide maximum to them. Out of them, say 10 points he has raised, 10 deficiencies he has brought out. So out of that, at least 2, 3, 4, 5, whatsoever best possible, I'll provide to him. And then he will definitely bound to work. Automatically, he will be bound. Okay. He may be motivated or he may be bound to work. Both way it may be possible. Okay, perfect, sir. Sir, अगर by chance, वैसे जैसे सिंह सर ने भी कहा, chances कम है, बट सपोज यू कम अक्रॉस लाइक वी से कि आज के टाइम पे जो हमारी न्यू जनरेशन फोर्स में एंटर कर रही है, दे आर वेरी लॉजिकल, दे आर एनालिटिकल एट टाइम्स, यू नो, एंड दे आर आल्सो जजिंग एंड क्वेश्चनिंग एट टाइम्स बिकॉज दे आर थिंकिंग विद देयर ओन माइंडसेट, ओन लॉजिक्स। अगर बाय चांस you know somebody is an angelic trouble maker, उसका एनर्जी लेवल भी काफी लो है और उसकी कमिटमेंट टू चेंज भी नेगेटिव है, so here my question to you, it's a tough situation, so how do you bring that person to here, promoter? फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर? इसमें मैम what I will supposed to do and what I will do in that case, I will first of all I'll explain him in detail why it is required to be done and what is task and why it is required to be done and how it will be beneficial to them. Okay. I'll try to convince him. If not convinced, then it will be an order. You have to do it. Go ahead. Yes. That's it. Yes. And sometimes, sir, there would be disciplinary actions which are also taken. Am I right? If people are actually not supporting. And so maybe. So sometimes I'm sure you all agree that it is a hard way to make the angelic troublemakers to promoters also. Ma'am, look, there are two issues. He may not be willing, but he may not be willing worker in that case. But in our uniform force, if your boss asks to do, meaning supposed to be done, there may be kind of creeping initially, but ultimately it will have to be done. Everybody is aware कि बोला है तो करना ही है तो करना है. Ultimately, you have to do it. You may be willing or you may be unwilling, but supposed to do. That sort of thing may be there. Absolutely. बिल्कुल. Jagir sir, your inputs on this? Yes, ma'am. Ma'am, before going ahead, just I wanted to know what do you mean by energy? Yes. Okay. Energy. Okay. Energy, sir, इसके अंदर मतलब है suppose एक इंसान है, उसके वैसे otherwise to work his energy is high, right? He is enthusiastic. He is high on energy. वो हर चीज में contribute करते हैं, participate करते हैं. But कहीं ना कहीं जब चेंज की बात आ रही है तो वो आपकी टीम में विलिंगली नहीं पार्टिसिपेट कर रहे उस चेंज को लाने में। सर कई बार हम इन लोगों को स्पॉट कर लेते हैं कि ये सब लोगों से बात कर रहे हैं, नहीं ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी नहीं चाहिए, इससे हमारा क्या फायदा है, एंड देन दे विल गो ऑन यू नो पासिंग ऑन दैट हाई एनर्जी व्हिच इज नॉट दैट पॉजिटिव टू अदर्स, एंड यू नो दे इंस्टिल दोस कंसर्न्स इन द अदर्स इन द टीम, ताकि वो सबको ग्रुप करके इकट्ठे हो कि हमें इस चेंज की जरूरत नहीं है। Can we call it attitude? Yes, sir. Absolutely. Energy is a part of your attitude. Definitely, sir. Rather, attitude will be because the energy appear to me it's a physical energy, emotional energy. कौन सी energy की बात हो रही है? It's basically an attitude towards the work. Are you with a positive attitude or a negative attitude? Absolutely. And then you move ahead along the x-axis. For the commitment purpose. Yes. और सर एक चीज और सर, इस एनर्जी में कमिटमेंट टू चेंज इज सर टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज, जो आप कह रहे हैं सर, ये जो हमारे एक्स एक्सिस पे है दैट इज मोर ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज, कि हमारा चेंज उस चेंज की तरफ। सर जैसे अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज को लिया तो कुछ लोग जो है वो अदरवाइज ओवरऑल फिजिकल एनर्जी अपनी यू नो ओवरऑल पर्सोना में काफी एनर्जेटिक है। जैसे इफ आई से आई एम एनर्जेटिक,
बट सी इफ टीम AITD इज टेलिंग मी कि हमें सेशंस इस तरह से ना करके इस तरह से करने हैं, नाउ इफ आई एम नॉट विद देम इन द चेंज, I might start, discussing with the other coaches कि I don't feel, why we should deliver the content in this way. I feel it is going on the right way. I'm high on energy, but I'm communicating my negative concerns for the change to all others in the team and trying to reduce this chances of change in the team. Do you get my point, sir? But Yes, if ma'am. I'm a promoter of this change, now team AITD tells me that we need to approach this training in this way. And if I'm a promoter and that means I'm high on energy, but yes, I say no, Vani and Dr. Batra, I am with it. I think we should experiment doing this kind of a training. Then I'm a promoter. But other way, if I say no, this change is not needed. I don't think we need change. All the coaches are doing great. What is the need for change? And I keep questioning and keep showing my resentment with high energy, then I'm a combatant. और अगर मैं ना अपनी एनर्जी शो करती हूँ और बट मेरी चेंज के लिए ठीक है, चेंज हो जाए, ट्रेनिंग को चेंज करना है, ठीक है, वी विल पार्टिसिपेट इन इट, बट विद लो एनर्जी आई एम अ पैसिव सपोर्टर ओनली. बट व्हेन आई ब्रिंग दैट एनर्जी इनटू इट एंड आई माय टोटल विलिंगनेस, दिस इज द बेस्ट ग्रुप, देन आई एम अ प्रोमोटर ऑफ चेंज. फिर मैं अपनी टीम के साथ खड़ी हूँ कि हाँ चलो आगे करते जाए. जागीर सर. Yes, ma'am. Firstly, I was also stuck on the same point that Mr. Ajit has raised. Yeah. I also want to understand what energy is here. So, Sir, attitude. One thing you have mentioned here that energy from energy you are telling it is basically the attitude of a person to accept the change. Yes. So, I also want to add Sir, here attitude, that Jageer sir, let me take this humble opportunity to interrupt out here. Sir, attitude is more commitment to change. Energy also talks about your physical, mental, emotional energies. And it also needs energy. I think also includes the competence of the person to understand. Yes, absolutely. Sir, आपकी एनर्जी लेवल्स क्या हैं उस चेंज को ड्राइव करने के? सर, एक तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं. पॉजिटिव आप दोनों कैटेगरी में हैं. देखिए, पैसिव सपोर्टर्स भी पॉजिटिव है और प्रोमोटर्स भी पॉजिटिव हैं. बट पैसिव सपोर्टर क्या कर रहा है? ठीक है, आप उसे काम बताते जा रहे हो, उसका मन है नहीं है, वो आपके चेंज के में आपका पार्ट है, वो करता जा रहा है. बट प्रोमोटर क्या है? आपके साथ खड़ा है, इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है अपनी एनर्जी से और उसको ड्राइव कर रहा है आपके साथ. ये आपको फॉलो जनरली कर रहे हैं और आपकी बात मान रहे हैं. बट ये वाला अंडर कमांड आपके साथ खड़ा हुआ ड्राइव कर रहा है. मोटिवेटर इन द चेंज विद यू इज अ प्रोमोटर. Is that okay, Jageer sir? Yes, I understand. It basically for easy implementation, the under command also has to be promoter. Yes, they sir. also have to be promoters. और सर आपकी सक्सेस तब है सर, सपोज आपके BSF में say from the top a change has to be initiated. I'm sure they will involve all the IGs, DIGs and commanders. तो जब ये सपोज आप इमेजिन करें सर, एक अगर सेशन हो रहा है जिसमें चेंज डिस्कस हो रहा है, कुछ लोग उसमें आपको दिखेंगे कि दे विल सपोर्ट दैट चेंज विद हाई ऑन एनर्जी एंड दोज आर द प्रोमोटर्स जो उस चेंज के आगे बात करें. कुछ लोग आपको दिखेंगे जो चुप हैं, they are okay, they are passive supporters. वो बात भी कर रहे हैं चेंज की, ओके करना है करेंगे चेंज, टीम से भी चेंज कराएंगे, they are passive supporters. बट कुछ लोग प्रोमोटर्स के अदर साइड भी हो जाएंगे. They are the ones who are questioning change in every meeting. Why of the change they are questioning? Sometimes they are very resistant to change. एनर्जी बहुत है उनके पास, अगर उन्हें आराम से समझा दिया जाए तो ये लोग कॉम्बैटेंट से प्रोमोटर बन जाएंगे. आपको बस इनको कन्विंस ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी. उनको कन्विंस करना है कि ये चेंज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये प्रोमोटर्स बन जाएंगे. आई एम श्योर सर, अगर हम 10 लोग भी बैठ के अभी कोई चेंज डिस्कस करें, many of us would be promoters and many of us would be combatants and many of us would be passive supporters also. Although I don't believe angelic troublemakers हमारे ग्रुप में होंगे अगर हम इस वर्चुअल मीटिंग में चेंज डिस्कस करें. व्हाट से खनेंद्र सर? एंजेलिक ट्रबलमेकर्स को छोड़ के आई एम श्योर तीनों कैटेगरीज तो हमें यही मिल जाएगी. व्हाट से खनेंद्र सर? Yes, ma'am, it will be there. It will be there ना सर? सारे के सारे प्रोमोटर्स नहीं होंगे ना? Do you agree with me खनेंद्र सर? हाँ, agree. तो ये मतलब है जागीर सर, कुछ लोग पॉजिटिविटी ड्राइव से चेंज लाएंगे, कुछ आपके साथ होंगे अब नौकरी करनी है तो चेंज करना ही पड़ेगा, बट वो पैसिव सपोर्टर्स है. और कुछ होंगे कि
कन्विंस सबको करने की कोशिश करते हैं चेंज की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, वो कॉम्बैटेंट है, क्योंकि वो शायद उसको पता ही नहीं है कि चेंज क्यों चाहिए, उसको समझाना पड़ेगा। राइट सर। सर कॉम्बैटेंट जैसे सर हाई ऑन एनर्जी लेवल थे, अरे क्या करना है मास्क पहन के, कोरोना तो सबको हो रहा है, कभी भी हो जाएगा। सो दे वर द वंस, उनकी कमिटमेंट टू वेयर दैट मास्क वाज वेरी लो, but probably if explained very well, they could have become the promoters in the drive, and they could have promoted others also, you also wear your mask. नहीं, लेकिन काफी लोगों ने तो कई लहर निकाल दिया, नहीं पहने। सर क्योंकि पहना भी तो चीन पे लगा के रहे हैं, उनके लिए कितना कन्विंस कोई करेगा, डेड बॉडीज बाहर देख रहे हैं, न्यूज में आ रहा है। हाँ जी सर, जब तक उनके खुद के घर में कोरोना नहीं हुआ, वो कॉम्बैटेंट्स प्रमोटर्स नहीं बने। नहीं, उसके बाद भी बोल सकते थे वो कि अब तो हो ही गया, अब क्या पहनना है, अब तो हो ही गया। हाँ सर, सर और ये भी सर, हमारे पास 3 months का विंडो पीरियड भी तो था, अब हो गया, तो 12 हफ्ते तो अब हम आराम से हैं। तो सर इसमें है सर, सर हम्बल सबमिशन, सर हमारे घर में ओमिक्रॉन हुआ लास्ट न्यू ईयर पे, हम सब बाहर गए and we were all fed up sitting at home, so even we break the regulation, तो हम सब ओमिक्रॉन में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गए, and my in-laws were also there at that point of time, they were telling us don't go, but हम थक चुके थे, तो we all went, we all were prepared। ओमिक्रॉन is a lighter wave of corona, हम सब well prepared थे कि अब आगे छुट्टी भी है 1 हफ्ता, ओमिक्रॉन हो भी जाएगा तो घर में भी रह लेंगे, तो वी वर अगेंस्ट उस टाइम कि अब हम नहीं जाएंगे, दोज आर विद एवरीबडी ह्यूमंस। तो हम सर आए भी, और सर अनफॉर्चुनेटली all 4 in the family we all suffered from Omicron also, but हम prepared थे उसके लिए, और उसके बाद हमारे पास 1 हफ्ते की छुट्टी भी थी, फिर हम आगे चले। तो कई आप फिर कॉम्बिटेंट मोड में थी उस समय? सर यही मैं बोल रही हूँ सर, कॉम्बिटेंट मोड में थे, क्योंकि मेरी कमिटमेंट टू चेंज वाज लो because of my own personal reasons कि कोई बात नहीं है, ओमिक्रॉन है, I have understood the negative impact, but let's go, let's take the risk। भारतीयों का यही जज्बा मैडम हमको दुनिया में सबसे अलग करता है। अदरवाइज तो आप देखिए चाइना अभी तक बंद करके बैठा हुआ है, हम लोग आराम से। Exactly। तो सर ये बात honestly why I shared this example with you is कि not everybody, I don't agree with it that हर बारी, चाहे BSF में ऑर्डर्स भी हैं और पूरा डिसिप्लिन मैकेनिज्म भी है, कि हर बारी आपको हर कोई सिर्फ प्रमोटर ही दिखेगा, आपको कॉम्बैटेंट्स भी दिखेंगे, पैसिव सपोर्टर्स भी दिखेंगे। मैं ये मान सकती हूँ एंजलिक ट्रबल मेकर्स नहीं हूँ, बट ये दोनों कैटेगरीज और कॉम्प्लेसेंट जो बिल्कुल बीच में है, आप उसको इधर भी ले जाओ, इधर भी ले जाओ। अगर आपकी लीडरशिप राइट नहीं है, तो सर जो बीच में है ना कॉम्प्लेसेंट, जो आपका सेटिस्फैक्टरी वाला बंदा है, उसको अगर हमारी राइट लीडरशिप नहीं है, वो कॉम्बैटेंट बन जाएगा, और अगर राइट लीडरशिप है तो प्रोमोटर बन जाएगा। फ्रिंज एलिमेंट ज्यादा है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में। हाँ एब्सोल्युटली सर, आई अग्री। तो सर आई एम श्योर ऑल ऑफ अस आर इन एग्रीमेंट कि ये सारी तरह के लोग हमें अपने आसपास दिखते हैं इन आवर चेंज जर्नी। नाउ इट इज अप टू द लीडर, how do we change everybody to be a promoter? Are we all in agreement with this thought? Because this is the final and the last thought for this session today. Are we in with it? Jagir ji, Khanindra ji, Singh sir, Vishal sir? Yes ma'am. Yes. ओके विजय सर स्टार्टिंग से लेके बीच में काफी आपसे इंटरेक्शन हो रही थी। आर यू बिजी विद योर वर्क सर? विजय सर, आई थिंक ही इज राइट नाउ बिजी। कमल सर, आर वी इन एग्रीमेंट? कमल सर अनम्यूट कर ले। यस सर, आई फुली एग्रीमेंट विद यू। ओके सर, हमें दिखते हैं आसपास कॉम्बैटेंट और पैसिव सपोर्टर्स भी इन योर टीम एवरीवेयर अराउंड? बट मैम इन बीएसएफ देयर इज नो स्कोप फॉर कॉम्बैटेंट। हां, देयर इज नो स्कोप। तो सर हम उसको अपने डिफरेंट वे से प्रोमोटर्स बना ही देते हैं। नहीं, अदरवाइज दे आर कंपेल्ड टू बी प्रमोटर। They are compelled to be promoters. Yes. Yes. तो सर हम बट ये अग्री करते हैं कमल सर, a leader's behavior can very fast shift without requiring disciplinary actions for people to be promoters, अगर लीडर का strong connect है टीम के साथ तो। नहीं, otherwise they are taken into confidence and they made clear what is the advantage and disadvantages of adopting the system. Yes. Bringing this change. Yes. And they normally they agree. Right. By and large. Otherwise, there is another action is can go against them. Then inquiry is ordered why they are not being a part of this system. Right.
This is also right. So systems are very well in place, and with this, I'm sure. Ma'am, one question from my side. If someone is in angelic troublemakers category, I want to take him to the promoters category. Yes. Now, as a leader, what will be the best course of action for me to take it? It is, I think, difficult to take directly from angelic troublemakers to promoters. The route, should I follow the passive supporter route or a combatant route to reach there? Absolutely. No, sir, combatant तो difficult है, क्योंकि सर आपको अगर हम देखें angelic troublemaker से passive supporter बनना easy है, क्योंकि angelic troublemakers की भी energy low है. बट अगर हम उन्हें चेंज का, सर आई विल जस्ट राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स हियर, अगर हम एंजलिक ट्रबल मेकर्स को, द फर्स्ट स्ट्रेटजी शुड ऑलवेज बी एक्सप्लेनिंग एंड communicating. This is, sir, even what tried and tested research says. Explaining and communicating is the first strategy as a leader that you should be adopting. क्योंकि इनकी सर एनर्जी लो है, ये बाकियों को जल्दी नहीं नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे. सेकेंड है why of change in their favor. What do they get out of the change? What is their benefit? सर ये इन लोगों को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ट्रबल मेकर्स हैं. उनको क्या बेनिफिट है इस चेंज से. कई बारी सर थर्ड स्ट्रेटजी, आई डोंट नो हाउ मच इट कैन बी डन इन BSF, बट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इट इज जनरली बीइंग फॉलोड व्हेन वी स्पीक टू द चेंज फैसिलिटेटर्स. वन वे कुड बी इंसेंटिवाइज देम, ऑफर देम इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड इन द प्रोसेस. सर ये जनरली ये वाला कंसर्न तब इशू होता है जब हम स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं और हम डील कर रहे होते हैं ट्रेड यूनियन से, विच आर जनरली एंजलिक ट्रबल मेकर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. न्यू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड यूनियंस विल बिकम अ ट्रबल मेकर, क्योंकि उनको लगता है कि लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी. So either incentivize, reward to some extent, offer reward to the employees to be a part of it. Why of change, explain their benefit, explain, communicate regularly with them, show them the big picture. But sir, with my experience, since we have been giving consultancy to various organizations in various sectors, most of the times when they don't agree with this, then it is also coercion which is used. By coercion, we mean the final threat. सर बिकॉज अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इट इज लूजिंग देयर जॉब्स आल्सो. बट सर जब हम BSF की बात करते हैं, तो जितनी हमारी पुरानी इंटरेक्शंस हुई हैं BSF लीडर्स में, बिकॉज वी हैव आल्सो टेकन सेशंस विद BSF DIGs. सो व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस विद द BSF DIGs आल्सो, इट इज डिसिप्लिनरी एक्शंस, it is orders, serious work orders and disciplinary actions which will keep them in control. So do you agree with these pointers? That will help them ultimately to come to passive supporters, and from passive supporters, sir, again, if we keep monitoring them, keep coaching and guiding them, there are high chances that they will move to promoters. अब सर एक चीज और मुझे यहाँ बतानी है. सर जब हम सोचते हैं कि ट्रबल मेकर्स बन गए सपोर्टर्स, तो सर सपोर्टर से प्रोमोटर्स में भी उनका यहाँ पहुंचना शायद मुश्किल है. Probably if we can get them here, or if we can get them close to complacent, I think as a success, your leadership is quite successful. क्योंकि यहां से immediate ऊपर तक की जर्नी सर would be very difficult. It is step by step that we get them here. Do you agree, जागीर सर? बहुत गहराई से सुन रहे हैं. जागीर सर, do you agree with this thought? I fully agree. You have covered all the points. Very important. Thank you so much. So with this, sir, I hope I have answered your question, sir. You raised the question. Is it answered, sir? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. I'm sure you know ये मेरा आपकी इस 12 days journey में मेरा last session था. As usual, all sessions I have enjoyed a lot, and आप सबका बहुत ही बेहतरीन contribution रहा है to help me set the context of the discussion, and with your examples, with your experience, I'm sure as a group we have all collectively have had at least 1 or 2 takeaways from the session. So again, I would say a pleasure being with you, and we look forward कि हम बहुत जल्दी आप सबको physical training program में अपने campus में मिल सके. So thank you very much, and loved being with all of you. Thank you all. Over to you, Vani. Anybody from the AITD team? Thank you, Dr. Pooja. Thank you very much Thank for your you. session. I think before we have our next speaker, but before we proceed, let's take a quick 5 minutes break. Is it okay, Harminder ma'am?
Yes, it is perfectly all right with me. They Okay, should be given a let's break take of 5 a minutes. break and we resume back at 12:15. Sure. Thank you. Sure. Welcome back. Welcome back, everybody, from the break. Divya, am I audible? Yes, Sandy, you're audible. Okay, thank you. Thank you. We will now begin our next session with our next coach for the day, Dr. Harminder Gujral, who I see joining in. And she will be taking you through a session on building organizational culture that you want. Then we will move on to inclusion and resilience, which will be part of the same session. I see Dr. Harminder has already joined in and shared her screen. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. So before you start your session, Dr. Harminder, I'll briefly introduce you to the participants. Sure. Dr. Harminder Gujral is the head of Amity Center for Guidance and Counseling and the professor at Amity Business School. She has around 25 years of experience in teaching, research, consultancy, and counseling. She is a registered rehabilitation psychologist and certified practitioner in neurolinguistic and programming by Association of Neurolinguistic Programming India and European Community for Neurolinguistic Programming. She has many publications and journals of national and international repute and conducts training and workshops for corporates and institutions. We welcome you, ma'am. Over to you to take the session through. Thank you very much. Good morning, everybody. Rather good afternoon. I hope everybody has come back. I can see Anuragji. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, everybody. So, till now you have been there with Dr. Pooja talking on change and all, which is very important aspect of life. And as every change is, it is inevitable process. We like it or we don't like, we have to accept it and we have to adjust to that. That is what is called the adaptability. So this is very important aspect of the organizational culture, how we introduce adaptability. So you have already discussed about it. So I am starting with building organizational culture that you want. This is my first session, which I'll be finishing with you till 1:30. Then 3 o'clock onwards, I have organizational culture, resilience, how to develop resilience, how to bring this culture of resilience in the organization. And no better example than BSF and all the services. Then third one is the organizational culture, inclusiveness, how to create an inclusive culture. That is what we'll be discussing in these 3 topics. So let me start with the first one, which is called the organizational culture. Before we go into the organizational culture, I would like to discuss with you what comes to your mind when you listen the word culture. What are the things, what are the synonyms, what is the meaning, what are the connotations which come to your mind like when we say culture? Value. Values, okay, sir. Experiences, practices, ethos. Okay, Singh sir. Values, practices, ethos. The way it influences. Anurag sir, influences, yes. Okay, so this is what the culture is comprised of. So when we say organizational culture, so what makes the, you can say the best culture, or we call it optimum culture, we call it ideal culture in the organization. So when we say organizational culture, of course, the word taken from culture will all be the part of the organizational culture. Only the word organization will be added, where everything related to organizations. Now let us focus on what comes to your mind when we say organizational culture.
as far as leaders are concerned, as far as people in the organization, I mean employees are concerned. When we say organizational culture. And the people act in a certain pattern. Okay. Keeping in mind all the values, norms followed in the organization, and it has a feeling of that the system has been systematized and no personal intervention is acceptable if it affects the credibility, values, ethos, and anything of culture. Very, very well explained, Singh sir. Yes, because once the culture, the leader or our predecessors have created for that particular organization, and somebody entering into it for making it the better, then it is acceptable. But any intervention in form of, you can say, negative or interference which sabotages its ethos or its norms is not acceptable. And as a human being, as an employee, when we join any organization, it is us who have to synchronize with the culture, whatever our qualities are. And when we see this is the culture of the organization, so accordingly we get accommodated, which is called our you can say the quality of flexibility, which leads to adaptability. So we have to adjust culture, and people will not adjust as per us. So this is very much clear to everyone. So that is how whenever we join an organization, we start adjusting to that culture, seeing the vision and mission of the organization, what it is. And every organization's vision and mission, of course, talks about the culture of the organization. What is the culture which is going here? All educational institutions, they talk on research, teaching, consultancy, training. All services, they talk on security of the country and the discipline, the kind of commitment which is there for the country, the pride for the country. All these are the imbibed from the leaders, and they know when they are going to join BSF or Army or Air Force. And that is the reason there are a long list of people who want to join BSF and Army and Air Forces, but everybody doesn't get, but they have something in their personality that they are there, they want to do something for country, because otherwise beyond this also jobs are there, beyond this also they can go, but something is there that they want to do. So let us start with discussing on organizational culture. Every culture has its own, as we all have a personality, okay? Same way, every organization has its personality, which we can say organizational culture. So our personality is made up of what? Let us start discussion from here. Our own personality is made up of what? When we say personality, personality of a person is made up of his wearing, his attitude, values, and how he behaves with others. This is the personality of a person. This is the personality. Okay, Jakir sir has very well explained what is the personality of the person, the way we behave, and way we look not only external, internal also. When we are talking to people, when we have created a kind of a credibility for ourselves based on our personality characteristics, that reflects in our personality. If somebody is really following that discipline or time management, somebody has a lot of integrity, everybody has integrity, some people have maybe little more disciplined about integrity, honesty, and as we are seeing, so that reflects from the personality, because whenever we are talking to people, our verbal and non-verbal synchronizes. So what we are seeing, is it reflecting from the personality? And it reflects, because here I think not much manipulation is possible. So as Jagir sir has explained, that our way of behaving, our attitude towards life, what kind of language are we using, what kind of values we are following, everything reflects on the personality. Same when we are joining any organization or we are remaining any organization, joining that we come to know this is the culture which we have to follow. And there is no ifs and buts for that, specifically for the services. There is not a lot of flexibility. We don't
assume that it is there because of the discipline, because of the little, you can say, autonomic culture of the services. But people have that much of flexibility in thought that they can put forward their ideas when there is a meeting or any kind of, any kind of, you can say, not grievance exactly, uneasiness or something, because there are opportunities given to them when you are meeting them, when all of you as the officers and their subordinates and jawans, they are meeting once or twice because I know about army, that is Bada Khana. Same here in BSF also, there is a culture. Every services has its culture. So they get that opportunity to talk to their seniors, though of course very disciplined way, as we have already witnessed and seen, because this BSF training we have been taking I have taken online session, this is 4th and 5th, and then in Tekanpur, Gwalior, I had got the opportunity to meet commandants in like physical mode, and that was a wonderful experience for me. And we are looking forward that very soon we'll be having these meetings in these training programs in the campus, on campus, because that is a totally different experience. So this is how we came to know about the organizational culture, as we call it, our unique personality. So every organization has its unique personality based on its policies, norms, rules and regulation, and vision and mission. So this is how each organization is different. So this has already been discussed by many of you, Jagir sir, Singh sir, and yes, now Rao sir has also joined, that organizational culture refers to the set of moral values, traditions, collective principles, norms that prevail in the organization, habits and behavior of the people. Habits in terms of organizational culture habits, not our personal habits, and how people behave in the particular organization. So we have here something to ponder upon, why organizational culture is so important. Because the topic for today is create the organizational culture you want. So at policy level, whosoever has this kind of recognition, or where you can put your views, so what kind of organizational culture would you like to make for BSF, or you are very much okay with whatever is going on, and why it is so important? I know much change cannot be brought because of the hierarchy system by individuals, but of course there are opportunities when you get on, when you can discuss on the higher level meetings when it is discussed. So what is the importance of organizational culture for BSF? Organizational culture. Yes. Ma'am, organization culture is directly related to the driving force of the organization, how it works. So unless you are having organization culture, include everything, that is your work culture, that is your ethos that maintain the values that organization maintains, and how to achieve goal, that is the various procedures, all these things involved in the organization culture. So unless all these things are clear, that is how to work, means work culture, and what is the ethics that organization maintain, means towards employee, towards nation, towards overall environment. So all this comes together, and all this actually ultimately contribute to accomplish the task. So that is why organization culture is very important. Unless there is an organizational culture, you cannot accomplish the task. Okay, very well explained, Mr. Chaudhary. So this is the culture which is there, and this is the importance of the culture. Now, these are the reasons, before we come to the activity, this is the reason why organizational culture is important and how it impacts to whom. So as we all know, first of all, you talked about the motivation.
the kind of culture we have in our particular organization that affects the morale of the employees, that affects the employee engagement, which is a very in word in the organizations, very engaged. So in BSF, this is a culture which we find that most of the employees are engaged or over engaged, rather than we say we have to make them engaged, because this is come out the conclusion from the last 4 training programs which I have conducted online, that they are already engaged, and there is no, it's not that we have to teach them how to get engaged, because right from the induction programs, which happen for 3 months or so, they are taught this kind of, that they are like, this is the routine. In the morning, you have to get up, go for exercise, have breakfast, come to office, or whatever the duty, and in the evening also, whatever the responsibilities are there. So as far as employee engagement is concerned, we find that BSF is completely doing justice, rather more than what is required. This is the culture which has been there in the BSF. Employee motivation, we have already talked, Chaudhary sir have already talked about employee motivation, because this is the culture, this is the, as I started in the beginning, that pride, commitment, overcommitment, kind of feeling of something doing for our country, this is all part of the culture. So there is no lack of motivation there. When there is a motivation, engagement, morale, so performance of course will be there, because performance is the outcome of morale, engagement and motivation. And then productivity and performance, in between one thing comes which is called psychological contract. So can you explain me what do you understand by psychological contract? Ma'am, if you allow me. Yes, sir. Yes. On the previous slide, we were talking about the organizational culture. Should I go back there? Yeah, no, I will put my point here. Okay. I think the organization culture, it also includes how an organization behaves with his employees. What are the progression schemes of employees in that organization? And here, when we talk about workplace culture impacts, the workplace culture impact also attracts the talent, the intelligent people to that organization. So these are very important points, which I think we are missing in this slide. Okay, sir. We are creating an environment for employees that if every employee is able to see progress in his career, definitely he will be attracted to that towards that organization. So this is an important aspect in my view. Okay, sir. I have noted the points. It is always there, because as per the vision and mission and the word of mouth and the status of that organization, or that how employees are keen to go to that particular organization. So I will be adding into it, because training programs are, and specifically conducting a session for people who have experience of around maybe 15-20 years or more than that. It is always beneficial for us also as trainers, that we get many points. You know, all these things which you are seeing here, it is the outcome of the discussion which we had with the earlier earlier batches. So definitely, Jagir sir, I will be adding this also, which we discuss in the culture when we are talking about management culture, or the culture which is in the corporates. So of course, here I was more focusing on discipline, management, motivation. So definitely I would add those 2 points also here. So yes, sir. Thank you, sir. So the psychological contract, I was asking you, have you heard this word psychological contract, and what do you understand by this? One contract is a physical contract, which we call it offer letter, appointment letter. Things are written on it. This is the post, this is the remuneration, this is the leave process, this is your benefits which you're getting from the organization, everything which is given to the employees before joining, before recruitment. This is called physical contract written on a paper. What is psychological contract? Is this also the same thing or the different?
maybe it's not in a physical form, but the expectation, desires of individual and organization, they are gelling in a way that it has a sense of feeling that he is safe in his culture or organization by adopting these practices. So he has not to recheck himself again and again. So he has a psychological contract, and that is strengthened with adoption of the actions, ethos, values of that organization, which he imbibes or adopts. Okay. Yes, sir. Very well explained, Singh sir. This is from the employee's side. That Yes. It is actually psychological contract is something which is unwritten, unsaid contract between the employer and the employees, whether it's a corporate, whether it's a BSF or the public sector units. It's kind of when you are joining, it is unsaid or unwritten contract between employer and employees that employees have to show their commitment, their honesty to the organization. At the same time, employer is also liable for taking care of their well-being, which is the psychological contract. We don't talk about it, but it is understood because wherever you are joining. So strengthens employee. If we have a better workplace culture, we have more engaged employees, we get better performance, and performance leads to productivity. In between, this plays a great role. What kind of psychological contract employees have developed, or from the employer side also, they are okay, they are happy, they are satisfied with this, that if we are working for the organization, same time organization is also taking care of it. And most of the organizations are doing so. We have welfare plans, we have welfare funds, we have other loan facilities also available, which employees use, and it is a full faith and full commitment. They are working and they reap the benefit of their other benefits which are there. So this is how workplace culture affects the working of the organization. So now let us do a small activity. Ma'am, I have a question, ma'am. Yes, sir. Ma'am, where does this sense of pride fit over here? Yes, sir. Sense of pride. Okay, so you are saying this is missing here. Yes, I do think that it is a very important aspect. Actually, sir, it is my psychological contract with you that these things yes, I know, but yes, it is not written there, but this is my psychological contract with the services, that this is the first thing because of which people join the services, sense of pride. Thank you very much, sir, for adding this. Yes. Yes, sir, there is an activity which is for you. Can you discuss 3 strengths of your culture? You can discuss as many as you want, but at least 3 let us discuss here. Most important one. First, rank 1. What do you think comes at rank 1 as far as BSF is concerned? High commitment to the nation. Okay, commitment is the first thing. Everybody Dedication. knows. Commitment and dedication. Commitment and dedication. Okay, this is got the rank 1. Clarity of role and task. Okay, very good, sir. This is Pati, sir, I think. Yes. Clarity of role and task. And then ranking wise, if we take. As I said, it's not credibility, ma'am. Sorry, sir. Credibility. Credibility. Okay. Nations first. Yes, sir. What did you say? Nation first. Okay. Then? Ma'am, high degree of discipline. Although all armed forces are disciplined, but if you compare BSF to other forces, you will find that degree of discipline in BSF is very high. Okay. Okay, sir. Okay, thank you, Ajay, sir, for adding this discipline, because these are the few things which are always there when we talk of, but I was not
aware that yes, as you are saying, because BSF is more than as far as discipline is concerned in comparison to the other forces. No force is less than other. But of course, when we are working here, I found a lot of discipline and a lot of Actually, ma'am, actually till date, we in the history of BSF, we don't have any even a single incident of protest against establishment or government. We are unique in this thing. Okay. Sir, for my knowledge, may I know that has it been there any kind of protest in other services apart from BSF, like let's take Army? Yes. There Army, Navy, Air Force, CRPF, Delhi Police all have a history of protest. Except BSF, all have history of protest. Okay, that's a so means Tiwari ji, you are saying that BSF is yet to be revolted. In future also we will not revolt. Not yet to be revolted. You have twisted my statement. Okay, so we have 5-6 points I have got here, and I think everybody goes with these points. Okay, so now when we are talking about strengths of the BSF, so of course anybody who has the strength has a weakness also, because it's first question which is asked during the recruitment or interviews, like what is your strength? Everybody is very aware of their strength, this. When we ask weakness, the person start thinking. So it's not possible that we don't have any weakness. So what do you think? What is your perception that you can give one or two, if not many? What are the weaknesses which you think where the things can be improved? Expectation high and the resources low. Okay. And this is because we never oppose our commitment and dedication to nation. Otherwise, we have not desired resources at disposal as per our role and task assigned. Okay, sir. So this is yes. Stagnation is second weaknesses. Stagnation point has come like everywhere whenever we discuss, as in the last batches also. I think this is one of the serious weakness that we are facing as on date. Ma'am, resources generally doesn't mean only the physical resources. Resources mean the HR part has been ignored over a period of time. So you are taking extra mile, going extra mile, or taking more pain to maintain that discipline and morale, which should have been naturally in the organizational setup. Okay. Ma'am, basically stagnation is one of the weakest link as on that, I feel. If everybody, not only me as an officer, even other ranks also, if they compare themselves with other organizations, they find themselves far behind that. And it is definitely a demotivating factor. And that is, I think, one of the weakest point as on that. Okay, so stagnation is another point. Can we have one more at least? Adopting the policy of zero error syndrome. Zero error syndrome, yes. This was also discussed. Very good, sir. So zero error syndrome. So, sir, how far do you think that this is possible? Without fuzzing the data, you can't. Okay, because after all, we all are human beings, and our human is there that we all make mistakes, if not intentionally, unintentionally, or which is beyond our resources sometimes, which is beyond our caliber sometimes. So it is there. So it is. Ma'am, it is the expectation of our organization. Means organization, I mean to say higher ups, and okay. Basically it is our endeavor. How much gap we can fill up, how we can minimize the gap between the expectations and our delivery. Expectations and deliver. How we delivering. Okay. Yeah, delivery and expectation. How much we can deliver, and what is the level of expectation, and this is the gap that is to be reduced. Being zero error as our delivery system. That is the okay, sir.
So we have got some very good suggestions there, which can improve the culture of the organization as far as BSF is concerned. Ma'am, there is another point. Yes, sir. Stress and strain due to lack of proper rest and relief to the troops. This is another our weakness. Okay, so you find this is also there, the not proper rest is given to them. And one more thing you said, sir? Stress and strain due to this factor. Suppression, okay. This stress and strain. Okay. Okay. Can you explain a little more with examples, sir? See, our boys, they are deployed for 12 hours. After in shifting of duties for 6 hours, and they hardly get 4 hours in one shift to take rest. Since after doing the duty, they have to fall back, and after taking their meal, they go for rest, and before next duty, they have to get ready. Okay. It comes back to the duty point, and they hardly get the proper rest and leave. That is another our weak point. Yes, yes, I would like to add here in the last batch. I don't remember the name of the commandant, sir, who said that once it was that one of the commandant, he went on for seeing that there was a complaint that this particular guard sleeps on duty. He goes off to nap. So when he went there, he checked and he found he did not punish, he did not ask him anything. What did he do? Kind of a welfare activity that in the midnight, twice they started serving tea to them. So that, and we all know that caffeine and tea and all those things, we get little, that is how we have it, ki neend na hai. So that was very good thing. And that became a part of the BSF culture now, that maybe it may have been in the beginning only. So when he said that this is what we thought, it is very possible that in this kind of environment, nobody is there, you are alone there guarding the fences and all. So very natural thing is that you may take naps. So this is how, and we know that 2 or 3 people are there. It's not the one person is there at on the fences for guarding. So this was, he said that was the first thing, like whenever it may have been introduced in the BSF, nice serving tea in the night duration to the people who are there. So this is like not only that, why are you sleeping? This is not done, so you are fired or not, something like this. The cause was found, what can be the outcome? What can we do? How can we provide resources? How can we make them wake? So this was introduced. So do you have any similar example? Anybody of you, sir? Which is, let's take it's like guards take a nap or they go off to sleep, not intentionally maybe. So this was introduced. Do you have any kind of reform, any kind of welfare activity, any kind of well-being for the, let's take Jawans or people who are guarding the posts? Do you have anything to give so that I can have one more example of this, which I really appreciate? Anybody of you, sir, you can talk about, share your experience on this. Because these are motivating things for us also as a trainer, and of course, you all also who are there as colleagues. Now, sir, do you have anything, example like this? Anything which was introduced during your time or before your time? Or is Kamal, sir? मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा यहाँ पे. हाँ जी सर. मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है. I will share it. जी सर. एक्चुअली मैं गुजरात में एक बटालियन में डिप्लॉयड था जी. तो वहाँ पे क्या था, कुछ एक हमारे जो BOPs हैं वो बेसिकली टेम्पररी सेल्फ हेल्प मेड टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन में वो रहते थे. तो छोटे छोटे जो रन एरिया में, रन ऑफ कच्छ एरिया में छोटे छोटे पत्थर लेके उन्होंने वो छोटे छोटे अपने बंकर बना रखे थे रहने के लिए. तो सिमिलर वाज कोई परमानेंट वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं था. तो एक बार मैं रात के टाइम में एक BOP में गया
और मेरे को वहाँ पे लड़कों ने ये रिपोर्ट किया, वहाँ पे जो रहते थे, तो उन्होंने बोला कि सर हमारे यहाँ पे हमारे जहाँ पे लड़के सोते हैं बैरक में, क्योंकि वो कच्चा था, बोला उसमें एक कोबरा निकला, कोबरा स्नेक। ओके। तो और मैंने कहा वो किसने देखा, तो सभी लड़कों ने बोला सर हमने एक, इसने पहले नोटिस किया, फिर हमने उसको आके जब टॉर्च मार के देखा तो वो वहीं पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना रखा था, वो भी कच्चा बना रखा था, वो राशन वगैरह रखने के लिए या लड़कों का सामान रखने के लिए। तो कहता है कि इसमें जो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था उसके अंदर घुस गया। ओके। और अभी वो कैसे, हम सोएं कैसे? ओके। तो रियली इट वाज वेरी फ्राइटनिंग। तो मैंने उनको ये समझाया कि अभी आप रात के टाइम इसे मत सो, अभी इसको सुबह हम तोड़वाएंगे, फिर उसके बाद इसके, तो दैट वाज ए स्मॉल उसका मतलब इमीडिएट जो हमने वो किया उसके ऊपर। फिर मैंने उसमें से ये निकाला कि यार इनको इतने साल से 86 से वो बीओपी थी वहां पे, और एक नहीं थी कई थी। तो मैं वहां पे था 2013 से लेकर 17-18 तक। तो मैंने फिर ये ठाना कि यार यहाँ पे हम किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो मैं वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर भुज था, वहां से उनके साथ मीटिंग की, उससे मिला, उनका एक डीडी होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर, मैं फ्रीक्वेंटली उससे मिला, मिस्टर ओझा उनका नाम था। और हमने उनसे, मैंने जब ये इंसिडेंट उनको सुनाई कि हमारे लड़के ऐसी कंडीशन में रहते हैं, मैंने कहा आप हमारे पास, आपके पास में बॉर्डर डेवलपमेंट फंड में बहुत पैसा आता है, आप इसमें से कुछ पैसा, बीएडीपी का जो पैसा है, आप हमारे जो जहाँ बीओपी हमारी है वहां पे आप टेम्पररी स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनते हैं उसको, वो उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता, 15-20 लाख में वो एक बैरक बन जाती है, जिसमें 18 या 15-18 4 रुपये आ जाती है। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया और हमने विद इन 2 ईयर्स हमने उनसे फंड भी अलॉट कराया, और फंड अलॉट कराने के बाद कम से कम भी 4-5 बीओपी में मैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमने लड़कों को बना के दिया हमने, क्योंकि आवाज नहीं आ रही जागीर सर, आवाज नहीं आ रही। यस मैम। म्यूट तो नहीं हो गया? नहीं म्यूट तो नहीं है। अच्छा, इज इट क्लियर नाउ? हाँ नाउ सर, आपने मुझे जब हाँ जी बनवा के दिया। हाँ, तो हमने जो डीडीओ था वहाँ का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर, उससे कम्युनिटी हॉल, पंचायत रूम, इसके ऐसे नाम पे हमने 5 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का सैंक्शन लेके, बेसिकली बनाना तो उन्हीं की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ठेका दिया, ठेकेदार को दिया। विद इन 2.5 ईयर्स हम 5 स्ट्रक्चर, अभी मेरा कोई बैचमेंट वहाँ पे डिप्लॉयड है जो दांतीवाड़ा गुजरात में, यू कैन सी दैट, 5 स्ट्रक्चर हमने बना के दिया, परमानेंट स्ट्रक्चर। उससे जो जवानों का प्यार या प्रेम मेरी तरफ बढ़ा, वो मेरे को ऐसे हाथ जोड़ते थे कि सर आपने हमारे को तो ये कर दिया, वैसा कर दिया। बेशक इट वाज माय ड्यूटी बेसिकली, इट शुड हैव बीन डन मच अर्लियर। और तो ये एक छोटा सा एग्जांपल ये देखने के बाद में उनकी फील जब मैंने किया कि अगर मेरे को सोना पड़े यहाँ पे कोबरे के प्रसाद में, एबल टू अकोमोडेट, तो उससे उसका समाधान भी निकला, इसका ऑल्टरनेटिव निकला। So there you played a catalyst as a leader, at least taking, sir, there are opportunities available, but it is somebody takes initiative and some people take it कि अरे हाँ इसलिए उसको हटवा दो, कोबरा को आगे से ध्यान कर लो, थोड़ा ठीक ठाक कर दो। But this was a good thing that being talking to the people of the authority and utilizing their money, because their money has to be utilized for the welfare of the people only in their particular region. So this was a good example, sir. Now, instead of quoting this one example, I'll be quoting 2 examples from which you think you all did. So anybody else also must be having this kind rather than, ma'am, I would request कि आप इस example को quote करो कि 50 years के बाद भी ये स्थिति क्यों है हमारी। सर हम जानते हैं और हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। अभी आगे जब मैं इंक्लूजन की बात करूंगी तो जेंडर डाइवर्सिटी की बात आएगी, फिर हम वहीं पे अटक जाएंगे, मेल एंड फीमेल। जो फर्स्ट टॉपिक की वीकनेस का रिसोर्सेज लिमिटेड है और एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई है, मैंने बोला था, और ये सब एचआर रिसोर्सेज और फिजिकल, लेकिन हमें सिंपैथेटिक वर्ड्स नहीं चाहिए। मैं केस रेफरेंस के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, ये तो आपको एज ए इंडियन सिटीजन आपको खुद अपना थॉट प्रोसेस ऑन करना चाहिए कि व्हाई इज इट सो deliberate, by design, by default? Is it the only organization suffering? No, all the duties are same. There is no peace station. There is no peace posting. The only problem, even at this forum also, we are 30. If you are asking good practice, I don't think none have adopted in their 27 years.
but we used to be less vocal. हमें ये लगता है कि हम अगर बताएंगे तो इन्हें लगेगा कि देखो ये कोई बताने की चीज है. We keep doing our work. और ये क्या हुआ कि over a period of time people realize कि इनके पास तो सब कुछ है. माँ भी दूध जब बच्चा रोता नहीं है उसको देती नहीं है एक्चुअली. ये जो क्राइसिस है ये आज से नहीं है और ये किसी एक आदमी की वजह से नहीं कह सकती है. सिस्टम का टोटल इग्नोरेंस है. Yes sir, I agree with you. Yes sir. यहाँ पे मैं अभी जब बात आई है वीकनेस की, तो क्योंकि ज्यादा बोलने से ऐसा लगता है कि वी आर क्रिबिंग, सो मच क्रिबिंग. नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं. मैं कई बार इलेक्शन ड्यूटी पे भी रहा, तो जिस टाइप की हमारे जवानों को अकोमोडेशन मिलती है वहां पे, इट इज पैथेटिक. आई रियली हेट दैट. अगर हम जो पुलिस का एक कांस्टेबल है, हमारे कांस्टेबल को बोलता है कि यू कैन स्टे हियर, वी कैन नॉट, आई एम नॉट ए सीपीएफ पर्सन. तो इस टाइप की फीलिंग है. वो होटल में फ्री वाले होटल में चले जाते हैं. मैम इसको हमारी मेरा जवान उनकी ड्यूटी करने जाता है और अभी हमारी आप इसको वीकनेस समझिए या हमारी इसको स्ट्रेंथ समझिए. इट कैन बी बोथ वे. हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे जो जवान है, दे आर सो कमिटेड टुवर्ड्स द नेशन. यस सो कमिटेड कि हम किसी भी सर्कमस्टांसेस में ये काम करके जाएंगे. लेकिन वीकनेस ये है कि हमारे जवानों को ऐसी गंदी हालत में भी रहना पड़ता है और वो बेचारे रहते हैं. सर आपकी स्ट्रेंथ हुई और सिस्टम की वीकनेस हुई. मैम जो मेजॉरिटी हमारे यहाँ है वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास है, अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर है. और रात में जब वो अकेला खड़ा होता है ना, कोई उसका कमांडेंट और कोई डीजी, कोई होम मिनिस्टर नहीं होता उसके आगे या पीछे. 300 लेफ्ट राइट उसी की तरह के लोग होते हैं जो सोशल पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं. बिल्कुल. उसके पीछे एक पार्टी है जो कंसाइनमेंट रिसीव करने के लिए रेडी रहती है और उसकी मुंहमांगी बोली उसको दे सकता है. उसके सामने की तरफ एक ऐसी कंट्री है जो नेबरिंग तो है, हॉस्टाइल है, वो कुछ भी कर सकती है इधर, लेकिन वो बंदा है अपनी बोली लगाने नहीं देता है. ये क्या कमिटमेंट तो क्या है? उसके पास सोने के लिए जगह नहीं है लेकिन वो अपनी बोली नहीं लगाने देता है. अदरवाइज तो फिर कितनी गरीबी इस देश में दूर हो जाती. लेकिन बीएसएफ का सोल्जर, और लोग बोलते हैं कि वो करप्ट आप इसलिए नहीं हो पाते, अपॉर्चुनिटी नहीं है. हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो किसी के पास नहीं. सही बात. और वहां पे कोई नहीं रहता. वो सीसीटीवी कैमरे के सुपरविजन में है और सूरज भी देखने से मना कर देता है उसको रात में, और उसे क्या कोई करेगा. अपना उनका डेडिकेशन और कमिटमेंट है जो उसको ऑनेस्ट रखा. अब इससे ज्यादा तो कमिटमेंट किसी का क्या होगा. In spite of all the odds of personal discomfort, career progression, stagnation, all he is facing personal space. In spite of that, he has so high regard for his duties and nation. Nobody can miss that. Nobody. सर ये जो चीज आप बता रहे हैं, दिस इज रियली हमारे जवान जब इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं या किसी भी इस टाइप की ड्यूटी में जाते हैं, कहीं पे भी इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, तो उनको 21st सेंचुरी में भी उनको सोने के लिए मैडम चारपाई नहीं मिलती. उनको नीचे जमीन पे सोना पड़ता है. नीचे को लेके ना एक दरी बिछा के नीचे सोना पड़ता है. अभी इसमें अभी अगेन आई विल से ये कल्चर, ये हमारी वीकनेस है या स्ट्रेंथ है? नो, यू आर टू मेक इट अप फ्रॉम दिस. नहीं सर, आपकी वीकनेस नहीं है. आपके ना जो जवानों में इतना कमिटमेंट और इतना रेजिलियंस उनमें आ गया है, बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ द leadership, whatever you want to make your jawans, whatever we want to make our students, we have to be the role model, we have to be that. तो सर हमारी पर्सनैलिटी से भी तो वो चीज दिखती होगी, तभी वो चीज फॉलो होती है. सो एज सिंह सर हैज आल्सो सेड, ऑलरेडी सेड, कि ये चीजें जो हैं वो कुछ भी कर सकता है पर नहीं करता है. तो सर कहीं ना कहीं जैसे एक जवान को पता है कि आगे से गोली आ सकती है, फिर भी वो उतने ही कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है. तो बीएसएफ का तो वी नो सर, आर्मी से और आगे 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाकर के आप लोगों की फेंसिंग होती है. मैम आर्मी का तो 2 साल फील्ड टेन्योर है, फिर 3 साल पीस है. इधर देयर इज नो पीस. हाँ, आपका पीस स्टेशन नहीं होता है. यस मैम दूसरा और भी फैक्ट है मैम, इंडिया वी आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अगर देखा जाए सबसे पहले गोली हमें ही खाना है, उसके बाद ही दुनिया खाएगा. आर्मी है, कोई भी है, दुनिया कुछ भी कोई बोले, पहले तो गोली हमको ही आएगा, हम ही पहले गोली रिसीव करना है. तो आफ्टर देन ओनली पीपल विल कम फॉरवर्ड और
आएगा नहीं आएगा वो भी भगवान भरोसे, आई डू नॉट नो, बट वी हैव टू इनिशियल जो आपको शॉक है, इट इज बाउंड टू एब्जॉर्ब बाय बीएसएफ, एंड दैट शॉक विल नॉट बी रिलीव्ड इवन मैम। ऐसा नहीं है कि आर्मी आ जाए तो हमको बॉर्डर से विथड्रॉ करने का इजाजत देगा, हमको वहां ही रहना है। सो दिस इज द बेसिक थिंग। Yes, sir. So a lot of learning for me also, and if we keep on discussing, I think session यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो थोड़ी एक्टिविटीज आपके लिए हैं, आई थिंक यू विल लाइक इट। सर, एक हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, जैसे हमने अभी बात की। तो ये जो छोटा सा एक क्वेश्चनर है कि जो 4 पॉइंट रेटिंग स्केल पे आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स को रेट करना है एज फार एज बीएसएफ इज कंसर्न, एंड इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, यू ऑल विल बी रेटिंग। देन नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 दे आर टॉकिंग अबाउट केयरिंग, स्टेटमेंट नंबर 3 and 4 पर्पस। तो ज्यादा डिटेल अभी नहीं बताते हैं, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 4, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉट एट ऑल, नॉट वेरी वेल, समथिंग वेल से लेके वेरी वेल और एक्सट्रीमली वेल। सो पहला वाला नॉट एट ऑल एंड लास्ट वाला एक्सट्रीमली वेल, और बीच के कुछ शेड्स हैं जो कि 3 जो है वो 4 के करीब है और 1 जो है वो 0 से थोड़ा ऊपर है। सर दीज आर द फ्यू ट्रेट्स, 16 ट्रेट्स हैं सर। तो इन 16 ट्रेट्स को आपने रेट करना है बीएसएफ के कल्चर के हिसाब से। सो योर सर पेज नंबर in your manual, it is, you can do in your manual only, page number 2 to 9, 229. हाँ जी। I hope you are through with this. Should we move to the next slide or still doing? Yes ma'am, we can move. Okay, so let's move to the next. Here what you have to do, whatever the score you have given to statement number 1 and 2, you will be totaling it. So it becomes a one characteristic of the organization. One score of 1 and 2 total is caring. Score of 3 plus 4 is the purpose, like this. मैम 16 नंबर पॉइंट हमारा छूट गया, अगर एक बार दिखा दे तो। 16 वाला दिखाई नहीं पड़ा सर? हम उठ गए थे चेयर से 2 मिनट। सर मैं वापस आती हूँ। Dr. Gujral, you'll have to click on your screen once and then click on back. Yeah. 16 नहीं आ रहा मैम स्क्रीन पर, ये 15 तक स्क्रीन पर आ रहा है एक्चुअली। सर 16 है स्मूथली रनिंग मशीन। सॉरी प्लीज से। It is in your manual also, smoothly running machine. Okay. Okay, so 1 and 2, total of 1 and 2 is the characteristic of the organization, caring. So this is how caring, purpose, learning, enjoyment. Let us, which we did in the last activity also, ranking order, where we found that commitment and dedication, we found it is on the first place as well as strength of that is concerned. Same way, we are going to rank order here also as far as BSF is concerned, because when we talk about organizations which are public sector or private sector and your hierarchy, there is a difference in the characteristics of the organization also. So what do you think as per you, ranking order 1, where you rank that this is the most important? Everything is important, but ranking changes as far as the authority is concerned, as far as caring is concerned, purpose, safety is concerned. So what do you think, most of you think, what should be the first rank order? Rank it. May I see the chat box also? I think few people are doing it. 7, 6, Caring. Caring, okay. Number 1, rank order wise? Yes ma'am. Okay, okay. Safety. Then
It may be safety. After that, Learning. everybody can give their opinion. It's a group activity. Mine is caring, safety, order, and then purpose. First four. Caring, safety, order and purpose. Purpose. Okay. Enjoyment बहुत पीछे चला गया. सर वो हमेशा पीछे ही जाता है, चाहे हम कॉर्पोरेट. वो मुझे मेंटल ब्लॉक है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है जैसे होनी चाहिए और एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, इसलिए वो हमेशा एंजॉयमेंट पीछे रहता है. शाम को शुरू होता है वो आफ्टर 6. तो उसको आगे ले आओ ना, एंजॉयमेंट बड़ा जरूरी है. Authority should be second one. We are talking about what presently is there, not about the ideal situation. Yes. 6, 7, 6, 4, 4, 5, 6. What is this? This is something else, I think. Okay, so where enjoyment to chali piche. So learning opportunity ke bare mein, what do you think about? Are we able to provide the learning opportunity or no? How much do you think they get the learning opportunity? Learning on job is fine. That is always there. Very less. Very less otherwise. Except giving them basic soldierly skill, the force doesn't equip them with any additional skill set. What Madhusudan was saying in morning in the change due to technology, the only apprehension is that the check in the second, third, the gadgets, but we don't get the trained manpower. Okay. मैं यहाँ पे This is one big casualty. मेरे ख्याल में caring के बाद authority आना चाहिए. Second should be authority. Authority, अच्छा. Yes. Then results. Okay. सर आप सब अपना ओपिनियन दे सकते हैं यहाँ पे. Yes. Then 7 orders is also good. त्रिपाठी सर. गुड नहीं, अपना बताओ जगीर, तुमने जो टिक किया वो बताओ. गुड है मैंने दे दिया, मैंने ऊपर दे दिया. हाँ, त्रिपाठी का एंजॉयमेंट बता रहा है सबसे ऊपर ऐसे. ओके. नहीं, केयरिंग के बाद एंजॉयमेंट लाओ. अच्छा. सर पॉसिबल हो पाए तो बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती. सर हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, शायद कहीं आपके इसमें भी किसी ने की होगी. एक व्हील ऑफ लाइफ बनवाते हैं, क्योंकि लाइफ इज अ साइकिल, तो उसका एक व्हील बनवाते हैं. तो जब एंजॉयमेंट की बात आती है, चाहे हम कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम पब्लिक सेक्टर जैसे IOCL वगैरह में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि सर एंजॉयमेंट वाला जो पोर्शन है बहुत नीचे चला है, तो व्हील सारा गड़बड़ हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, बिकॉज एंजॉयमेंट गोज वेरी लो और लर्निंग भी कम है लर्निंग का भी, तो उस वजह से तो वी हैव टू मेक अ व्हील ऑफ लाइफ, बैलेंस्ड व्हील ऑफ लाइफ, व्हिच इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी इंटरवेंशन. सो आप हमने अपनी रैंकिंग करी है, सो कीप दिस रैंकिंग विद यू एंड मे बी वी गेट ए डेटा ऑन दिस. दैट केयरिंग जो आपने बात करी है कि दिस इज, सर हाउ डू यू give them this message of caring? This is a kind of psychological contract we talked. Yes, this is a kind of psychological contract that is understood that they will be taken care of. When they are showing commitment, they are showing their pride for the country, discipline, and also there is that they will be taken care of. Is this we are talking, sir? Psychological contract में जो caring का है या beyond that? Yes, that is one aspect. That is one aspect. Sir, what is the meaning of order for you? Order भी आपने तीसरे चौथे रैंकिंग में करा है. Order means following the orders, giving orders, kind of keep the things in order. Keep the things in order. Okay. System, that is system. The work is in system. Okay. Work is in system. Okay, so that is what I wanted to clarify. कि order में कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि as far as discipline is concerned, whether the orders are being followed or not. So you are talking about the system. They have to follow a system, order as per their duty is concerned. So let's move ahead. I think all of you have completed this activity. It is in the manual.
After that also there are 2-3 lines which we'll be discussing here only. Okay, so already we have talked weakness. I will not call it weakness. I will say कि resources नहीं है हमारे पास वो करने के लिए. So as a leader, whatever 2 examples I have already got for you from you people. So maybe I get more examples, but थोड़ी time की paucity है because I always feel like interaction is the best way of learning and teaching. So now let's come to the very important aspect of the culture, which is called leadership. Leader by example. Do you think it is there in the BSF also? Yes, definitely. Leadership by example. Okay. So leadership by position. What is your take on this? That is also, it's a combination basically. You cannot just be example. You need to have combination of various aspects. That is leadership by virtue of your position, leadership by virtue of appointment, by virtue of rank, leadership by virtue of time and circumstances. All these factors actually come together. But yes, one of the most important aspect is leadership by example. ये लीडर और कमांडर में जो फर्क है वो वही है यहाँ पर. Leadership by example and leadership by position. Leadership by position, leadership by example. So 2 types of ways for motivating the our forces is there in present in the BSF. Okay. So all these are the points which are the points which can be generalized for any kind of organization, whether it's a private, public, or services. But I just wanted to check with what kind of leadership, because leadership by example always works for everyone, whether we are in the educational institutions or private sector, public sector. As far as yours is concerned, most I am convinced with the kind of time management and discipline you have taught. Commitment तो शुरू से ही लेके ही जाते हैं, because training आपका होता है, जब उनका induction program होता है, उसमें आप उनको इतना imbibe कर देते हैं जिस kind of discipline or training के कि वो they can never go away from this. So these are the few other, you can say, the impacts of the leadership in the cultural process, in the making a kind of a culture you want to make in BSF. Sir, कितनी कुछ थोड़ा सा बहुत ये तो मैम BSF तो सेल्फ इंगेज मोड में ही चल रही है, मुझे तो ऐसा दिखता है. कोई कौन से मोड पे सर? सेल्फ इंगेज मोड. सेल्फ इंगेज. कई बार हम लोग लीडर का वेट भी नहीं करते हैं, हमें लगता है कि वो उसके पास कुछ है ही नहीं ऑफर करने के लिए, तो हम अपने आप से कमिटेड हो जाते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. सो क्योंकि जो लीडर का जो रोल है वो somehow we are finding that the proper planning has not been done regarding the career progression and other aspects. तो एक वो faith deliberately नहीं, मतलब factual grounds पे faith का loss है. Nobody can say in front of any senior or leader, but however in mind and heart we always know that we are the sufferers at times. But we always try that it should not replicate on our juniors or on our team. So we engage ourselves at our level with the available resources. Okay, well said, sir. Sir, these are the actually had it been possible that we could have been in a one room and I could have been made groups, and though we can make the break rooms for that, but it takes a lot of time. So let us start here only. Strategies for creating organizational culture. Sir, एक चीज होती है observational learning, जो आपने बात की leadership by example, कि आप वो देखते हैं कि हमारे लीडर कैसा है, कैसे काम करता है. तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ये बेंड्यूरा की थ्योरी है, which is called modeling theory of learning, social psychology की. The way we observe people, we will model them, we will learn. And there is a one principle of neurolinguistic programming also, which works behind it, that if one can do, others can also do. ये चीज जो है ना कि वो कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा कैपेबल नहीं है, ऐसा नहीं है. मेरे पास भी स्ट्रेंथ है, मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, माइंड की स्ट्रेंथ है, which is psychological strength. तो when one person can do, I will also be. So हमें जो लगता है जो क्रिएट BSF में ज्यादा जो लर्निंग की जो स्ट्रेटेजी काम करती है, that is the observational learning. रोल मॉडलिंग उसके साथ ही आता है.
Yes, sir. Let's come to open communication. How much is this possible? As we know, the hierarchy system is there in the BSF. I mean, limited space, the communication is open. Okay. But ma'am, at times it is one way. That's how it's limited space. In yes. Space, the communication is open. So mostly it's one way. You have to follow the commandants' orders and go accordingly. Sir, feedback system. What is the feedback system in BSF, sir? How do you give feedback? How do you differentiate their performance? Feedback तो first observation mode से भी हो जाता है. फिर उसका जो कमिटमेंट और डेडिकेशन और रिजल्ट से तो है ही, और प्रॉपर फीडबैक चैनल है. हर एक छोटी ड्यूटी जो रूटीन में वो बंकर के अंदर भी करता है, उसका भी फीडबैक चैनल. He has to maintain certain entries. 2-3 supervisory have to go through that entries. Any adverse has to be brought into notice of senior most. So is inbuilt. There are n number of instructions which one is supposed to follow, और ये उसी एक feedback का ही एक part है. Okay. So first-hand feedback you get from the person who is directly with them, and then of course there is a hierarchy for the feedback system also. Yes, yes, there is. That is always there, because otherwise no one can be there for them always. Empowering employees. But कई बार ऐसा भी होता है कि जो ground से feedback जाता है उसको it is not heard, और फिर ऊपर से ही चीजें आती हैं कि ठीक है आप इसको ऐसे नहीं करके ऐसे ही जाएंगे कर. At times it happens. Sir, well, that is everywhere. Because that is everywhere. That is everywhere. Sir. Yes, yes, it is there. जैसे हम लोग अपना ही जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हमें लगता है कि कोई एक एम्प्लॉय है जो 2 साल पहले आया है, वो 6 साल पहले वालों से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है और बहुत ज्यादा डेडिकेशन और बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस उसकी हाई है. तो अगर आप उसको चाहते भी हैं कि इसकी इंक्रीमेंट ज्यादा हो, उसकी कम हो, तो कई बार उनके भी अपने बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके कारण वो चीज नहीं हो पाती है जो डायरेक्ट लाइन मैनेजर बोले या आपके यहाँ पे जो 2 ICs हैं वो बोले. सो दैट इज पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी. तो ये वाली चीज तो सर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में इट इज देयर. एम्पावरिंग एम्प्लॉइज. नहीं मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपके यहाँ जो डिसीजन ऊपर से लेते होंगे वो वही होंगे जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में नीचे से ऊपर आकर के जिन लोगों ने ग्रो किया है. मैक्सिमम लोग. हाँ जी बिल्कुल. मैक्सिमम लोग वो होंगे जिनको कि इन्स एंड आउट की जानकारी है, जो कि जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाया है और उसकी ग्रोथ को इंश्योर किया है. बट हमारे केस में ठीक है, हमारे यहाँ भी ऑफिसर्स हैं, हायरार्की है, बट देयर आर एन नंबर ऑफ ओकेजन्स और न्यूमरस ऐसे केसेस हैं जिनमें कि डिसीजन मेकिंग जो पार्ट है वो इट इज नॉट विथ अस. ठीक है, फीडबैक जाता है लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है. Okay, so it's not that I will not say vice versa, but there is a difference. Okay. Accepting failures. So zero error syndrome तो आपका एक बहुत important motto है. So accepting failures. Generally, we don't accept failure. We fix the responsibility for failure. Yes. We make accountable without considering the feedback, knowing the way it means. So we don't accept failure. If failure has to be accepted, then there should not be any organizational hitch in that it happens at this level, that level, or what level. General acceptance for failure lies with the commander, and if he is not accepting it, he will be fixed to accept that accountability. I give you one example of this thing, ma'am, if you permit me. Yes, sir. Sure, sir. Recently, I'm posted at IJOL. तो मेरा एक बैचमेट यहाँ posted थे, अभी यहाँ से चले गए हैं. That is wonderful example of accepting failure or the showing the leadership trait. Yes. उनकी बटालियन ने एक बड़ा अच्छा सीजर किया था. They had made a huge seizure of currency notes plus something else. तो जब कभी इतना बड़ा सीजर होता है तो उसमें थोड़ा बहुत इश्यूज हो जाते हैं, इसको इधर उधर शिफ्ट करने में, काउंटिंग करने में. करेंसी इन 7 digits ऑन हायर साइड.
Count karte karte, there was some small document which slipped somewhere. Not very important, but it got slipped. Somehow they had a photocopy of that document with them. When this thing came to the notice of our headquarters, I'm sitting at a higher headquarters than the battalion. So that issue flared up. A sort of inquiry was ordered into that. It was considered by higher ups that this document was particularly of very importance. वो important था या नहीं, I will not dwell on that. But what I'm trying to tell here is, उसमें inquiry वगैरह हुई और बहुत सारी चीजें हुई. Now the great man of this man, who is my batchmate, was that उसमें दो अधिकारी आ रहे थे, those who are on the junior rank, to us, and they were coming in the line of fire of that inquiry. Okay. At that inquiry gone there, तो उन ऑफिसर्स के ऊपर कुछ ना कुछ छोटा मोटा रिवर्स कमेंट आने आवश्यक थे. हो सकता है बहुत भारी पनिशमेंट नहीं मिलता, उनको एडवाइस मिल जाती, वार्निंग मिल जाती, कुछ भी हो जाता था. And incidentally, both of those officers are in the seniority zone to their next promotion. So my dispatchmate, who happened to be close to me, he was a bit tense under that time, and उन्होंने फिर बात किया, सेक्टर डीआईजी साहब से बात किया, फ्रंट आईजी साहब से बात किया, and all these things. He told me, sir, if there is a fault in this system, this fault is with me, because I was there on the ground. और उन्होंने ये तब बोला, despite of the fact कि presence of commandant is just nominal. He does not involve himself in any physical work at any such operation. It was just coincidence कि जब वो सीजर हुआ तो कमांडेंट साहब वहां बॉर्डर पर प्रेजेंट थे. ना अब इंक्वायरी में वो बहुत ज्यादा बात चल रही थी. Then he went to meet our senior most headquarter, that is at Calcutta, and to convey his point, sir, if there is a fault, it is with me, and if anything has to be given, it has to be given to me since I was present there, and it has not to be given to them. Okay. Okay. उनके करेज का और उनके मोरल कैरेक्टर का फायदा ये हुआ कि वो इंक्वायरी को फिर उन लोगों ने, बिकॉज अल्टीमेटली वो इतना बड़ा इश्यू नहीं था, वो समहाउ कभी कभी ऐसा हो जाता, आपके यहाँ भी होता होगा, तो वो इंक्वायरी फिर वो सेटल डाउन हो गई विदाउट एनी एडवर्स रिमार्क्स. हैड ही नॉट टेकन दैट स्टैंड, प्रोबेबली वो जो दो जूनियर ऑफिसर थे उनको, हाँ जी, उनके ऊपर कुछ भी रिपरकशन हो सकता था. दैट वाज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सेप्टिंग फेलियर्स और लीडरशिप. यस सर, सो वी कैन कॉल इट अ डेवलपमेंटल लीडरशिप की जो अपने ऊपर, बिकॉज सर लोकस ऑफ कंट्रोल की जब बात करते हैं कि हम जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाई चांस ही वाज देयर, वो नहीं भी होते, शायद तभी भी हो सकता है कि उनको लगता कि नहीं, मेरे ये इतनी ट्रेनिंग और इतना इंडक्शन के बाद ये लोग यहाँ पर कि कुछ गलत नहीं करेंगे, जो भी हुआ है मे बी मिस हो गया समथिंग. तो वेरी गुड एग्जांपल सो यू हैव गिवन एक्सेप्टिंग फेलियर्स ऑन दिस लेवल आल्सो, दैट ही सेड दिस एंड एवरीथिंग वाज एमिकेबली सॉर्टेड आउट. सर, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, apart from pays, apart from leaves, apart from incentives, apart from welfare schemes, anything else is there for giving them rewards and recognition? Sir, kuch aur rewards and recognition mein, would you like to add anything? Ma'am, recognizing somebody in public forum, whatsoever available public forum with us, means common forum. If somebody has done something specific, some important task has been accomplished by an individual, in that case, if he has been recognized in the public platform that is available with us. Public platform means, I repeat, the public platform available to us. Like we have a common platform like Sainik Sammelan, we call it as Prahari Sammelan. Once in a month generally we organize, and all rank participate in that, and there if his efforts are recognized publicly, if it is communicated, can so look, he is the person who has accomplished this task and he deserves definitely some kind of recognition for that. If that has been communicated in public platform, so definitely that may be great. Sir, is there any monetary recognition is also involved during that recognition or not? Yes, it is there. It is there. It is there. That is always there. That is there. Somebody has done some good work. He has been rewarded in some or other way. But this is a kind
additional recognition that I am referring to, ma'am. Okay, so thank you very much, sir. So time is running fast. We have already discussed it. I'm skipping. Sir, बस एक ये वाली चीज जो है कि ये last है. Sir, anything which you find that your subordinate could manage in your absence, though of course he would have talked to you on phone. आप वहाँ पे नहीं हैं, आपका 2IC है, जो भी है. उसने ऐसी कोई चीज मैनेज की जो आपको बहुत लगा कि ये मतलब बहुत बड़ा काम था, और ऑफ कोर्स उसने इन्फॉर्म किया होगा आपको, पर ऐसी कोई चीज जो कि आपको लगा कि बहुत मुश्किल काम था लेकिन आपके 2IC ने मैनेज कर ली, या जो भी आपका सबऑर्डिनेट रहा हो वहां पर. तो ऐसा कोई एग्जांपल, अगर एक दो एग्जांपल आप शेयर कर दें तो हम इसको कंक्लूडिंग सेशन में लेंगे सर. बहुत रूटीन में होता है मैडम, ये लीडरशिप डेवलपमेंट या नेक्स्ट इन कमांड जो भी होता है जी, वो ऑटोमेटिकली इतना रेस्पॉन्सिबल होता है, या सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो अगर वो बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ की लगता है कि कोई ऐसा क्रिटिकल डिसीजन लेना, तो लोग अपने इमीडिएट बॉस से फोन पे बात करके, एंड सिस्टम कीप्स मूविंग ऑन दिस अकाउंट. सो डेली बेसिस पर है, इसको पर्टिकुलरली ऐसा याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो सब डेली बेसिस पे तो सबके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे फिर. हाँ, ऐसा मतलब ऐसे कोई याद रखना बड़ा इतना रूटीन में आ चुका है ना कि कई बार लगता है कि जी. इसमें हमारा सिस्टम में है मैम, इफ समबडी इज हैविंग, जैसे मैं जाऊंगा छुट्टी में, टेम्पोररी ड्यूटी में, माय नेक्स्ट टू मी ही विल टेक ओवर, मींस जूनियर टू मी ही विल टेक ओवर, and in that case if any difficulties is faced he will consult me, he will even consult the seniors also. Okay, so it's part of the system. So याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे part of the system unconditional support of the parents to the children होता है, उसको हम याद थोड़ी रखते हैं कितनी बार उनको सपोर्ट किया, कितनी बार. तो इसी तरह से आप लोगों को भी लगता है कि it's part of the system. तो लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो कि किसी के साथ बहुत एक मेमोरेबल इवेंट बन जाते हैं. सो मैं आपके लंच टाइम में से थोड़ा टाइम ले रही हूँ, इसलिए सॉरी फॉर दैट. सो नेक्स्ट, ये तो आपने हमेशा ही किया है, तो इसमें मैं आपसे एग्जांपल नहीं मांगूंगी, विच इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लीडरशिप बाय एग्जांपल. ओके सर, आपका सक्सेस का मेजर क्या है? आगे की बात छोड़ दीजिए. व्हेन डू यू थिंक यू आर वेरी हैप्पी टुडे, वेरी ओवरजॉयड, कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ? चलिए सर, इसको खाली हम जॉब तक नहीं रखते हैं, हम दोनों में से पूछ लेते हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल. क्योंकि जॉब में फिर आप बोलेंगे कि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम, सो एवरी अचीवमेंट इज एन अचीवमेंट व्हिच मेक्स अस हैप्पी. जॉब में मैडम, जॉब में डीआई साहब ने बोल दिया बहुत बढ़िया किया, आईजी साहब ने बोल दिया वेरी गुड, तो बस उतना ही हो गया, और क्या चाहिए. हाँ, वही मैं कह रही हूँ, फिर वो तो है ही सर, बिल्कुल सर, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है. तो आपने वो अपना सक्सेस का मेजर है. और कुछ इसमें कोई और कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं एक छोटा सा अपना एग्जांपल दूंगा मैम. जी सर. एक हम मैं यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट देखता हूँ. यहाँ एक डिपार्टमेंट है जिसमें मैं डेपुटेशन पे हूँ. तो सर कहाँ पर है आजकल डेपुटेशन पे आप? मैं BPRND में हूँ, ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ओके. तो यहाँ पे मैं एक बार ये बना रहा था लिस्ट कि किन लोगों का भेजना है. हमने होम मिनिस्टर के मेडल के लिए जी HM मेडल मिलता था पहले, अभी वो विड्रॉ हो गया कुछ जी. तो लास्ट ईयर की बात है ये. तो जब मैं लिस्ट बना रहा था, तो जब जो सीनियर मोस्ट अधिकारी थे यहाँ पे, उनके पास बैठ के एक मीटिंग चल रही थी, पूरी कमेटी बैठी थी, एंड आई वाज द डूइंग द कंपाइलिंग वर्क. तो मैं जब पूरी लिस्ट लेके मेरे से पूछे थे ये कैसा, वो कैसा, ये कैसा, तो बनाने के बाद में मेरे को जो चेयरमैन था उसने बोला वन नेम इज मिसिंग. उसने कमेटी को बोला, तो बोला कि हु इज दैट. तो जब उसने मेरा नाम लिया कि हिज नेम इज मिसिंग, तो मेरे को उस दिन बहुत खुशी हुई. आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन. ओके सर. कि यस सर, बिल्कुल, जब दूसरे लोग आपको रिकग्निशन देते हैं तो वही अपनी रिकग्निशन होती है. तो आपने अपनी लिस्ट बनाई और उन्होंने एक चीज ऐड कर दिया और लिस्ट. बिल्कुल. सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर फॉर एडिंग दिस. सो अब इनसाइट, तो एक इनसाइट या दो इनसाइट की बात नहीं करूंगी, बिकॉज वी हैव interacted, we have talked, that is the maximum, you can say learning has happened, or we can say we have interacted, we have exchanged our thoughts. Few of the things I have also added, few of the things you have also given me very good examples of BSF, and as we feel
The more we are doing BSF training programs, more we are feeling the part of BSF, because सर BSF ऐसी चीज है ना, आर्मी का हमारा फिर भी थोड़ा कांटेक्ट ज्यादा है, BSF के साथ कम था, लेकिन इतनी सारी ट्रेनिंग BSF में करने के बाद ना ये लगता है कि अच्छा ये चीज इतनी स्ट्रांग है जो कि हमें पता ही नहीं है। हमें तो अब एयरफोर्स आर्मी यही पता है, नेवी का भी ज्यादा आइडिया नहीं होता। तो BSF की जितनी नॉलेज आप लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद वी आर ऑल्सो एडिंग, इट्स अ वेरी गुड इनसाइट फॉर मी। सो सेम में भी आपको भी कहीं कुछ थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल, एंड बहुत ही अच्छा आपने इंटरेक्शन वाला सेशन रहा। सो नेक्स्ट आपका लंच ब्रेक है, 3 बजे से फिर नेक्स्ट सेशन होगा सर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जिसमें हम रेजिलियंस की बात करेंगे, जो आप लोगों ने हर बंदे में कूट कूट कर भरी हुई है। फिर भी हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं रेजिलियंस के। तो हम एक पर्सनल रेजिलियंस की बात करेंगे और एक BSF के रेजिलियंस की बात करेंगे। That session will start at 3 o'clock. By the time I think it's a lunch break for you all. So thank you very much for being here for my session. I'll be back at 3 o'clock. Thank you very much. Thank you, Dr. Gujral. Thank you. Thank you, Nick. We will resume at 3:10 p.m. Okay, I have taken 10 minutes of this. Okay, okay, no problem. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome back to the session on organizational culture, on resilience. So as I told in the previous session, that who can understand resilience better than BSF? So let's start. Before reaching to the BSF, we have to talk about personal resilience. Before that, we have to talk about the examples present in the nature. So if you go to your manual page number 235, you will find a small activity on resilience where you have been asked to give few examples from nature. Nature means prakriti, wo wala, nature, environment, prakriti. Uske baad there are, what are the 3 stressors in BSF? And one more small question is there, and then I'll pick up from there. So this is a small activity to start with, and we have a small questionnaire on resilience, which we'll be conducting in between. So this activity will hardly take, you can jot down the points or whatever way you want. It has to be that I'll talk on this, so you can always speak on it. And so page number 235, refer page number 235 for activity, and page number 237 will be for questionnaire. I hope you have found that activity. Yes? Yes, ma'am. Okay, so it will take 5-7 minutes to just jot down. We will speak on it, but just gather your points so that we can talk on this. Lessons learned from nature about resilience. Would you share that thing in a screen, ma'am? You want, you have not gotten manual? Actually, I have already shared my PPTs. So manual is not here available with me. I am seeing my phone. It is page number 237. First question is, pen down few examples of resilience from nature. I haven't got the printout. Got it? अनुराग जी मिल गया? Yes, ma'am. I have. हाँ जी हाँ जी. बस you have to resilience nature से अगर एक example भी देंगे हम लोग तो बहुत सारे examples हो जाएंगे. So one example from nature. Then jot down the points for stressors in BSF. उसके बाद we will discuss on is all stress bad or not. From there we will pick up about resilience. Nature से ma'am, a lot of species are there, those who have adopted and changed their behavior pattern to just suit the climatic change and all. So the resilience is the cause of survival of the fittest. Okay, very good. Some more examples. In case of animal, ma'am, camel can be said
कैमल का दिया जा सकता है बिकॉज द काइंड ऑफ जिस कंडीशन में वो रहता है वाटर स्कैरसिटी को लेकर के इट हैज डेवलप्ड रेजिलियंसी बोलेंगे दैट इट कैन सर्वाइव फॉर नंबर ऑफ डेज without water. Without water, yes, and that too in hot sand. Hot, time travels also. Yes. बिल्कुल. Okay. Loss of shedding of leaf during winter and again regrowth during spring season. Okay. That is a resilience of growth system of a plant that you can see. It shed automatically, then it regrowth because during that period it requires to preserve the water, and through transpiration the loss of water is there, so that is why tree automatically shed their leaves and again regrowth it when during the spring when there is abundance of water and it can afford to transpire the water from its body to maintain its temperature. Yes, good examples. Few more can I have? हम देखते हैं क्लाइमेट के हिसाब से जितना भी जितने ट्रीज हैं, जैसे अगर ह्यूमिड क्लाइमेट में जाते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तो ह्यूमिड क्लाइमेट में सारे जो ट्रीज मिलेंगे वो चौड़े पत्ते वाले ट्रीज मिलेंगे जिसमें पानी का एवेपोरेशन बड़ी जल्दी से होता है। और अगर डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो वहाँ जितने भी प्लांट्स होंगे वहाँ पे बिल्कुल बारीक पत्ते वाले प्लांट, जैसे बबुल का पेड़ है, तो उसमें क्योंकि जो पानी का जो वहाँ से इवेपोरेशन है वो बड़ा स्लो होता है अगर बारीक पत्ता है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेजिलियंस एंड एडाप्टेशन। Wow, very good example. Okay, so nature is full of examples. Many things we see in life. For sometimes we see that very tall trees, when there is a lot of storm and wind, they're just moving right and left, and after that it stops, they are stand still. So they have tolerated all that kind of strong winds, but even then they are. And next example, many examples, let's take egg. If the raw egg we can break with a spoon, 1 minute में टूट जाएगा, लेकिन more we boil it, so boiling तो बर्दाश्त करके hot heat को it becomes resilient, तो उसको उतनी जल्दी नहीं तोड़ के छिला सकता। हाँ, टेक्निक होती है बॉइल्ड एग छिलने की, वो अलग बात है, but otherwise it's very difficult to. And many other examples you can see, small plants, cactus kind of plants. Somewhere in the desert you will find one odd plant. After miles and miles you travel, you will get these small trees or plants. As you have already explained, the small pattas are there because water evaporation जल्दी नहीं हो जाता है, और वहां पर क्योंकि होना जरूरी है because lot of water is there, so वहां पर different kind of leaves are there. So this is how nature is also teaching us resilience. Now let us take example of for teaching resilience. What example we take for the layman is a rubber band. One rubber band, you stretch it, you can stretch it to a limit, जहां तक कि टूटेगा नहीं, तो आप उसको खींच सकते हैं। इसी तरह से we have a lot of resilience within ourselves, but we can stretch to an extent. Beyond that we will break down. So उस लेवल में जाने से पहले ही इतना resilience आ जाए कि जैसे रबर बैंड को छोड़ते हैं वापस अपने स्थान पे आ जाता है, ऐसे ही हम लोग भी जितना स्ट्रेच हो, जितना हमसे मैनेज हो पाता है उतना स्ट्रेच और उसको बर्दाश्त करके फिर हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। बट व्हेन इट गोज बियॉन्ड आवर रिसोर्सेज, देन डेफिनेटली वी नीड हेल्प इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, मेंटरिंग, व्हाटएवर यू से। तो मैम जो नेचर के अपने एग्जांपल्स दिए तो नॉन रिवर्सल है। कौन से सर? जो नेचर के हमने रेजिलियंस के जो एग्जांपल्स दिए तो नॉन रिवर्सल नेचर के। नॉन रिवर्सल की मतलब आप जो बता रही है ये तो रिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल ह्यूमन नेचर के कारण है, बिकॉज द फ्लेक्सिबिलिटी विच वी हैव, जहां पर ये ऑड एनवायरनमेंट है, चाहे नहीं जैसे डिजर्ट में थॉर्न होता है, निडल्स लीफ होती है, या कैमल का एग्जांपल था, तो ये सब तो जेनेटिक म्यूटेशन से अब तो एडाप्टेशन में आ चुका है। अब आ चुका है सर, अब आ चुका है डेफिनेटली। ये तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की कैटेगरी में आ गया, लेकिन जो आप बता रही है वो तो एक स्ट्रेच है जिसमें आप
एक्सट्रीम को मीट करने के लिए यू आर ओवर स्ट्रेचिंग, देन यू आर कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन। we all stretch। चलिए ये वाला रेजिलियंस जो नेचर से एग्जांपल है वो क्योंकि बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो उसको हम एडेप्टेशन में मानते हैं, क्योंकि उसी तरह से अडेप्ट हो गए। अब कैमल इतने से हम्प में जो वाटर है वो यूज कर लेता है, जबकि इतने से वाटर में कितने दिन तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता था, बिकॉज वो अडेप्ट कर गया और उसी तरह से आगे जेनेटिक्स भी वैसा ही हो गया उसका। लेकिन सर हम एज फार ह्यूमन बीइंग्स आर कंसर्न, तो ह्यूमन बीइंग में मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, ह्यूमन बीइंग में जैसे ब्रॉड चेस्ट है जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं टू गेन मोर ऑक्सीजन फॉर बॉडी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जो ब्रॉड नोज है जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में। लेकिन अब जो प्लेन का जो कॉक्सियन अगर ब्रीड का कोई आदमी मंगोलायड प्लेस पे जाता है तो वो रिजिलियंस है। अगर वो हाइट पे जाके इफ ही इज सर्वाइविंग विद द टेक्निक्स अवेलेबल विथ हिम, वो रिजिलियंस की कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन पर हम वही वाले रेजिलियंस की बात कर रहे हैं। ऑड इवेंट्स में जब अपने आप को सरवाइव करके रख लेते हैं, हम उस रेजिलियंस की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई चीज है जो कि हम अडेप्ट हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल वी इंडियंस आर अडेप्टेड टू एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड, बोथ वेदर्स। अगर हम और किसी कंट्री में जाए जहां पे एक्सट्रीम वेदर्स नहीं होते, उनको यहाँ पे आके दिसंबर में इतनी ठंड लगती है कि जो हम लोग आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं। So इवन जो साउथ के हैं, दिल्ली में आप देखेंगे वो कान में कॉटन डाल लेते हैं, या कश्मीर में जाएंगे तो वो हेडफोन वाला लगा के जाते हैं। ठंड तो वो रिजिलियंस है। If I go the meaning of resilience, that is basically ability to bounce back from illness, or ability to bounce back from as early as you bounce back to yes, that is the thing. So that is, if I see by the example, for example, camel hump, that is adoption. If you see the tree that you can say what I have cited the example, it shed the leaf in winter, then again spring it will the new leaf will come out, because during spring season it is required a leaf, during winter again setting is required. So bounce backing, it is bouncing back from its position to its original position, or from its original position it's going back to some other position for that requirement. Situational, according to the demand of situation. Ma'am, if you allow me, then I can intervene. Sure, sir. Yes, Karin, here when in the context of organizational or individual resilience. Sir, पहले हम individual से शुरू. We are talking about behavior of a person or the organization under the given circumstances, under certain circumstances. We are not talking about the elasticity or the resilience you are talking about. Reversible resilience. You are talking about the resilience in a plastic. We are not here. The subject is not that. I don't think it is that how we behave if we are under pressure, how an organization behaves. If there is a crunch of resources, how the organization is behaving. This is, I think we are talking about in this context. I would like to add to you. It is further to in the context of behavior even. Resilience means say something. Say there is a failure, how it can bounce back. I mean to say that it may be in that context also. I do not know how it is exactly. Yeah, my dear, there are so many examples who have bounced back. ABCL company, Amitabh Bachchan badly failed, and he bounced back. Today he is Arupati. No, company is still defaulter. No, company is defaulter, but as an individual he is succeeded. Otherwise, ABC exactly. What it looks like. In nature, if we are taking example of plants, the poly house forming is such a quality of plants that they show resilience there in the poly houses. Means the temperature, if regulated inside a poly house, the same item can be grown in Nagpur also and in Shahjahanpur also. So that resilience, that plant or specific species has. Sir, I give you an example. When we go to hills, तो सर वहाँ पे एक कैक्टस होता है जो रोज की तरह होता है, छोटा छोटा कैक्टस होता है, रोज जैसे लगता है. सो मैं बहुत बार उसको लेके आई हूँ वहां से हिल से, जब भी कहीं भी गए ये सोच कर कि शायद इस बार लग जाए, लेकिन हमारे गमलों में नहीं टिकता है.
वो थोड़ा दिन उसको जितना मर्जी कर लेंगे वो चलेगा, उसके बाद वो नहीं टिकता है क्योंकि वो उसी क्लाइमेट के लिए बना है। लेकिन अगर वो, तो इसका मतलब उसमें रेजिलियंस, उस प्लांट में, उस पर्टिकुलर प्लांट में वो रेजिलियंस नहीं डेवलप हुई है। हाँ, अगर हम उसको एग्रीकल्चरली कुछ करके या कुछ कर लें, जैसे कि हर चीज हम लोग आजकल फॉरेन के फूल भी हम अपने घरों में शादियों में यूज करते हैं, चलिए हम वहां से मंगवाते हैं, वो आने में, इंपोर्ट होने में टाइम लगता है, फिर भी फ्रेश रह जाते हैं, तो वो एक तरह से मतलब उनको रखा जाता है फ्रेश, चाहे किसी केमिकल के बेसिस पे या जो भी। बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं रेजिलियंस की, सर ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने आपको पहले शुरुआत यहाँ से की कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट बीएसएफ, नो मोर एग्जांपल्स बियॉन्ड बीएसएफ, क्योंकि वहां पे जो रेजिलियंस है वो, सर अब मैंने आपको बताया कि हमने टेकनपुर में करा था, तो आप लोग तो सीनियर कमांडेंट्स हैं वहां पे, देवर जो बिल्कुल जूनियर कमांडेंट, जो उसी समय छोटे छोटे सब 22-25 साल वाले थे, ऑल स्टूडेंट्स, किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हुआ था, किसी ने बीच में आकर के इसमें मिल गया तो आ गए। सर उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए टीम वर्क के और रेजिलियंस के, तो वहां पर हमारे जो एग्जाम्पल्स थे, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस फ्रॉम बीएसएफ कल्चर, कि वहां पर किस तरह का रेजिलियंस शुरू से ही इंडक्शन प्रोग्राम्स में ही दे दिया जाता है। इतने किलोमीटर अपना सामान उठा के भागना विद राइफल एंड ऑल, इट्स नॉर्मल बंदा तो पैदल भी नहीं चल सकता, और वो लोग इतना सामान उठा के भी बड़े आराम से, दे वर जस्ट डूइंग देयर जॉगिंग इन द मॉर्निंग। हम वहाँ साइकिल देते हैं, लेकिन साइकिल पे आपको चढ़ने नहीं देंगे, साइकिल आपके ऊपर रहती है, अकेला एक वो इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, साइकिल को आप ऐसे ही चला के लेके? जी जी, साइकिल को आपको चलाना नहीं है पैडल से, वो आप केवल पार्किंग की जगह पे यूज करेंगे, अदरवाइज साइकिल आपके ऊपर रहेगी। अब आप अपने आप को रिजिलिएंट बनाइए कि वैसी और कंडीशंस में हाउ यू आर गोइंग टू सेट योर लॉजिक एंड ऑल एंड जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। ग्रेट, अच्छा ये तो मुझे नहीं पता था सर कि साइकिल उठा के, वेरी गुड एग्जांपल। मैंने ये तो राइफल और बैकपैक जो पीछे लेते हैं, रग बैग, वो सब तो देखा है, लेकिन साइकिल उठा के वाला नहीं देखा है। चलो वेरी गुड एग्जांपल है कि मतलब चीज है भी तो उसको यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव टू अडैप्ट आवरसेल्व्स टू दैट। हद तो तब हो जाती है, हद तो तब हो जाती है जब आपको ये सिखाया जाता है चीजें क्यों दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है और आप यूज नहीं कर सकते। वेरी गुड। सो सर ये नेचर इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, सो कहाँ तक की बात करें। चलिए अब आप हम आते हैं अभी जो रिसेंटली पैंडेमिक वी ऑल हैव गॉन थ्रू। सर शुरू में प्रिकॉशंस लेकर के, जितना मर्जी प्रिकॉशंस लिया, कहीं ना कहीं से सबने कैच कर ही लिया एक दो बार, तो तब जाके वो अंदर से एंटीबॉडीज बनी एक दो बार होने के बाद। तो everybody has gone through this situation. Few people could develop resilience, few could not survive, whatever was the reason, maybe pre-morbidities थी, जो भी रीजन रहा हो, खैर, लेकिन कुछ लोग नहीं सर्वाइव कर पाए। लेकिन कुछ लोगों ने, अभी क्या है कि it's a big question, wear a mask or not to wear a mask. We are left wearing mask because we want कि थोड़ी resilience आनी चाहिए। फिर पता लगता है चाइना में दूसरा कोई स्ट्रीम आ गया, अब वो चाइना वाला यूएस तक चला गया, यूएस गया तो फिर इंडिया में आ जाएगा, तो फिर से एक तरह से मास्क मूवमेंट फिर से अभी है नहीं, बट मे बी लाइक वी गेट कि जब भीड़ भाड़ में कहीं जा रहे हैं तो हम यूज करें। तो रेजिलियंस के लिए हम उस सिचुएशन से होके गुजरते हैं, तब हमारे अंदर रेजिलियंस डेवलप होता है। लेकिन सर हमारी ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ आवर जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट वी हैव बीन रेज्ड, family or schools or whatever kind of rearing up practices we have been given, उसके कारण भी resilience से बहुत difference होता है। अभी when we go to our childhood time, we used to play in the field and park में खेलना, दौड़ना, भागना, this was our enjoyment. Nowadays playing cricket also online and no running around and eating all junk food and putting on weight, this is extreme thing. तो resilience कहाँ है आज के बच्चे में? बिल्कुल नहीं है, because they have not gone through those tough situations which we have gone through. Not only I'm talking about physically, let's take financially, let's take other resources also. Everything is now given to children on platter. कोई भी चीज बोली हाँ ठीक है ले लो, तो they don't have to earn anything. We are being served with whatever they are asking for. So this is also one of the reasons that the resilience in this current this जो हमारी ये है Gen Z है और Gen आगे जो आ रही है Gen Z, इनमें resilience जो है वो बहुत कम देखा जा रहा है। लेकिन we cannot generalize this. Maybe we have seen students in Amity University only coming from very meager background,
surviving on meager resources and topping in the class. We have seen students coming from very affluent families and not doing anything because everybody has the different purpose. So here we are talking कि resilience develop करना is very important. लेकिन किस सीमा तक? सर रबर बैंड वाला एग्जांपल इसलिए लिया कि अगर हमारी we all are different, we all have different level of competence. अगर हम उस competence के beyond stretch करेंगे तो break down हो जाएगा because हमारे में उतनी competence है नहीं जितनी हमने responsibilities ले ली. तो that is what I wanted to give an example of rubber band stretching into that. बिकॉज ब्रेकडाउन होने के बाद रबर तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन अगर उसको खींचने से पहले ही समझ लिया जाए, संभल के खींचा जाए, या पता चलेगा किसके बाद टूट जाएगा, दैट इज द पॉइंट वेयर वी नीड टू गिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वी कॉल इट mentoring, counseling, coaching or whatever. So this is also another example of the pandemic which you all have gone through. This is a video. Let me check if it works or not. Like, yes, I have done my job the way I should, it is required to, or maybe sometime not up to the expectations. It is okay. So it becomes very difficult, say, with the training and resilient, resilient. It was inculcated since the very beginning of our training days and in day-to-day life even. It is very difficult to identify stressors. But generally when we talk to commandants like you, for their jawans or for their subordinates, when they are talking, they 2-3 things which they say always is that sometimes they are not have the resources, mean connectivity on phone also to talk to their families for long period of time, being in the some kind of where no internet connectivity is there. So their office number is with them, so office can convey them the message, but directly they are not able to see their faces, family members, for maybe months or months. So what kind of stress do you think is this? I know you are talking about during the induction program, you have made them resilient about all this and they know that this is going to happen in their life. But even then, do you think this is a stressor for them? And if yes? There are many, ma'am. You can note if you want to, you wish to. Non-fulfillment of social obligations. Okay. Inadequate career progression. Limited resources. Zero-year syndrome. Relative justice concept. And not many. Okay. Ma'am, if I relate it, I can count it in 2 fronts. One is in personal front, other is in organizational front. Personal front, that is due to organizational factor. I mean to say that. Say social front, for example, not having enough communication with my family member. Young soldier who got married, but he cannot keep his wife with him. He will stay away from his wife because of nature of duty. That also causes definitely stressor in his personal life. And thirdly, there are so many like that. In the professional front, as rightly said by Sanjay, I am not getting promotion in time, whereas my counterpart in other organizations, they have been promoted long ago. Despite of having all competency with me, I am not still promoted. That is one factor. Secondly, like many people say, several times it has been referred, that is zero error syndrome. Thirdly, there is accountability. As a commandant, I am having accountability for the others' omission and commission also. My under command, what they commit, what they omit, I am accountable for that. That is another cause of stress. So like you will find so many things, so many factors are there. There may be some major factors which stress a lot, like family front. People are away from their family. Naturally, what their families are there at their home, they definitely cause certain degree of stressor in their mind. Children are properly not able to groomed up by the personnel because
themselves not physically in contact with them. So these are factors, social factors are there, so many factors are there. Okay, so we have a long list of, if not stressors, like I know, again, I'm going to the point again and again that they have been trained for it and they knew that this is going to happen. But even then, is there something as a commandant you could do something to cope up with these stressors for them? Yes, certainly, ma'am. Certain things we can do to minimize. Say, I can facilitate them to plan their leave so that they can go and contact and have some degree of communication, personal communication, physical communication with their family members. Same thing, clarity of thought is bring to the organization. For example, what is supposed to be done. Although there is expectation of zero error, still we can go for no. This much is possible and this much is acceptable. You may have this much of cushion. So like that, there are certain factors which are within the control of human being, and as a commandant also, those certain factors are there. It is beyond our control. Those things can be very well addressed. Okay. So there are things which can be addressed at your level, and so that you can felicitate for them, so that they can through your facilitation they are able to sort out few of the issues. They are able to sort out, or they can have that much of at least 1 week with their family, physically being there, not only on through internet or. I would like to quote one example here, ma'am. For example, how I have planned the leave of the people. So I have planned the leave so that everyone can avail leave thrice a year. Means 1 month, and 15 days CL, so that they can avail the leave at least thrice in a year. And once again, I stress upon that each of them should have at least get an opportunity to celebrate one major festival at their home with their family, so that there are people who used to go during Holi, during Deepavali, during other festivals, during marriage, every time they used to go. But there are some people who neither can get the chance to go in Holi, nor in Deepavali, nor in other festivals. So based on that also, I incorporate those things in the leave plan, depending upon the region, major festival, and people should facilitate them to celebrate there at home, at least one major festival. Okay. So I try to, so that they can have a social distinct feeling. The social obligation can also to some extent they can meet. Okay, sir. So whatever you can do, you people are doing for that. That's very commendable. And of course, every leader does for their organization or the people working in the organization. So is all stress bad? Stress हमारी life का, it is inevitable part of life. Stress, conflict, anxiety, जब तक life है कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. So is all stress bad or no? And what kind of stress is good? एक example दीजिए कि जहां पर stress से आपका output बढ़ाओ. नहीं, मैं अभी तो कल ही पढ़ाया था कि you stress और de-stress, उसमें बोला था कि एक certain amount of stress is required for better performance, but it should not cross that and enter into the burnout stage and all. अच्छा. ऑप्टिमम जो बेल सेप कर्व के ऑप्टिमम में तो स्ट्रेस भी हाई में था और प्रोडक्टिविटी भी हाई में थी, मतलब परफॉर्मेंस. नहीं सर, ऑप्टिमम में लिमिट तक मीडियम लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड हाई. हाँ, मीडियम यानी मैनेजेबल लिमिट, जो भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्ट whatever they can tolerate without burning it out, burning out other things. So that amount of stress and that form of stress is always welcome. Okay, you stress and distress you must have discussed yesterday. So I'm not going to. So all stress is not bad. थोड़ा stress चाहिए भी होता है आपको मोटिवेट करने के लिए, और आपका काम एक अच्छे परसेवरेंस के साथ, एक कंटिन्यूटी के साथ चलता रहे. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एकेडमिक्स है, कुछ बच्चे इतना केयरलेस कैजुअल होते हैं कि
ठीक है एक रात पढ़ेंगे एग्जाम हो जाएगा, तो उनको वो स्ट्रेस जो उनका स्ट्रेस है उससे परफॉर्मेंस अच्छी हो ही नहीं सकती, बिकॉज पढ़ाई का भी स्ट्रेस नहीं लिया, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं हुई। ज्यादातर बच्चे ऑप्टिमम लेवल का स्ट्रेस हो रहा है लेकिन उसको मैनेज कर पा रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस हाईएस्ट जितनी उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। उसके बाद जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व नीचे जा रहा है तो इस साइड हाई परफॉर्मेंस, लो परफॉर्मेंस एकदम एक्सट्रीम है, और हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, क्योंकि उनका जो स्ट्रेस है वो डिस्ट्रेस बन गया, तो उनके डिस्ट्रेस के कारण उनकी परफॉर्मेंस नीचे चली गई। सो बिकॉज लाइफ में स्ट्रेस तो रहेगा ही, सो ऑल स्ट्रेस इज नॉट बैड, देयर आर सम स्ट्रेसर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर फिजिकल वेलबींग, फॉर आवर साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो कुछ कुछ स्ट्रेसर्स हमारी लाइफ में, वही मैंने आपसे एग्जांपल मांगे थे। जैसे आपको क्या लगता है कि कौन से, एक तो चलिए बच्चों वाला एग्जांपल मैंने एकेडमिक्स, बीइंग फ्रॉम एकेडमिक्स आई हैव गिवन यू, and what kind of examples do you see in BSF where stress is, medium level of stress is good? Ma'am, basically human being are comfort loving people. Every individual loves to in their comfort zone. Unless you put some stress, the people will not work optimally. People will work, definitely people will work, they're bound to work, but to give the optimum result, you need to put certain pressure. And that is the thing where you need to this thing. For example, in our case, duty is supposed to perform by everybody. Every Jawan is perform there in the border. They are supposed to perform the duty. But unless it is being supervised, there is always the stress of supervision. Ki somebody will come and see me if I am sleeping, if I am not doing the duty up to the mark. So he will not be alert sufficiently. So there is always a fear in his mind that somebody will come and caught me if I am not alert. So that stress will force him, rather that force him to produce the optimum result, to perform optimally. So that is the stress. You certainly at certain time you require that level of stress to get the optimum result. Okay. So जब हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं तो it is as per our resources till the level we are able to manage, चाहे वो स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, एंजाइटी है, then when we are able to manage till that, it becomes okay. But when it goes beyond our management, that it becomes distress, and then it starts creating problem for that we are not able to manage. We are making so many mistakes, we are not able to perform well. So all stress is not bad. You all have done this earlier, so I'm not going into detail of stress. Let us come back to resilience, which we are discussing here. This is, you have already done. इसमें मैम एक चीज और कहना चाहूंगा जी, कि बीएसएफ में इंस्पेक्शंस इतने ज्यादा हैं और सीनियर अफसर्स के विजिट इतने ज्यादा हैं, वही अपने आप में एक स्ट्रेस फैक्टर है। लेकिन अगर उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो ये भी है कि इंस्पेक्शंस की वजह से चीज़ें चेक हो जाती हैं और पता चल जाता है, वो टाइम से उसका ठीक हो जाती हैं, और विजिट से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो स्ट्रेस है, लेकिन वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस जो आप बात कर रही हैं वो एक रहता है मैम। okay. So these are the few of the stressors which the output of those stressors is always good. So now let us start with, these are the few factors you will see here. I'll give you a small activity to do later on. This is, no, let us do the activity. Write the acronym bounce back, BOUNCE, bounce back. So bounce back है, bouncing back to the original one is the resilience. So B से क्या ऐसा हो सकता है which is a contributing factor to be resilient? O से क्या हो सकता है? U से क्या हो सकता है? तो ये आप एक एक वर्ड लिखिए अपने पास. So let us see. Bounce back. This is a small activity. Bounce back. B से what is that factor which helps us in becoming resilient? इसी तरह सारे एक एक फर्स्ट लेटर से. Boldness. Boldness. Okay. और सर? Brave, bold. Belief in oneself, madam. Okay. Broad-minded.
Sorry, sir. Broad-minded. Broad-minded. Okay. और चलिए अब O से we have Optimist, ma'am. Optimistic. Optimism, very good, because this is the first thing which comes to our mind. So you see how important it is to be optimistic, because जैसे ही वो आया सबसे पहला हमारा जो focus हुआ कि we have to be optimistic. और कोई चीज O से जो openness, okay. Opinion. Sorry, sir. Build opinion. Opinion, okay. And observation, ma'am. Observation, because as we discussed that as modeling theory, when we observe others that they are resilient, so definitely you are also getting that. Then you bounce back. You bounce back करने के लिए, resilient होने के लिए, you से कौन सा ऐसा characteristic factor? Usefulness. Of what? That activity of resilience itself is useful. Okay, okay. Anything else? Upright, ma'am. Upright, okay. Okay. Urgent. Okay. Understanding. Okay. Okay, so there are many. And never give up. Never give up. This is the first thing which comes to as for seeing your kind of the culture you have. So never give up first comes to our mind. Then anything else? New things. New things, okay. C. Confidence. Courage. Confidence or courage. Commitment. Okay. Courage. Okay. Continuity. Okay. Consistency. Okay. Sir, एक चीज जो यहाँ पर how much it will be relevant? Count your blessings. Will it help in being resilient or no? Please repeat, ma'am. Yes. जैसे सर हम gratitude journal बनवाते हैं for example. Yes, बिल्कुल. बिल्कुल. So जब हमें पता चलेगा कि ये इतनी सारी चीजें हो गई हैं या मैं इतना सब कुछ जो कर पाया लाइफ में, तो ये भी एक चीज है जो हो ही जाएगी. So when we see on this side that this was possible, this also can be possible. And we have that. Then our courage. सर एक subject है जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ और training programs भी करते हैं उसके लिए. Neuro linguistic programming. आप लोगों ने कुछ लोगों को पता भी होगा what is neuro linguistic programming. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बेसिस पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं सर, वो ऑल आर वेरी वेरी बेनिफिशियल इन चेंजिंग योर एटीट्यूड, बीइंग कॉन्फिडेंट, मेकिंग योर मेंटल टफनेस और लॉट मैनी लाइक मतलब एवरी sphere of our life there are coaching programs, there are counseling programs, mentoring programs which are conducted through neuro-linguistic programming. So what neuro-linguistic programming, just because it is relevant here, neuro is thought process and L is language and P is programming. Programming is our action or behavior. What we think, what kind of language we use based on our thought process, that determines our behavior and action. अगर हमारी thought process में toughness है, एक है कि हाँ I can do, and same language we are using with conviction, so definitely behavior is going to occur or the action is going to occur. But if we have no, I won't be able to do, पहले से ये बात बहुत सारे लोग होते हैं मेरे से नहीं होगा, no किसी और को ये काम दे दीजिए, हम ये काम नहीं कर पाएंगे. So that makes a lot of difference in resilience. So as per NLP we have to hit on thought process first and then language and then programming. So definitely things are going to be easier for us. So हम कहाँ तक पहुँचे थे? C तक पहुँचे. E sir, bounce back में E. Efficient, effectiveness. Effectiveness.
और कुछ? Efficiency, enthusiasm. So there are many things which are there. And then I'm making it little hurriedly because this session I have to finish in 1 hour. Energetic. Belief. Sorry, bounce back. Belief, तो आपने बोला belief on yourself. Bounce पहले वाले में बोला, यहाँ पे भी यूज हो सकता है. A से back. A. Adaptability. Adaptability. Yes, the most important for resilience is adaptability, attitude. Assertiveness. Sorry, sir. Assertiveness. Assertiveness. चाय पी लेते हैं बैठे बैठे क्या करें? Affirmative. Okay. वही पीते हैं अपन दूध वाला ही. उसमें थोड़ा अदरक. डीपी इधर भी भिजवा देना. हाँ सर, दिनेश सर, चाय हमें भी चाहिए. चाय हमें भी अदरक वाली. दिल्ली में तो और नहीं मिलता है. It's okay, it's okay, it's okay, it's on the lighter side. तो सर, अवेयरनेस ऑफ व्हाट, किस तरह की अवेयरनेस हमें चाहिए सर रेजिलियंस डेवलप करने के लिए? अगर हम अवेयरनेस की बात करें ए से, अवेयरनेस अबाउट व्हाट? Awareness about the circumstances. Awareness about the situation. Okay. Awareness about the reason of failure. Okay. Or reason of setback, I mean to say. जी. And awareness about the capability also. Okay, yes. आपकी जो पहली चीजें हैं वो बाहर से थी, जो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उस पे ज्यादा हमें फोकस करना है कि कहाँ तक हमारे पास इस चीज के लिए कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस है, उतना ही हम आपको खींच पाएंगे करने के लिए. तो उसके बाद आता है सी से बैक. सी एंड के आर लेफ्ट. सी, कंट्रोल ऑफ व्हाट? इफ वील से कंट्रोल, we cannot control situation, we can only manage situation. We cannot control our thinking, emotions, we can only manage them. So anything else which comes to your mind? Controlling of what or anything else? Controlling your anger. Anger. Okay. Okay. Emotion. Sir, yes. Control of emotion. Control of emotions. Okay. That's what I'm saying कि जब हम कंट्रोल करते हैं ना सर इमोशंस को, तो उसका रिएक्शन फॉर्मेशन होता है कि वो वाला इमोशन बार बार आता है. अगर हम गुस्सा कंट्रोल करें तो गुस्सा आएगा. हमें लगता है कि यहाँ पर हमें डर नहीं लगना चाहिए, तो हम सिचुएशन को इसमें नहीं डरना, तो और डर लगेगा. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको मैनेज करना सीखना, उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए हट जाना, या उस सिचुएशन को जो भी आपका बेस्ट तरीका हो मैनेज करने का. मैम, that is I slightly differ what you have stated. मैं बोलता हूँ कि कंट्रोल करना मतलब वो है जैसे सिचुएशन में मैंने पहुंच गया, उस सिचुएशन में अगर मुझे किसी एंगल से मुझे फेयर एराइज होता है कि ये डर लग रहा है इसमें, उसको मैं कंट्रोल करने का बात कर रहा हूँ. पहले मैं सोच के नहीं जाऊंगा मैं वहां डर लगेगा तो कंट्रोल करूंगा. आई एम नॉट थिंक लाइक दैट. देन इट विल बी प्रेजुडिस एंड रादर इट विल अफेक्ट एडवर्सली. बट अगर मैं उधर जाके सोचता हूँ, सिचुएशन एराइज होता है कि उसमें मैं बैक नहीं जाऊंगा, आई विल ट्राई टू कंट्रोल दिस थिंग. अच्छा, आपके अपने अपना जो आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से. यस यस. ओके. So controlling that way. Okay. And then comes K, back. Last. Knowledge. Knowledge. And? Kindness. Kindness. Okay. Okay. Knowledge, kindness. कुछ और जो आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है? Know your men. नो योर मैन. ओके सर, आप लोग अब हाई लेवल पे हैं, तो आप लोग के लिए थोड़ा सा वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें या कॉम्पिटेंस है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है. तो द पर्सन हु हैज जस्ट जॉइन और मे बी 2 years old in BSF or 3 years, वहां पे जो उनको सबसे पहले जो इंडक्शन प्रोग्राम है, किलिंग इंस्टिंक्ट, कि करना है, कोई भी काम है करके दिखाना है, बिकॉज यू ऑल हैव गॉन थ्रू दैट. तो अभी आपको है कि उनको मैनेज कैसे करना है, उनको नॉलेज के थ्रू करना है, क्रेडिबिलिटी के थ्रू करना है. सो दिस इज बाउंस बैक. सो व्हाट इज माय बाउंस बैक? ऑलमोस्ट द whatever you have talked, it will come here and there, because at the end there is a vocabulary which we all are using the same one. So this is the acronym for which bounce back is used. उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमेशा रेजिलियंस के लिए कुछ एक तरह से काइंड ऑफ प्रिंसिपल बन जाते हैं, जिसमें हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं. मैकग्रेथ के प्रिंसिपल्स हैं करेज, ह्यूमर. सर रेजिलियंस के लिए ह्यूमर का क्या रोल है? Wit and humor. We want people, we appreciate people who are witty and sometimes create humor in the organization.
so that it relieves our stress and makes us resilient. So in your organization, is there something like this or no? ऐसा सर है कोई चांस फन एंड ह्यूमर के लिए? ह्यूमर बहुत एक्टिविटी है, एक्टिविटीज ही कुछ ऐसा, अगर उसको आप दूसरे एंगल से देखेंगी तो वैसे ही आपको ह्यूमरस लगेगा वो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत समझदार आदमी से बेवकूफी की बात सुनेगी तो अगर आप समझदार है तो आपको हंसी नहीं आएगी, तो ये ह्यूमर ही है। अच्छा सर, वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी से जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो ऐसे कह सकता है या कर सकता है, फिर वो आपकी एक्सपेक्टेशन लौट जाता है। फिर जब मेथड पूछेंगी तो उसने कोई एमईटी से कोर्स नहीं किया होगा, लेकिन बताएगा डिट्टो डॉट उसी थ्योरम को। ये तो आपका परसेप्शन है मैम कि वेयर यू आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ह्यूमर तो है, यूनिफॉर्म से तो बेहतरीन ह्यूमर केवल हरियाणा में ही हो सकता है। मैम संजय has nicely explained about the humorous aspect of our life. तो बहुत पहले, मैं जनरली पर्सनल एक्सपीरियंसेस कोट नहीं कर पाता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बहुत पहले किसी सीनियर ने हमें बताया था कि कभी भी अपने सीनियर से नाराज नहीं होना, ईश्वर से प्रार्थना करना उन्हें सद्बुद्धि दे। Okay, so I think then you are passing on this to your coming officers also, that नाराज नहीं करना है, बस उनको सद्बुद्धि, मतलब हम यही कह सकते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे। और दूसरी ये चीज थी कि जिनको आप क्रिटिसाइज करते हो वो खुद मत करना। संजय, ये बताना है ना उनको कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। नहीं, मन के अंदर बोलना है, अदरवाइज तो फिर माहौल खराब हो जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना करते समय तो अंदर मन में बोलते हैं ना कि भगवान प्रभु इनको सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो, और बस इसके अलावा कुछ नहीं। आप प्रार्थना कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, और कुछ नहीं कर सकते। तो आपका तो विट एंड ह्यूमर, जो हम विट एंड ह्यूमर की बात कर रहे हैं, उससे कुछ और ऊपर है, जो कि जो समझे उसके लिए बहुत कुछ है, जो ना समझे उसके लिए कुछ भी नहीं। मैडम, एसके का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त है। ये जो बोला ना संजय सिंह, इसके सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त है पूरे कोर्स में। तभी तो खुद नहीं हंसते हैं ना, खुद नहीं हंसते हैं, खुद सीरियसली बता रहे हैं और बाकी को हंसने। यही तो खूबी होती है मैडम। हाँ, वही तो खूबी है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो सर, ऑन द लाइटर साइड, संजय सर, डोंट माइंड। सो ये बाउंस बैक जो हमारी है, जो ये बाउंस बैक आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, सब नॉट गोइंग। उसके बाद लेट अस सी, अभी सेंस ऑफ ह्यूमर की बात हमने पहले कर ली। Optimism very much required in each and every situation, same is required in the BSF also. Flexibility का कहाँ तक रोल है? मुझे जहां तक लगता है कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस नहीं है आपकी कल्चर में। Yes, am I wrong or right? Or it is different? नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप तो कम है, but there is scope at certain point of time. Say in some way you are trying to try to accomplish a particular task. If it is not done that way, you have to adopt some other way. So there may be at certain point of time, again depend upon the situation, it may require, but flexibility is required. Flexibility is there. It is not that we are so rigid. Definitely we are having the flexibility at certain point of time. Yes, in certain cases we are very rigid as far as disciplinary issues are concerned. We are very particular, we are very strict, but other as far as the accomplishment of task is concerned, we definitely have the flexibility, ma'am. Okay. Sir, ये जो slides हैं इनको छोड़ करके हम beyond the PPTs बात करते हैं. Sir, when you joined BSF and now maybe after 15, 17, 20 years, how have you changed? So how did you put in some efforts to change? Or you adapted to the situation, or what? Mostly adaptation to the situation. मैम, और otherwise ऐड करूंगा मैं, अगर मैं क्या चेंज हूँ, मेरे को कम पता चलेगा, मेरा कॉलीग को ज्यादा, मेरा घर वालों को ज्यादा पता है ये क्या चेंज हो गया। नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा चेंज विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत क्लोज मतलब निट हैं और बैच है और हम फ्रिक्वेंटली मिलते रहे। हाउएवर जो चीजें पहले बहुत वाहियात और खराब लगती थी, शायद हम उनको प्रैक्टिस करने लगे हैं। जिन चीजों को हम चेंज करना चाहते थे, उनको हम हो सके अब चेंज ना करना चाह रहे हो। तो चेंजेस तो है मैम, एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ। ये कहना कि चेंज नहीं है, डेफिनेटली ज्यादा हो गए हैं, थोड़ा पेशेंस ज्यादा डेवलप हो गया है, लिसनिंग पावर भी बढ़ गई है,
थोड़ा कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ज्यादा हो गए हैं, कोलेजिएट डिस्कशन में बिलीव करते हैं। पहले ऐसा होता था अकेला आदमी बस एकदम आकाश में छेद करके पानी गिरा देगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो जो प्रिजम्पशंस थे शायद वो रियलिटी चेक होने के बाद नाउ दे आर ऑन ग्राउंड। प्रैक्टिकल अप्रोच है थोड़ा सा लाइफ में, ऐसा कह सकते हैं इतने सालों बाद। Sir, that is what it is, because change though it is every stage of life, every aspect of life, there is opportunity to change, and we all are changing. It is inevitable process of life. Lekin mostly what happens, people show resistance to change. मतलब change को में adapt करना और change के हिसाब से flexibility लाना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है. So how difficult it was for you, or anybody can give an example if you found it difficult? Mostly though it happens because of the adaptation, flexibility, maturity. You have created your own credibility through your personality, through your knowledge. जो भी है उन सब चीजों को छोड़ करके किसी को कोई ऐसी हर्डल आई हो जिसमें आपको लगा हो कि मतलब थोड़ा मुश्किल से ये काम हो पाया, ऐसा कुछ एग्जाम्पल होता है मैम? एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल रिलेटेड टू आवर प्रोफेशन अगेन आई वुड लाइक टू कोट हियर. Some of our senior officers advocate that this extended jurisdiction का बात हुआ था मॉर्निंग में. There is extended jurisdiction. Now we are having the jurisdiction up to 50 kilometer from international boundary. Otherwise it was earlier 10 kilometer or 15 kilometer at certain places, 8 kilometer at certain places, something like that. Now it is 50 kilometers. So few days back, a senior officer came, he proposed no. Our main focus were there that we look forward, means we look forward and cover our backside. That is our general principle of functioning. Means front side से, enemy side से हमारा पास कोई नहीं घुसना सही है, और पीछे से हमको कोई अटैक ना करे, वो हमारा एक बेसिक फिलोसफी रहते हैं वर्किंग में. जैसे न्यू ऑफिसर आया, वो बोला नहीं, आपका अगर पीछे वाला पार्ट 50 किलोमीटर तक आप डोमिनेट करते हो, then automatically your front will be safe. Means the various transborder activities, transborder crime will reduce. So he emphasized more on the rear side rather on the front side. Okay. So that is a very difficult perspective for us. कि भाई हम फ्रंट को छोड़ के पीछे डेफ में जाए और फ्रंट को हम लूज कर दे, बिल्कुल फ्रंट को ढीला छोड़ दे, तो then it will be slightly difficult for us to make up the thing. So हमारे लिए कोई ना कोई हमारा अपना परसेप्शन को सेंस करने के लिए दिक्कतें आए. We face some difficulties, but anyway, again it is force. You have to balance. You have to draw a line between the direction and execution, and you have to act accordingly. So finally implemented, but still that is the judicious application of mind. You have to apply that. So that is the perceptual difference, perceptual changes. It become very difficult. ओके सर, बीच में एक एक्टिविटी है आपके उसमें दी हुई है, मैं वो बहुत डिटेल में एक क्वेश्चनर है, सो अभी मैंने वो नहीं करवाया आपको, आप उसको कर लीजिएगा. उसका डिस्क्रिप्शन वेरी इजी और साथ में दिया हुआ है. तो अभी दैट मच ऑफ टाइम इज नॉट लेफ्ट फॉर दिस सेशन बिकॉज 4:15 वाज द टाइम फॉर द अनदर सेशन. So I'll skip that because, and you, it's not our students who will not do when it is your interest which will make you to do that, to know how resilient you are. So when we come to know about ourselves, definitely we are doing those kind of activities. So these are the few of the characteristics which you're seeing here of the people who feel that they are resilient. And most of the characteristics you are able to connect with, you are able to identify with. ये सारी चीजें तो हमारे they are a part and parcel of BSF life. So nothing new for you as far as BSF is concerned. Because if we say self-efficacy, so rest of the things will come only when self-efficacy. पहले अपने बारे में, अपनी capability के बारे में हमारी जो confidence है, उसके बाद ही और सारी चीजें आती हैं. तो all are equally important aspects, starting from the first slide to the next slide. And all the PPTs are available. Sorry, Tanvi, I'm just winding it off. Okay. Whenever you are ready, we can take a small break. Then we will take a break of 5 minutes. Yes, definitely. I'm just winding it off. Okay, sure. So these are a few of the which continued slides, and
These are how to develop. All these points have been spoken in one way or the other by all of you, right? Starting from adaptability to sense of humor to courage, perseverance, assertiveness, everything. And gratitude, of course, it is always there, whatever we are doing in a life. So this was something on resilience I wanted to. So humor and wit का बहुत बड़ा हाथ होता है resilience में. And if we lose on humor and wit, or we avoid, or we are not paying attention to this part, very important aspect of our life, then it is very difficult to tolerate and become resilient. So we should always take out time with our work. We should, nowadays we don't call it work-life balance, we call it work-life integration. So you have to integrate life in the work and vice versa, not that work-life balance we are talking. So I hope we all are able to inculcate resilience in ourselves by examples, PPTs, if you want. We have our PPTs, we'll be sharing with you. So thank you very much. And there is a break for 5, 6, 7 minutes. So अदरक वाली चाय जिसने पीनी है, जो भी चाय पीनी है, पी के वापस आ जाइए. उसके बाद हम आपसे मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंक्लूसिवनेस पे. Thank you. Should we start, sir? ठीक है बाबू. Yes, ma'am. सर आधार कार्ड की फोटो तो हम खुद अपनी नहीं पहचान पाते हैं. So strange. बड़ी अच्छी फोटो आती है जो हम खुद ही नहीं पहचान पाते कि हमारी फोटो है वो. सर शुरू करें ना यार. चाय आप लोग बीच में पीते रहिएगा, बनते बनते ही बनेगी. कुछ लोगों को मिल गई है, कुछ को भी टाइम लगेगा. So let us start the third part of organizational culture, which is inclusiveness. तो सबसे पहले inclusiveness हम शुरू करते हैं. आप inclusiveness भी हम शुरू करते हैं nature से. So give me some example from the environment, nature about inclusiveness. उसके बाद खुद की बात करेंगे, फिर organization की बात करेंगे. Sun, moon, stars, air, oxygen. Wow, सब कुछ आ गया These are examples of inclusiveness. Yes, very good, very good. This is what I was waiting for. Rain, everything. Yes. सन कोई सिलेक्ट नहीं करता कि इसको रोशनी देनी है. रेन कोई सिलेक्ट नहीं करती कि यहाँ पे बरसेंगे, यहाँ पे नहीं बरसेंगे. Very good. So you all have given, sir has only given, so it's inclusive of all BSF, that what he is saying about nature. So nature के बाद हम अपने में inclusiveness के लिए क्या कर सकते हैं? We will come to the organizational inclusiveness just after 10 minutes. खुद को inclusive मतलब अपनी personality के साथ अपने थॉट प्रोसेस को, अपने एटीट्यूड को, अपने एप्टीट्यूड को, ऑप्टिमिज्म को, सबको मिला करके चलने के लिए एक हमारे पास एक एक्टिविटी है. सो वो एक्टिविटी हम आपके पेज नंबर 246 ऑफ योर मैनुअल. पहला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, हाउ डू यू बिल्ड एन इंक्लूसिव कल्चर. सेकंड एक सिनेरियो है, थिंक अबाउट टाइम व्हेन यू वर गिवन अ चैलेंजिंग असाइनमेंट एट वर्क, जो आपने पहले कभी नहीं किया था. सबसे पहले क्या थॉट्स आए आपके? व्हाट बिलीव्स स्टॉप्ड यू फ्रॉम सक्सीडिंग, व्हाट बिलीव्स enabled you to succeed. ये 2 पॉइंट बस छोटे छोटे जॉट कर दीजिए कि अगर आप वो काम जब मिला तो आपको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे कौन सी थॉट प्रोसेस थी, क्या क्या बिलीव्स थे कि आप नहीं कर पाएंगे, या आपको लगा नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कौन सी थॉट प्रोसेस थी जिसने आपको एनेबल, इसको सर हम कहते हैं एनेबलिंग बिलीव्स और स्टॉपिंग बिलीव्स, यू कैन कॉल इट. So what are those enabling beliefs made you to do that कि हाँ हो जाएगा? What are those beliefs which made you to नहीं हो पाएगा, stopping, which stopped you? तो ये छोटी सी 2-3 चीजें नोट कर लीजिए अपने पास. We are going to discuss it right here. Page number 246 of your manual. सर ये मैनुअल you have hard copy और आप सॉफ्ट कॉपी से ही देख रहे हैं? सॉफ्ट मैडम यहीं पर. सॉफ्ट ही, अच्छा.
So this is a kind of a situation. Think about a time when you were given a challenging assignment at work, something you had not done before. What were your initial thoughts around it? कि क्यों नहीं कर पाएंगे या कैसे कर लिया? तो कुछ थॉट्स आते हैं, उसके बेसिस पे हमारा काम होता है या नहीं होता है. बस 2-4 पॉइंट जॉट कर दीजिए, then we are going to discuss. इनिशियल थॉट तो मैम अपनी प्रिपेयर्डनेस और रिसोर्सेज को लेके ही आती है कि am I competent enough to do this challenging task? Self assessment regarding the given objective. Okay. रिसोर्सेज हमारे डिस्पोजल पे, और थर्ड जो है, अगर इस मतलब क्वांटम का नहीं तो किसी और टास्क को आपने पास्ट में अगर किया हो तो उसके गुड पॉइंट्स को याद करके, मतलब एक्सपीरियंस कैसे सच तो नहीं आता है कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिया वही जाता है करीब करीब जो अचीवेबल टारगेट है, या किसी ने किया होगा, आप वो अलग बात है. ओके, तो नई वाली बात तो देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू पीपल कि नई वाली बात तो नहीं. यस, नई वाली बात तो नहीं है, बस ये है कि कितनी मतलब एक्यूरेसी के साथ और विद इन गिवन टाइम स्पैन विद अवेलेबल रिसोर्सेज यू आर एबल टू डू दैट. First of all, ma'am, first thing comes how I'll accomplish this task. They say, Sanjay has rightly says, there is no option of that we're not able to do it. वो option तो आप you forget about that. We don't have that option. Any task that has been given to anybody, he's supposed to accomplish that. Number one, how he will accomplish that is the issue, and to what extent he will able to accomplish the task. That is second part. And third part, the available resources at my disposal to accomplish that task. If not available, then where from I will derive that. Okay. These are the few aspects that generally come to mind. And besides that, if I can delegate it, to whom I should delegate to accomplish that task. Like my team member, if there are team members, I supposed to associate the different members to get the task accomplished. And in that case, I'll definitely select the person whom I supposed to bring into the team to accomplish the task. Okay, so very clearly, no thought for no, and everything has to be done. To what extent we'll be able to do that depends on our capability, competence, past experiences, and people with us to whom we can delegate, and teamwork, of course, is there. So this is the crux of that activity, that there's no choice for that. We won't be able to do it. We have to do it. We have to do it. So this is the difference in the culture, sir. This is the services. And if we talk about government organization, and if we talk about PSUs, we cannot say, because they are also kind of mixed culture is there. So this is a recap which we have already done today only. Actually, we do the recap and then we have taken maybe one session 2 days or last day then only. So recap is not required because today only we are talking about this. So for creating an inclusive culture, what is required? There is some hint of remove biases. What kind of biases are we talking? आप इंक्लूसिव कल्चर में सर सबसे पहले इंक्लूसिव कल्चर में किस बेस पे इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं हम कल्चर को? सर जेंडर डाइवर्सिटी, हाँ, आई टॉक्ड इन द बिगनिंग ओनली दैट जेंडर डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो बहुत रेशियो आपका बहुत कम है. फीमेल रेशियो इज वेरी लेस बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ जॉब इट इज. सो वो नहीं हो पाती है जेंडर डाइवर्सिटी. दो थिंग्स आर इम्प्रूविंग एज वी गॉट द feedback from the last batches that things are getting better, but still there's a lot to do about gender diversity. Sir, so what kind of biases are we talking and how it affects? So let us discuss, and then you will give me whether these biases affect you in day-to-day functioning or not. Or let us take it vice versa. What kind of biases do you think they are there which affect you personal level पे? बाइस का मतलब है कि हम किस तो जैसे फेयरनेस हो गई, कितना फेयर हमारा बिहेवियर है,
मुझे लगता है मैम हमारे डिपार्टमेंट में जेंडर बायस तो खैर अभी चूंकि लड़कियां जो हैं अभी आना शुरू हुई हैं, उसमें काफी डिस्कशन हो चुका है कल, तो उसमें तो थोड़ा भी टाइम लगेगा हम टू कम अप टू दैट लेवल, जैसे कि हमारे बैचमेट्स कल डिस्कस कर रहे थे कल या परसों। बट हमें लगता है क्योंकि हमारे पास एक चीज है जो यूनिक है, वो हर जगह नहीं मिलती है, कि हमारे पास लड़के अधिकारी जो भी हैं वो दे कम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। हर स्टेट का, हर फाइनेंशियल बैकग्राउंड का, हर टाइप की, आपको सिपाही में सिर्फ 10वीं से लेकर एमफिल तक भी लड़के मिल जाएंगे। सो टू बी ए सक्सेसफुल कमांडर, सबसे पहली बात तो यही है कि आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड, हिज पर्टिकुलर स्टेट, you have to think everybody equal and while allotting any task or while believing in the capabilities of somebody, कि नहीं उसमें ये नहीं सोचना कि ये इस पर्टिकुलर जगह से आता है तो ये किस काम कर सकता है नहीं कर सकता, और बॉयज कैन डू वंडर अगर इसमें बिलीफ रखा जाए तो। एंड दैट एज ए कमांडर आई थिंक वो सबसे पहली बात है कि अगर हम फेयर हैं उनके साथ तो वो अपने आप धीमे धीमे एक इंक्लूसिव कल्चर में एक मैसेज तो देगा ही देगा। मैम जेंडर बायस का जो आप बात उठी में मैं I'd like to quote one example. Ma'am, I went on leave in the last month. So I happened to participate in one seminar. There is a seminar organized regarding the gender sensitivity and equality of gender. And one social scientist participated in that seminar. So I was also somehow got that opportunity to participate in that. So somebody was referring about the participation or involvement of the female folk in armed forces. At that time, there was a very hot discussion regarding the induction of female in NDA. So with reference to that, he was talking about. So he was referring to certain things which really amazed me to think. He was telling, if we go back to our history, even mythological era, we hardly find the female in a combat role. That was his contention. And very nicely elaborated, very long discussion. I cannot go the nitty-gritty about that. But nutshell, he was telling what he has told in nutshell that I just referred to. He was very categorical in telling, if you see Mahabharata, if you see Ramayana, everywhere there is a huge war, and you won't find anywhere there is participation of female folk in the combat role. So why are we hell-bent? Are we hell-bent? That means are we biased to make them involved, or otherwise we are biased not to involve them? That was the point of discussion. And I am also, I may be biased, I may be sound a bit biased. I am also having a girl child. So still I feel the role of combat probably may not be appropriate, I think, for the female. Combat role may not be. Yes. That is the biased approach. चौधरी बायस हो रखे हो आप भैया? Sir, bias नहीं है. Actually, the role kind of job it is there, and we are genetically different. Okay, so it is like it is a. There are many spheres where women can perform much better than men. Maninder, you are forgetting Kalinga War. You are forgetting Kalinga War, and whatever wars which have taken place, the role of women has been only 5 to 1, maximum 5% in all the wars all over the world. So, and India has been, it's not that in Mahabharata, Ramayana, the role of female was not there. It was always there. If you study, everybody was participated in his own or her capacity. So that is also wrong to say. So women have been a part of our culture and they have been combatants also. I would like to refer. No. You probably not heard my word. I mean to say that role, combat role. I mean to say role is always there. I am not denying. I always refer to that. Combat role has also been there in Kalinga War. There was a combat role, and if you see in other cultures also, the combat role of women has not been there. Genghis Khan never took women with him as this thing. Neither did Tamur, neither did the Vikings also.
So does not happen basically because of obvious reasons. But they have participated in Indian culture. They have already participated much more than other cultures. Okay. Yes, Okay. yes. Okay. So we can- I also have same opinion. I differ. My opinion is different here. As Khanin was giving an example of Mahabharata and Ramayana. So we cannot go back 5,000 years back now. We cannot take in the precedence from Ramayana and Mahabharata that no female participated in the wars, and still we should continue with the same strategy and same traditions. I don't agree. Dinesh, in Ramayana, Kaikeyi had participated in the war, and that is why she was given 2 boons. Kaikeyi had participated in the war. As a combatant, she had participated. In Mahabharata, Shikhandi was there's a confusion, but Bhishma Pitama did not raise because Shikhandi. So they have been participants basically, and major participants. Look, I would like to tell you now. I would like to tell you, if you say yes, fine, done. You are quoting one example. Fine, done. Now, not debate. Let's not debate. But one thing I'd like to clarify here: if you at all assume, as per your version, if I go by, still I say 50% male, 50% female, almost. No, yeah, that was not there, of course. What is the percentage of participation? You tell me since immemorial. How much participation have you observed? हमने पास्ट में नहीं किया और we will continue the same tradition. नहीं, मेरा argument वो नहीं है. मेरा argument वो नहीं है. My argument is not that. My argument is simple. My argument is also very simple. I am saying that today war is not. Razia Sultan was a combatant. You are not going and Rani Lakshmi was a combatant. Sir, you are right, sir. But he is saying when we are talking about diversity का हम ज़्यादातर करते हैं. If not 50-50, तो लोग exactly 50-50, so it cannot happen. It's never happened with marriage. It never happened with any culture. 30 नहीं सर, वो तो हो ही नहीं सकता ना. अभी बॉर्डर पे 30-70, 20-80. अगर महाभारत और रामायण में होता तो हमारी अभी स्टेटेड पोजीशन चेंज होती क्या? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ. कॉन्टेक्स्ट में देखो ना, महाभारत रामायण से तो कोई इंक्लूसिवनेस का कोई मतलब ही नहीं. Let me complete. ऐसा बॉर्डर पे ऐसा कौन सा काम है जो फीमेल नहीं कर सकती? मेरे को सभी काम कर सकते हैं. सब काम कर सकती है. देखो साइंटिफिक स्टडी है. इसमें जो मेंटल ब्लॉक यहाँ पे है, अगर एक बटालियन में अगर 1000 में से सिर्फ 50 लेडीज हैं, तो अभी 1000 को छोड़ के वो 50 को कोई हैवी वर्क. दिस इज बट नेचुरल थॉट कि अगर मैंने ये बोरी उठवानी है या मैंने अगर ये 50 केजी की गन उठवानी है, तो मैं एक हट्टे लड़के को छोड़ के मैं उस लड़की को क्यों बताऊं? यही तो बायस है कि वो कॉम्पिटेंट रोल में आई है तो वो सब काम कराऊंगा मैं. अगर 50 तो मैं मेल से कराता हूं. नहीं मैं अगर आपके पास ऑप्शन ही ना हो, सारी अगर लड़कियां हो बटालियन में, तो क्या लड़कियां बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं कर पाएंगी? और ऐसी कौन सी लड़ाई है जो अभी मसल पावर से लड़ी जाएगी? सारी लड़ाई तो मशीन से लड़ाई होगी पूरी. Weapons, yes. अरे वो यार क्या बात कर रहे हो? वो यज़दी ट्राइब्स वो ISIS के खिलाफ लड़ी है, वो लेडीज है. क्या बात कर रहे हो? कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप? अगर हो जाता तो सर्टिफिकेट हमें मिल जाता क्या कि महाभारत रामायण में हुआ है, तो अभी हम मान लें वहां जो अच्छे बर्ताव हुए औरतों के साथ, वो तो हम कर नहीं पा रहे हैं. कॉम्पिटेंट रोल के लिए लेके बैठे हुए. जागीर और एसके भाई ऐसा है, दोनों आ जाओ, कोई बात नहीं है. कोई आएंगे दोनों आ जाओ. नहीं बोला. आनंद आएंगे दोनों आ जाओ. ऐसा है बाहर यार, ऐसा है. सर आपने मेरे लिए आसान कर दिया. नहीं, मैं नहीं करूंगा. नहीं आएंगे. कोई ये परमानेंट ऑप्शन नहीं है. आप परमानेंट ही हो यार. आप रेफरेंस पॉइंट. हाँ एकदम आऊंगा. निश्चित रहो. वहीं पे सर्व करके यहाँ आया हूँ और यहाँ से सर्व करके आप BSF से भागा नहीं. ठीक है, आप लोग कहीं नहीं आने, ऐसे ही बोलते हैं. एक्चुअली ये मैम इस ऐसा टॉपिक है जिसमें 2x2 = 4 नहीं कर सकते. ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है. और इसमें अभी जो कल हमारे किसी बैचमेट ने बोला था कि व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, हम उसको ज्यादा माइक्रो लेवल पर उसको ऑब्जर्व करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं. उतना माइक्रो लेवल पर हम अपने जो मेल कोलीग्स हैं, काउंटर पार्ट, उनको नहीं करते हैं. तो अभी जो एसके बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे कि अगर हम उनमें से कौन बोल रहे थे कि उसमें से हम 50 में से कुछ को हम बॉर्डर रख लें, कुछ को हेडक्वार्टर रख लें. इस तरह का एक मैनेजमेंट हमें उसमें करना ही पड़ेगा. और कुछ इश्यूज तो हैं जो हम यहाँ पे शायद नहीं ओपनली डिस्कस कर सकते. उनको हमें सिंगल में रात में बॉर्डर पे ड्यूटी कराने में दिक्कत है, तो हम ऐसा जगह ढूंढते हैं
जो हमारे पोस्ट के नजदीक हो, दैट इज इसी काम का हमें there are many things sir, yes. स्किल So मिलती that है। is what we are coming on biases कि वो कौन सी ऐसे biases है, is the biases real or not? So let us मैम जो सॉरी बट जो बीपीओ रिवोल्यूशन जब आया तो क्या हमारे घर की बच्चियां जाती थी रात में कैब में बैठ के जॉब करने? क्या उसके पहले जरा बताए कोई? 10 बजे रात से 2 बजे की शिफ्ट में 6 बजे सुबह की शिफ्ट में गुड़गांव में कौन अपनी बेटी को भेजता था जो ग्रेजुएट हो? सर उस शुरुआत में बिल्कुल नहीं था ये कल्चर। एग्जैक्टली तो ये बायस है और कुछ नहीं। और ये सबसे बड़ा और चेंज इसलिए नहीं हो रहा है कि हम मान के चल रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता। सर हो नहीं सकता है या हम शुरू से एक मेंटल बीपीओ और उस इंडस्ट्री में इसलिए हुआ मैम कि वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं था। अगर वहां लेबर लॉ और बाकी चीजें लगाती तो शायद इंडिया आईटी की पावर इस स्टेज में नहीं हुआ। Certain things I would like to tell you why it is not biased. It is absolutely, I beg to differ strongly in this particular point. मैम ऐसा है, इसमें एक जो पॉइंट में बोलना चाहूंगा कि अगर सेम है, सेम कंडीशन है, why there is different set of rules for different female के लिए different set of rules are there and male के लिए different set of rules are there. Itself is not biased. Is it not biased? So that is what वही तो डिस्कस हो रहा है, वही तो डिस्कस करना है सर। That is the point. कि That is the point, ma'am. So let us see सर, ये जो कॉमन बायसेस हैं इसमें कौन सी बायस है जो, इसलिए कुछ देखिए ब्लैंक छोड़े हुए हैं। इसमें आपने बताना है कि जो बायसेस एट वर्क है, एक तो होता है हेलो इफेक्ट। आप सब समझते हैं हेलो इफेक्ट की ये बंदा ऐसा है तो ऐसा कर रहा है तो ये भी कर लेगा, मतलब एक कॉम्पिटेंस है तो दूसरी भी होगी तीसरी भी होगी, उसका हेलो इफेक्ट की उसमें ये सारी क्वालिटीज होंगी। दूसरी हमारी बायस होती है एफिनिटी। हम जिससे ज्यादा क्लोज फील करते हैं या हम जिसके साथ ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम उसके लिए हमारे लिए बायसेस होती है कि ये ऐसा दिख रहा है हमारे जैसा है तो हमारे जैसा वाला काम कर पाएगा। और तीसरी बायस होती है कंफर्मेशन की बायस। तो ये 3 बायसेस की हम बात कर रहे हैं। तो ये तीनों बायसेस को अगर हम ले लें तो तीसरी बायस जो है कि वी एक्सेप्ट आइडियाज और सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई आवर एग्जिस्टिंग बिलीफ। सो हमारा एग्जिस्टिंग बिलीफ ही तो वही है ना सर कि डिफरेंशिएशन वाला, कि वीकर सेक्स या अभी स्ट्रेंथ वाइज कह लीजिए, या कह लीजिए कि रात की ड्यूटीज अकेले नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिक्योरिटी। तो कुछ ना, ये हमारा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। तो ये बायस तो है ही, कंफर्मेटरी बायस जो है वो तो मेरे ख्याल से आपके बीएसएफ में भी है कि जहां पर कि आप इस आइडिया को मानते हैं कि हाँ ये हमारा बिलीफ है, तो हम आप उसको लेके अभी भी चल रहे हैं। चाहे इसीलिए तो आपने बताया ना कि बहुत कम विमेन है तो हमें देखना पड़ता है उनको कहाँ पर काम दिया जाए। जबकि संजय सर ने ये बोला कि एज ए कॉम्बैट व्हेन दे आर जॉइनिंग, तो उनको हर काम के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का काम उनको दिया जाए, दे हैव टू डू इट। लेकिन सर दे हैव टू डू इज वन थिंग, बट अभी आपके यहाँ का जो सिस्टम है, जो पीछे से मुझे जितने अभी सेशंस लिए हैं उसमें यही है कि दे सी कि थोड़ा सा लाइट वर्क, थोड़ा कंसिडरेशन तो है। तो जब थोड़ा सा कंसिडरेशन होता है, हम जेंडर डाइवर्सिटी मेंटेन करते करते इंक्लूसिव कल्चर बनाते बनते क्या होता है कि मेन के लिए वो एक्सक्लूसिव कल्चर बन जाती है। देन दे थिंक कि इनको इंक्लूड करते करते हमें एक्सक्लूड करते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी हार्ड टास्क है आप उनको दोगे, वो छुट्टी पे गई है तो ठीक है आपने उतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जितना कि एक मेल के लिए लिया, क्योंकि उनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। तो होता क्या है ना सर, जब हम जेंडर की डाइवर्सिटी करते करते और चीजों की डाइवर्सिटी खत्म कर देते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट था डिस्कशन में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन ये कि रेशियो बहुत कम है आपके यहाँ विमेन का, तो एक कंसिडरेशन है। अगर रेशियो 30 और 70 का होता तो मेरे ख्याल से ज्यादा कंसिडरेशन नहीं दे पाते। अभी तो मेरे ख्याल आप लोग का रेशियो 10 से भी नीचे है। तो हाँ, तो इसलिए अभी तो कंसिडरेशन चल रहा है, लेकिन टाइम विल कम कि जब आपको लगेगा कि 30-35 हो गया है, तो आई डोंट थिंक कि तभी कंसिडरेशन हो पाएगा। सिस्टम जो हमें डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है, शायद सिस्टम इसी तरह जो अनप्रिविलेज्ड इनसिक्योर लोग होते हैं उनको इसी तरह गार्ड ही करता है सिस्टम। अदरवाइज तो ये 3% भी आना मुश्किल हो जाए। तो हम जो फेयरनेस की अभी इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कर रहे हैं ना, वो तो नंबर्स पे डिपेंड करता है। लेट देम बिगर नंबर और देन दे विल स्टार्ट डिक्टेटिंग द टर्म्स। तो अब आप सोचें कि डिस्क्रिमिनेशन है ये, ऐसे तो बहुत सोसाइटी के ऐसे पार्ट्स हैं जिनको गवर्नमेंट और मैकेनिज्म टाइम टेस्टेड मेथड है, उनको थोड़ा सा तो एज देना पड़ता है, क्योंकि वैसे ही सिस्टम ने उनको बाहर किया हुआ है।
तो अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा? अब ये बात ये नहीं है कि सब इस चीज को सोचे कि नहीं ये अनफेयर है. दिस इज नॉट अनफेयर. They have to be given chance to come up to our level. This is the only exercise which has been carried out. अब हम सोचते हैं पहले दिन में ही हम तैयार कर दें. हम तो 65 से लड़ रहे हैं, अब ये लेडीज आई हुई हैं तो इनको हम उसी तरह तैयार करेंगे, हम वो सब कराएंगे. तो ये तो अपना थॉट प्रोसेस है मैम, इस पे तो क्या आर्ग्यू किया जा सकता है. ओके सर, तो ये 3 बाइसेस गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है. ऐसे सोसाइटी के बहुत पार्ट्स को गवर्नमेंट सेफगार्ड करती है जहां पे उसको चांसेस ये दिखते हैं कि अगर नहीं हम प्रोटेक्ट करेंगे तो इनका रिप्रेजेंटेशन ही निग्लेजिबल हो जाएगा. ओके रहा हुआ है. ओके और एक्सेप्टेंसी नहीं है तो गवर्नमेंट पुश कर रही है इसीलिए. ओके, सो दे आर एनकरेजिंग काइंड ऑफ. ओके, सो योर पॉइंट वेल टेकन सर. सो ये जब 3 बायसेस की हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, एक हेलो बायस, एक एफिनिटी बायस, एक कंफर्मेशन. इसके अलावा कोई बायस आप देखते हैं? अब हम बायस की बात इसलिए ना करें क्योंकि अगर हम इसको बायस कहेंगे तो वो नेगेटिव वे में होगा, लेकिन जब हम उनको कंसिडरेशन मान लेते हैं कि व्हाट अदर कंसिडरेशन डू यू थिंक विच आर वन सर हैज ऑलरेडी टॉक्ड, संजय सर हैज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट कि इनकरेज करने के लिए हम कर रहे हैं. इसके अलावा और कौन कौन सी बाइसेस आपके वर्क प्लेस? फेयरनेस की बात हम नहीं करेंगे, वो आप लोग करते हैं, लेकिन जो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पिछली बार जो उठ के आया था कि हम इंक्लूसिव करते करते एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए एक्सक्लूसिव हो जा रहे हैं. इस पर आपका क्या टेक है सर? आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? नहीं मैम, अभी पेरेंटिंग में हमारे गार्जियन बोलते हैं कि तुम लोग अपने बच्चों को लेके जा पॉजिटिव हो. हमें लगता है हम राइट ट्रिक अडॉप्ट कर रहे हैं पेरेंटिंग की. ये तो थॉट है अपना अपना. अपने बच्चे को मार नहीं रहे हैं मतलब ये नहीं कि हम अपने फादर की तरह अपने बच्चे को नहीं पाल रहे हैं, लेकिन सक्सेस का रेट डिसाइड करेगा फिर कि किसकी पेरेंटिंग अच्छी थी. तो ये तो समय आने दीजिए, आप तभी पता चलेगा कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक है या खराब है. लेकिन 10 साल हो गया फास्ट रिक्रूटमेंट से. मैम 2009 में आया. 50 साल हो गए हैं हमको तो. हम तो 1 दिसंबर 1965 से हैं. लेडीज को 13 साल में भी आप अगर बोलते हो, 13 साल में भी अगर अभी भी बोलते हैं हम इट इज द इनिशियल स्टेज. मुझे पता नहीं कब ये कब मैच्योरिटी, कब ये अल्फा मैन वाला माइंडसेट है. मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का टिपिकल कैरेक्टर है जो इस फोरम पे आ रहा है और कुछ नहीं. इट इज नॉट बीएसएफ, इट इज द कॉम्बैट फोर्स इज स्टिल मेल डोमिनेटेड. नो, सोसाइटी का इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर के लिए. बीएसएफ उससे अलग नहीं है. रादर इनबिल्ट लेकर के और मेट्रो में एवरीवेयर गवर्नमेंट. अब आप बोलोगे कि मेट्रो में अलग उनको डब्बा क्यों दिया हुआ है? यू कैन से कि उनको रिजर्व बोगी क्यों दिया हुआ है. अरे आप अपनी सोसाइटी की अपब्रिंगिंग देखो लोगों की, इसलिए दिया हुआ है. दे आर नॉट प्रिविलेज्ड वन, दे आर वल्नरेबल. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर. Okay, so as we are talking about biases, how it is vulnerability related to your works here? Vulnerability is a different aspect. That is, your work is a different aspect. Workplace is also a center of exploitation in certain cases. There are references and cases. It is not probably biased because of that exploitation. It is something because of other. आप बीएसएफ को अलग करके नहीं सोच सकते ना. वुमेन वर्कफोर्स की बात हो रही है. ओवरऑल वर्कफोर्स की बात करते हैं सर. चलिए सर, बायसेस को हम कैसे डील कर सकते हैं वो आप पहले बात बता ही चुके हैं. एनकरेज कर करके दोनों जेंडर्स को या एज, जितनी भी तरह की डाइवर्सिटी, चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, चाहे वो जेंडर डाइवर्सिटी, चाहे वो एज डाइवर्सिटी है, encouragement and making them accountable for their job and providing them safety, वो बीएसएफ में है. क्योंकि ये हमें पता है कि विमेन के लिए जो आप जो भी रात को पेट्रोलिंग के लिए उनका जो बनाते हैं मेक शिफ्ट्स, वो डिफरेंट होते हैं, और जो विमेन के लिए बनाते हैं वो डिफरेंट होते हैं. सो दीज आर द फ्यू मेजर्स थ्रू विच वी कैन डील विद द बायसेस अवेलेबल. तो अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो एज यू आर सेइंग कि सबसे बड़ी डाइवर्सिटी जेंडर की नहीं है, लेकिन पीपल फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया आर देयर इन द बीएसएफ. सो वी कैन सी फ्रॉम ऑल कलर्स ऑफ पीपल, ऑल different background, different cultures, different language, different eating habits, all are there in the BSF. So this way, if we find there is a lot of diversity available, but yes, one aspect only is missing, which is a gender diversity. तो ये important चीजें जो diversity की हैं वो all are mostly are there in the BSF also. तो as a
अब थोड़ी सी साइकोलॉजी की बात कर लें, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, सो वेयर एवर आई फाइंड दैट देयर इज अ स्कोप फॉर साइकोलॉजी एंड टॉकिंग अबाउट बिहेवियर, आई एम वेरी इंक्लूसिव अबाउट इट. So as a child, जब when a child is born, he doesn't know who is who. ना एक इन्फेंट है, उसको आप कोई भी गोदी में उठा लेगा, he is okay, कोई पहचानना नहीं, कोई उसका tantrums नहीं है. As he starts growing, he has his choices. इसके पास जाना है, इसके पास नहीं जाना है, ये उठाएगा घुमाएगा तो अच्छा है, ये उठाएगा तो नहीं, तो दैट उसकी चॉइसेस दिखनी शुरू हो जाती हैं. तो एज अ चाइल्ड व्हेन एंड एन इन्फेंट वी आर वेरी इंक्लूसिव. एज वी आर ग्रोइंग इन द सोसाइटी, चाइल्ड है, फिर प्यूबरिटी है, एडल्टहुड है, जब आगे बढ़ते हैं तो उससे हमारे ज्यादा इंक्लूसिवनेस खत्म हो जाती है. वी बिकम मोर एक्सक्लूसिव अबाउट पीपल, कि हमारी अपनी बायसेस काम करने लग जाती है, विच इज वेरी मच नेचुरल, बिकॉज after all we are human beings and our behavior is based on certain biases. It is behaves based on certain kind of attitude, certain set of mind. तो उसको एक्सक्लूड करना बहुत मुश्किल है. सो नेचर से जो एग्जांपल है वो आप पहले आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं. आर्मी, बीएसएफ, नेवी, जहां की भी हम बात करते हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी मैनेजमेंट का जो सारे फोर्सेस में दिखाई देता है, कि दे हैव, सब जगह सब तरह की चीजें नहीं हो सकती हैं, तो दे हैव वन प्लेस वेयर एवरीबॉडी कैन गो एंड डू प्रैक्टिसेस ऑफ देयर ओन रिलीजन. सो हाउ वी कैन मेक एनी culture inclusive culture and uniqueness. So if we call inclusive culture, it means there is some uniqueness we are bringing into our culture through which we are making it unique. So हम किस चीज से uniqueness ला सकते हैं? एज आपके यहाँ प्रेजेंट है, जेंडर थोड़ा ज्यादा डिफरेंट है, हैबिट्स, हॉबीज, पर्सनालिटी. These are few of the things through which we can create uniqueness and we can create an inclusive culture. Okay. And this is a video. अब इंक्लूसिव कल्चर में नहीं, ये आपसे मैं, हाँ, नाउ वी हैव टू क्रिएट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू हैव टू क्रिएट एन इंक्लूसिव कल्चर. किस तरह की इंक्लूसिव कल्चर की बात हम कर चुके हैं, जहां पर अलग अलग तरह से अलग अलग लोग हैं. सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिंग इंक्लूसिव कल्चर? आप कैसे, अभी आपने शायद नेक्स्ट स्लाइड में 1-2 पॉइंट्स देखे होंगे, लेकिन आप मुझे एग्जांपल दीजिए कि कैसे आप एक इंक्लूसिव कल्चर क्रिएट कर, जिसमें लगे कि यू आर फेयर, you are taking care of everybody on equal level, no biases are there, no obvious biases are there in your behavior. So what are the strategies for creating an inclusive culture? Do we have some or no? Sir, I'm requesting others also to please. इसमें मैम जैसे हम लोग अपना बटालियन में कोई अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें वी डोंट, और जो उसमें हम अपनी छोटी छोटी टीम बिल्डअप करते हैं अपने हेडक्वार्टर में, सब यूनिट्स में. सो वी ट्राई टू गिव चांस फॉर एवरीबॉडी विदाउट लुकिंग एट हिज बैकग्राउंड. कोई अच्छा कोर्स होता है, कोई अच्छी टेम्परेरी ड्यूटी होती है, कहीं जाना होता है, बिकॉज दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो बहुत अच्छा मैसेज देती हैं या बहुत ख़राब मैसेज देती हैं किसी कमांडर के बारे में. तो उसमें हम ध्यान रखते हैं कि वी डोंट लुक अपॉन दैट पर्सन कि कौन है, तो उसमें वहाँ पे हम फेयरली भेजते हैं. आई थिंक इस तरह की जो छोटी एक्टिविटीज हैं. Okay. कोई जब किसी को रिवार्ड देना होता है तो, और इनफैक्ट जब पनिशमेंट देना होता है तब भी मैडम, इसमें भी ये नहीं कि भाई पनिशमेंट जो भी है. So no differentiation based on background or culture or like that. Okay. उससे एक मैसेज आता है मैडम कि सीईओ साहब है, ये छोड़ेगा नहीं, हमारे पास का है, हमसे दूर का है. या कोई लड़का दूर का है, मान लीजिए हम केरला के हैं और लड़का बिहार का है, तो उसको ये नहीं लगेगा कि नहीं भाई मेरा इस अच्छे कोर्स में नाम सीईओ साहब देगा या नहीं देगा. एंड दैट इज द बिगेस्ट टर्निंग फॉर एनी कमांडर इन द फोर्स एट द एंड ऑफ द डे. बाकी सब चीजें. Okay. So these are the few strategies. तो we all know, आपने शायद इसके, मेरा तो आज प्रोग्राम का 8th डे है, सो इससे पहले आप लिसनिंग, बिहेवियरल कम्युनिकेशन सब कर चुके होंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट, इफ पीपल आर हर्ड दे फील इंक्लूडेड. सो if you are not listen to them, you just okay, we'll talk later, or no, you paying attention to somebody and not paying attention to the other. So that kind of biases should not be and are not there.
So listening is one strategy which you all, I think, agree. Then not only listening, based on the listening, taking decisions and providing action also. And so that encouraging them, making their teams, as you said, when people join you, do you make teams for them and give opportunity to, equal opportunity to prove themselves. So providing action, value all inputs, two-way communication between leaders and all employees. Yeah, this is possible or not? From two-way communication, not much is possible, as we have already discussed here, because mostly even if you send your feedback, but whatever has to be decided, maybe it is considered sometimes may not be considered. So there are few things which, so because of the security reasons, because of the kind of job profile, so two-way communication is not very popular. Do you agree to this or no? Who else are there present here? Yes, Upadhyay sir, you have not spoken for a long time. Kamal sir, you have not spoken. Certainly, until a two-way communication is there, you won't be able to get to know what whether whatsoever you are telling to your under command or the troops who are deployed in real action. No, that's right, sir. But is it आपके यहाँ हो पाता है कि नहीं हो पाता? आता है मैम, आता है. अच्छा. To what extent? किसी की पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है. वी आर सपोज टू लिसन एंड एक्ट अपॉन. ऐसा नहीं है इवन कि एक कांस्टेबल आपको टेलीफोन नहीं कर सकता. इफ हिज प्रॉब्लम इज नॉट हर्ड बाय द लोकल कमांडर, certainly he will be reporting the matter to me. It may be professional, it may be personal. तो ये two-way communication तो है. Okay, so two-way communication है, but personal problem के लिए तो है, sir. That is, I agree to this. But otherwise, decision making process वगैरह में के लिए two-way communication, I think it's not very much. एक सेट हायरार्की है कि up to what extent decision has to be taken by the local commander. I mean कि एक कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से we expect that much and he is well trained to know his limits. कि उसके कितना डिसीजन वो ले सकता है. डिसीजन गोली फायर करना है या नहीं करना है, certainly it has to be taken by him. All the precautions, time and again, they are briefed. But they are the real action man. आप वहाँ पे you are not omnipresent and omniscient कि वो क्या circumstances रहे हैं, and later on whatsoever he is telling on the basis of that the circumstances under he fired upon a criminal and rather he killed the criminal, वो उसके बाद की कहानी आपको बनाई. तो it is communication, ये professional उसमें आता है कि his version has to be believed by his company commander unless until proven wrong. Okay. And the same message go right up to hierarchy, I mean up to government of India. Forget sometimes the matter becomes, because we are dealing with the counterpart and issue becomes international. कभी कभी जैसे बहुत सारे local circumstances की वजह से ऐसा भी होता है कि state authorities they are not cooperating. तो वहाँ कुछ भी होता है, they are having their own sort of this politics and all bureaucratic things come in between. और उसमें आपको डिफेंड करना है अपने बंदे को, because you are believing कि whatsoever he is telling that is the sole truth. Later on हो सकता है इंक्वायरी में चीजें निकल के कुछ और है तो certainly he will punish. But yes, it is always two-way communication are there. It is inbuilt mechanism. Okay, okay, sir, well taken. Ma'am, I want to add something more. Yes sir. Ma'am, हमारे जो डिपार्टमेंट ट्रांसपेरेंसी बहुत है. जब भी कोई छुट्टी जाता है तो we take the interview and मतलब कि if somebody is having some problem, he tell मतलब I want to talk to you separately. Then he is called in the office, listen to his problem and whatever the solution may be, that is done. Okay. There is मतलब lot of मतलब interaction between lower levels and upper levels. So as far as from the discussion and right from the first session, it has come to that ये जो because it's starts from the top to bottom वाला system है आपका, so we can foster this kind of behavior through modeling,
that leader by example you call it, or observational learning you call it, or a foster through modeling you call it. It is there like because they know, they are watching, they are understanding the behavior of their seniors. Accordingly, it becomes the part and parcel of their life. There's nothing except the training which is provided in the beginning. Otherwise, it is all learning through the modeling. Then रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज में जेंडर डाइवर्सिटी और एज डाइवर्सिटी, जेंडर का तो चलिए हम ज्यादा नहीं करते क्योंकि वो रेशियो बहुत कम है, तो बाकी रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज में आई थिंक इट इज फॉलोड दैट इक्वल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया विल बी टेकन, ऐसा कुछ है कि नहीं है? मोस्टली तो कि ऐसा आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर रीजन डोमिनेंट है, कोई पर्टिकुलर रीजन से बहुत कम लोग हैं आपके यहाँ पर? नॉट एग्जैक्टली योर, आई मीन BSF. In all CAPF, you forget border security force. State population के मुताबिक उनकी स्केलिंग है. Okay. That ratio only recruitment will be there. There are provisions of reservation also for the weaker section of society. And at the same time it is for female candidate also. अच्छा सर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम आते हैं, रिमूव बायसेस के लिए हम आते हैं एम्पैथी पे. सो ये आप सबको, आप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी व्हाट इट इज, एंड so what do you think, sir, that how does empathy works in BSF culture? Sometimes it is said being too much empathetic is also not good for the optimum running of the organization. So what is your take on this? आपके यहाँ empathy सब जगह होगी क्योंकि ये human quality है, nobody can deny it is there available. So कभी-कभी ये बोला जाता है leadership में कि for a developmental leadership or transformation leadership that being too much empathetic is not good. So what is your take as far as the culture of the BSF is concerned? Empathy पर sir, कि आप दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, which is empathy. Sympathy है कि हम थोड़ी देर के लिए तरस आया, कर दिया, कुछ हो गया, भूल गए. Apathy है कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है. तो we are talking of empathetic कि हाँ उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या डिसीजन लेता उसके बेसिस पे. So what is, how much empathy works in the decision making process? That is what my question is. मैम यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगा जी. देखिए जैसे एक आप BSF के कमांडेंट की एग्जांपल लीजिए और एक पुलिस के DCP या SSP की एग्जांपल लीजिए. पुलिस के SSP या DCP को उसके अंडर कौन कांस्टेबल, कितने कांस्टेबल और कहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ से चाय पीते हैं, कहाँ पे पानी पीते हैं, उसको हार्डली कुछ पता होगा. लेकिन BSF के कमांडेंट को उसके 1200 जवान होते हैं, हर जवान के बारे में पता रहता है कि उसको किस कंपनी में, किस BOP में क्या खाना मिला, कितने बजे खाना मिला, लेट तो नहीं मिला, कोई आदमी की कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनट की खबर उसके पास रहती है. तो ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम है BSF में, जो हार्डली एग्जिस्ट कर रहा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सेप्ट इट मे बी एन आर्मी और द अदर आर्म फोर्सेस. तो ये एक एग्जांपल है एम्पैथी की, जिसमें कमांडेंट पर्सनली सुनता है किसी की ग्रीवांसेस को और एड्रेस करता है. Okay, so thank you so much, sir. Very good deliberation you have put forward. Sir, belongingness, nobody can survive in the isolation. We are human beings, we are social animals, we need people to be with them. So belongingness जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए सर बिलोंगिंगनेस के लिए. BSF में किस तरह की बिलोंगिंगनेस? अभी आपने कुछ एग्जाम्पल दे दिए कि आप उनका जब ध्यान रखेंगे तो वो आप बिलोंगिंग फील करते हैं तभी कर रहे हैं. इसके अलावा जो आप लोग कुछ फंक्शंस करते हैं, कुछ डिनर्स करते हैं, कुछ जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी इसलिए करते हैं कि दे फील दैट दे आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर यूनिट और वहां पे सब साथ करते हैं. इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल्स बिलोंगिंगनेस के जो आपको BSF में हो और मुझे बताना चाहते हो सर यहाँ पर कि हाउ डज इट वर्क इन क्रिएटिंग इंक्लूसिव कल्चर इन द BSF? Few more examples. Anybody can come up.
हाँ, इसमें वैसे बहुत सारे बीएसएफ बटालियंस में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कॉम्पिटिशन होते हैं, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें जवानों के साथ साथ उनकी फैमिलीज को भी बुलाया जाता है, उनके बच्चों को भी बुलाया जाता है, और दे आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दोज कॉम्पिटिशन्स। तो इससे क्या होता है कि उनका एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू दैट पर्टिकुलर बटालियन वो बढ़ती है। और जो कंपटीशन होते हैं, जैसे इंटर बटालियन कंपटीशन होते हैं, इंटर सेक्टर कंपटीशन होते हैं, इंटर फ्रंटियर कंपटीशन होते हैं, उससे भी जो वो कंपटीशन, जब बटालियन से बटालियन का कंपटीशन होता है, अगर फुटबॉल का कंपटीशन या वॉलीबॉल का कंपटीशन, तो उसमें ये देखा जा सकता है कैसे अपनी टीम को प्रमोट करते हैं लोग, कैसे उसको, उसके लिए हल्ला चित्कार, उसको सपोर्ट करते हैं। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये नहीं, वो किसी भी कीमत पे अपनी बटालियन को ये नहीं देखना चाहते कि हमारी बटालियन हार जाए। बिल्कुल सही। Okay, so this is this emotion of belongingness, which is it works a lot, because the level of belongingness of the employees shows their commitment towards the organization, and accordingly their performance and productivity of the organization, and later on success and happiness of the employees. So belongingness, we are with you and you are with me, whatever we are discussing here, that it is there in the, and like the example of empathy which you gave is really a very good example, that you know that where each of the Jawans is there and what he's eating, how much there is no problem in his life and all. So very good examples you have given about empathy and feeling, they feel recognized, they feel respected. So what are the effects of belongingness? Because when they feel belong, so of course, when we feel that somebody is taking care of us, we feel loved, we feel good. So our anxiety level and stress level goes down. It helps in managing anxiety and stress. It helps in employee engagement. And of course, motivation level goes up. So these are the few output or effects of the belongingness. And opposite of this is that loneliness kills. So there is a experiment conducted on the prisoners when we talk about the काला पानी की सजा हमारे पहले गवर्नमेंट के हिसाब से होती थी, कि एक डिंजी रूम में बंद कर दिया और कुछ कोई स्टिमुलाई नहीं है, बस खाना मिल गया खा लो, और लाइट तक सनलाइट भी ठीक से नहीं मिल रही है, no outer stimulus. So sir, this thing, the studies have proved that loneliness kills psychologically also, not only physically, psychologically also. It kills as people start losing on their mental faculties. Attention span कम हो जाता है, their सोचने का तरीका कम हो जाता है, मतलब वो उतना concentration level कम हो जाता है. So all these, so that is the reason that everywhere in the forces, because I have learned a lot from you people about BSF. So loneliness जैसी कोई चीज होते हुए भी नहीं फील कराने देने जाते हैं, because they are living together and they are feeling as a battalion, as a team, as a unit. तो ये सारी चीजें जो हैं उसके इफेक्ट्स होते हैं. लोनलीनेस अगर हम कहें कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, these are the benefits of social support. हम सबको पता है कि immune system strong होता है when you have support system, and आपका self esteem high होता है, illness कम होती है. आजकल हर बीमारी को they are the psychosomatic illness. If you have high blood pressure, sugar, so सबसे पहले और कुछ body parameters are okay, then it is related to stress, you're related to your anxiety. So all these things can be taken care of. 2-3 important things, we call it empathy, belongingness, teamwork, and of course biases, which we have already discussed. ये मैस्लो की थ्योरी है, आपने कभी ना कभी लाइफ में देखी होगी, पढ़ी होगी, कि हायरार्किकल नीड्स होती है ह्यूमन बीइंग्स की. सो बिलोंगिंगनेस एट द थर्ड लेवल. फर्स्ट आर द फिजियोलॉजिकल, रोटी कपड़ा, उसके बाद आता है मकान. पहले हमें खाने के लिए भोजन चाहिए, जो सबसे बेसिक नीड है. उसके बाद हम सोच सकते हैं कि हमारे पास घर है कि नहीं है. Then we come to love and belongingness. जब ये फुलफिल हो जाती है नीड्स, then we come to the esteem level of need, self esteem कहते हैं. और उसके बाद आता है self actualization. Very few percentage of the human beings reach to this level of self actualization, which is now it's time to give back to the society. We all are trying to do that, but very few percentage of people can reach to this level of self actualization.
because of the limitations, because of the mindset, because of the whatever the reason. But still, it is not that it is not there. 10 to 15%, the studies have shown people reach to where they feel now ample I have done for myself, my children and all, now it's time to give back to society, and where they have a level of satisfaction with them. So inclusive culture create करने के लिए sense of belongingness contributes to employee commitment, psychological contract, ये सारे terms मैं पहले बता चुकी हूँ आपको. More growth and productivity to the organization. So now would you like to share, because at the end when we have the experience sharing session, sir आपने बहुत अच्छा example दिया, जागीर सर ने भी दिए और आप तो कमल सर ने भी अभी example दिया, चंद्रकांत सर ने भी दिया और संजय सर ने भी दिया पहले. So आप सबने जो example दिए हैं तो उसमें कोई ऐसा experience जो total or not only inclusive culture, creating a culture you want. So was there anything you could change from that culture which was flowing for many years? Could you, आपके पास भी 15-20 साल या उससे भी ज़्यादा experience है sir. So anything which you could change, आपने कुछ example सर दिए जागीर सर, मुझे याद है जो आपने अपने run के example दिए. उसके अलावा कोई example आप दे सकते हैं जहाँ पर आपने लगा कि आपने उनके लिए वो आपने जो किया वो एक एम्पैथी बिलोंगिंगनेस के लिए ही किया कि इनके लिए अच्छा रहने की जगह होनी चाहिए, ये होना चाहिए. तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स, 2-3 एग्जांपल्स हो जाए तो उसके बाद मैं सेशन को कंक्लूड कर दूंगी, बिकॉज इट्स ऑलवेज नाइस टू कंक्लूड द सेशन विद एक्सपीरियंस शेयरिंग. सो टिल नाउ आई हैव स्पोकन अ लॉट, नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक. बहुत सारे लोग नहीं है क्या मीटिंग में? क्या है? लेट मी चेक. देख तो बहुत सारे लोग हैं. Ajay sir is also there. R.K. Tripathi sir is also there. हाँ, ये भी सर है नीचे, उन्होंने भी काफी इंटरेक्शन किया था. So, yes, ma'am, organizational change to आया है. For example, that's very vivid and a clear example, that is inclusion of this thing, Mahila in the combat role, in particularly BSF. That is there, that definitely bring lots of changes, and everybody is changing their attitude towards that. Although people are labeling me as biased, but yes, that's a debatable fact. But yes, there is inclusion, there is maybe biased approach, but still people are accepting them, and over a period of time that they will be accepted, and that will definitely change the overall working culture of the force. Definitely it is there. Sir, when you joined as a youngster and now, what kind of changes are you seeing? Ma'am, huge change. It's a lots of, it's a paradigm change, I must say. For example, earlier it is rightly said at the very beginning, some of my colleagues have stated that it is more of, Mr. Raghavendra has stated, it is more of border management, rather border, earlier it was border guarding, it is border management now. That again is the inclusive theory. Earlier it is exclusive job of, exclusive zone of border security forces. Now other organizations, other agencies are also taken into account, like what role supposed to be police, how police can contribute, how say IB can contribute, how other agencies can contribute towards the management. It is now concept become not guarding, it is management. It is more than guarding. Now the role has been changed. So that is, with change of role, there is changing in concept of command also now. Secondly, there is, earlier the people were not that literate how the presently is. Presently, there are people even at the constabulary level, you will find postgraduate. It's very common. Post-graduation is very common. Even there is technical BTech, BE, something like that. So people are, literate people are coming. So their perception towards approaching a particular task is totally different how it was earlier. So accordingly, we need to change ourselves. Our concept has also been changed accordingly. So these things are there. Lot many changes are there. Perceptual change is there. That is the main and most important issue that I want to highlight over here. Thank you so much, sir. Sir, anybody else would like to give example? What kind of change are you experiencing from when you join and now when you are managing under you a team, big team?
things will become more open. पहले जो चीजें थी वो काफी थोड़ी बहुत क्लोज थी. People रैंक का स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, तो लोग चीजों को कम बता पाते थे. अभी ये है कि बात करने में पीपल आर मोर अप्रोचेबल, और वर्क कल्चर में थोड़ी बहुत पहले से ट्रांसपेरेंसी भी है. इसीलिए ऐसा होता था कि जवान्स को या सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को सीईओ या ऊपर बात करने में मतलब परेशानी होती थी, प्रॉब्लम होता था. अब बिकॉज ऑफ वेरियस ऑन फॉर्मल इंटरैक्शंस, इनफॉर्मल इंटरैक्शंस, इस तरीके की चीजें हो गई हैं कि एक दूसरे को जानना, उनको समझ पाना पहले से थोड़ा सा आसान है, बेहतर है. तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत चेंज हुई हैं. वे ऑफ फंक्शनिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें, और लोग अपनी बात कह पाते हैं. सर आप बताइए कि ये क्या रीजन होता है कि जो पहले नहीं कह पाते थे? सबसे पहले तो थोड़ी सी तो वो जैसा कल्चर उनको दिखता है कि मतलब नहीं, कोई नहीं बात करता है सीईओ से, कोई नहीं बात करता है तो मैं कैसे करूंगा, काइंड ऑफ, बिकॉज दिस इज द कल्चर विच हैज बीन मेड. अभी देखते हैं कि नहीं, द पर्सन इज अप्रोचेबल. दिस वाज अ रॉन्ग नोशन दैट वी कैन नॉट डिस्कस आवर प्रॉब्लम्स. सर एक चीज और जो मुझे लगती है कि अभी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है सर, वो एजुकेशन इज ऑल्सो मेकिंग अ डिफरेंस. डेफिनेटली. Yes, because earlier 10th 12th वाले जवान अभी तो, because apart from BSF I had taken training at यहाँ पर देहरादून IIM में, अभी तो IIM में, तो वहां पर सर MA MSc ऐसे वाले जो वो जवान्स की वाइफ्स, नॉट जवान्स, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर वाइफ्स, इट वाज फॉर देयर वाइफ्स एंड दे वर, और MSc वो स्कूल में पढ़ा रहा है कोई कुछ, तो टोटल एक तरह से चेंज कल्चर में आया है. तो ये भी एक रीजन है शायद ओपननेस का सर, कि दे टेक इनिशिएटिव. है रीजन है, दे आर मोर लिटरेट, दे नो देयर राइट्स, और इस चीज को लेकर के तो चेंजेस आए हुआ है. ओके सर, थैंक यू सो मच अनुराग सर. जागीर सर, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? पढ़ाई का तो मैम कंट्रीब्यूशन होगा ही, स्पेक्ट्रम जो आप डिस्कस कर रहे हैं जी. बट एक चीज हमको और लगती है कि टेक्नोलॉजी जो आई, स्पेशली कम्युनिकेशन फील्ड में जो टेक्नोलॉजी आई है, उससे जो है एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ी है. एक समय जब हमने ज्वाइन किया था, बहुत हमने ज्वाइन नहीं किया था, हम आपको बताते हैं 2006 की बात, हमारी लगभग 10 साल नौकरी हो गई थी. तो राजस्थान में थे उस समय पर हम, तो कॉल करने के लिए आपको बॉर्डर से 20-40 करीब 45-50 किलोमीटर पीछे आना पड़ता था. मतलब सारे जवानों को भेजना संभव नहीं था, तो ग्रुप में भेज देते थे, आज जा रहे हैं तो 10 जवान भेज दिए, कल 10 जवान, वो भी शाम के टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो अभी क्या हुआ है कि ऑलमोस्ट हर जगह DSPT के फोन आ गए हैं या नेटवर्क आ गए हैं, तो एक्सेसिबिलिटी, मतलब पहले जवान अपनी बात को शायद नहीं उतना बोल पाते थे, बट नाउ दे हैव द एक्सेस टू द फोन्स ऑफ द हायर हेडक्वार्टर्स, हायर अप्स, और वो एक इश्यू शायद बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है कि भाई अगर हमारी बात आप नहीं सुनोगे तो हम आपके ऊपर वाले के पास चले जाएंगे. अब ये बात कोई नहीं चाहता है कि भाई मेरी बटालियन की बात या मेरे अंडर कमांड की बात ऊपर वाले के पास. Yeah, of course sir, hierarchy has to be maintained. हाँ, that sends a negative signal sort of thing. कम्युनिकेशन से स्ट्रेस भी बढ़ा है मैम, जो रिमोट सिस्टम से जो एड्रेस कर रहे हैं इश्यूज को, हम बॉर्डर पे बैठ के होम फ्रंट पे, मोस्ट ऑफ द फेट्रिसाइड एंड सुसाइडल केसेस दे हैव ए रीजन फ्रॉम देयर डोमेस्टिक डिस्प्यूट और डोमेस्टिक प्रॉब्लम. वेरी राइट, बिल्कुल सही बात है. टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ ग्रेट रोल हियर. कोई सा भी इशू उनके घर पे होता है, मॉर्निंग में हुआ, शाम तक दे आर वेरी वेल अवेयर दैट व्हाट हैज हैपेंड एट देयर प्लेस. घर में क्या हुआ है, किसके साथ में प्रॉब्लम हुई है, तो वो फिर उसके डे टू डे फंक्शनिंग पे भी असर करना स्टार्ट कर देता है. आज से 10-15 साल पहले जब ये सारी चीजें नहीं थी, एंड विद दिस न्यूक्लियर फैमिली का भी काफी सारा इसमें इशू रहा है. लोग पहले एक साथ रहते थे तो चीजें सॉल्व हो जाया करती थी 2-3-2.5 महीने में. अब तो मॉर्निंग में प्रॉब्लम हुई और शाम तक पीपल हु आर एट द बॉर्डर्स, दे नो कि क्या इशू है. तो ये ऑल्सो, एक तो उसकी जॉब का स्ट्रेस अलग है और फैमिली के स्ट्रेस के साथ में भी वो काम कर रहा है. वो तो इशू है. Even to सर supplement that, आपके ma'am, जैसे आर्मी में बहुत सारे majority of the suicidal case, ma'am, related to the domestic problem only. It is not
professional issue. More of them are domestic problem, and that too, instant communication is also one of the reason. जो देखा गया है बेसिकली, वहाँ झगड़ा हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, तू हाथ में हथियार होते हैं मैम, एनीथिंग कैन हैपन एट दैट स्पार्क ऑफ द मोमेंट. पीपल और वो जो एबिलिटी है सभी की उनके ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए, जेन्युइन हो या नहीं हो, वो ईगरनेस जो सबको उनके सिचुएशन को एड्रेस करने, एक्चुअली वो केवल प्रॉब्लम थ्रो कर रहा है, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढता है. और जैसा कि माइंडसेट हम लोगों का पहचानी गई होगी आपकी, डिफेंसिव है बेसिकली, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ही को बोला जाएगा कि आपकी वजह से ये हुआ है, उसने कनपटी में गोली मार ली तब भी और गले में मारेगा तब भी. तो हम डिफेंसिव रहते हैं. एक्सेसिबिलिटी से ये हुआ है कि चेन ऑफ कमांड कई जगह माइक्रो मैनेज हो रही है, डाइल्यूट हो रही है. वही ड्यूटी एर्थ क्लास आदमी भी करता था, वही ड्यूटी बीएसएफ फर्स्ट क्लास उस टाइम का भी करता था, लेकिन ड्यूटी की परफॉर्मेंस में उसकी वो नॉलेज आ नहीं रही है जो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट बन के जो कांस्टेबल बन रहा है. दैट नॉलेज इज नॉट एक्चुअली रिप्लिकेटेड इनटू एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन टास्क. जबकि पहले वाला वो एर्थ पास था, सिचुएशंस को हैंडल करना उसकी एक ग्राउंड नॉलेज बहुत अच्छी थी. तो कुछ तो चेंजेज हैं, उसी काम को करने में अब बहुत प्रेशर और मोटिवेशन की जरूरत है. जबकि बॉर्डर बढ़ा नहीं है, जब हम लोग आए तो उसे बॉर्डर सेम ही है, और नेबरिंग कंट्री भी, और इधर ही पॉपुलेशन अंदर की तरफ बढ़ी है, बॉर्डर स्ट्रेच नहीं हुआ है. लेकिन अब मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आप माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है, डाइल्यूशन ऑफ कमांड है, आप जेन्युइनिटी में केस के जाते ही नहीं है, और इंडिविजुअल ने तो केवल प्रॉब्लम थ्रो कर दी. पहले लोग बोलते नहीं थे, एक वो कौन सी शर्म थी भगवान जाने, लेकिन पर्सनल इश्यूज को लोग कभी भी उस फोरम पे डिस्कस नहीं करते थे. और लास्ट चीज सर, एग्रेशन अगर मान लीजिए कुछ जवानों में, जब क्योंकि पॉसिबल तो है ही है सर, उसको आपने कभी कैसे डील किया? अगर आपको लगा कि ये पर्टिकुलर जो हैं ये ज्यादा एग्रेसिव हैं, और उनको टीम में लेके साथ चलना और उनके एग्रेशन पे काम करवाना या करना, सो आपने कभी ऐसा कोई? देखिए मैम, उतना तो मतलब माइन्यूटली उसको हैंडल करने का, या उसका जो आपने नॉन लर्निंग वाला जो बताया था पैटर्न, बिहेवियरल चेंज का हमारे पास स्कोप नहीं होता है. हम तो वो तुलसीदास की चौपाई से भी चलते हैं कई बार कि भय बिन होए न प्रीत. तो कई बार उसे समझाना पड़ता है कि इसके रिपरकशन क्या क्या हो सकते हैं. तो एग्रेशन वो परमानेंट नेचर का नहीं होता है, मोमेंटरली होता है, जनरली कंट्रोल हो जाता है डिसिप्लिनरी एक्शन से, नहीं तो काउंसलिंग से भी हो जाता है. अदरवाइज तो इवन सिचुएशन के हिसाब से एक रूल में काफी पावर्स दी हुई है डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को, लेकिन जुडिशियस यूज करने की वजह से वो एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर आता है. आर्बिट्रेरी हम बाकी की तरह नहीं करते हैं. देयर इज नो रेफरेंस कि किसी को किसी चीज से डिप्राइव करने के लिए उस पावर को यूज किया गया हो, जिसे जो ब्लेमवर्दी है, जो विक्टिम है, वो तो बोलता ही है कि नहीं नहीं ये तो मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है. लेकिन प्रेशर तो है मैम, काफी ज्यादा है ये. मैम इसमें एक और पॉइंट है ना, इसमें मैम देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल इफ सम जवान इज एग्रेसिव, उसका कॉलीग भी है, वो भी समझाते उसको भाई ऐसे नहीं करना है. उसके ऊपर एक और प्लाटून कमांडर भी होगा, वो भी समझाएगा कि भाई ऐसे नहीं करना. तो उसमें कोई ना कोई उसको मेलो डाउन हो जाते हैं काफी हद तक. तो जिस कमांडेंट लेवल पे आते हैं तो फिर कमांडेंट उसको जब बुलाते हैं एक बार, और पर्टिकुलरली मैम आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, एक बार कमांडेंट की ऑफिस में ऊपर किसी को बुला लिया, हम लोग अपना काम में बोलते हैं कि पेशी, अगर पेशी हो गया तो उसको एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि भाई अगली बार तो मेरा टर्न आ गया, कुछ ना कुछ होना है. तो ऐसा नहीं है, राइटली सेज भाई संजय, जैसे कि हम लोग का जो पावर है, डिसिप्लिनरी पावर जिसको दे रखा है, इट इज वेरी जुडिशियसली यूज्ड, कि सीधा उसको हम सजाई दे देंगे, ऐसे नहीं होता है. उसको कोई बार कुशन देते हैं, सफिशिएंट कुशन हैज बीन गिवन, सफिशिएंट स्कोप हैज बीन गिवन टू अमेंड हिमसेल्फ, और उसमें एनवायरनमेंट मीन उसके साथी काफी रोल प्ले करते हैं. और जबान में बीच में बहुत बड़ा कॉम्रेडियरशिप होता है, आपस में उन लोगों को एक दूसरे का तालमेल बहुत जबरदस्त होता है. तो इसका जो इविल इम्पैक्ट होता है, इल इम्पैक्ट होते हैं, दे बीन जनरली कम्युनिकेटेड. दो सर होते हैं प्रोपागेंडा फैलाने वाला, वो तो मैम दैट्स क्या बोलते हैं कि आपको वर्क हैजार्ड बोलो या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलो, अदरवाइज नॉर्मली सब लोग कम्युनिकेट करते हैं भाई मत करना, इट विल गो अगेंस्ट यू. सो दैट वे चीजें जो आप बोल रहे हो एग्रेशन, उस लेवल का एग्रेशन उस लेवल तक मतलब नहीं पहुंचते, या कमांडेंट लेवल पे उस एग्रेशन को कम्युनिकेशन नहीं होता है जनरली, वो इट डजंट रीच दैट लेवल. ओके, मैं लास्टली मैं एक दो पॉइंट मेरी तरफ से है जी. अभी मैं फिर प्रीवियस पॉइंट पे जाऊंगा. अभी जो जवान है वो भी
कहीं ना कहीं पे मजबूर है वो भी। पहले जो कांस्टेबल आते थे, जो कांस्टेबल थी बीएसएफ में, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग थी, आज के जवान की रिक्वायरमेंट अलग है। अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, एक जवान के लिए भी डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा हैं कि वो भी बार बार हर 15 मिनट बाद अपने घर में बात करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज देखेगा, गूगल पे न्यूज चेक करेगा, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखता रहेगा। तो उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। हमारे टाइम में अगर जवान को 6 महीने में एक बार छुट्टी मिलती थी, जब हम नए नए आए थे बीएसएफ में, तो दे वर माइटी हैप्पी, वो बहुत खुश होते थे कि मैं घर से होके आया। अभी हर जवान को 2 महीने 2.5 महीने बाद छुट्टी चाहिए, और दे आर गेटिंग दैट। उसके बावजूद भी अभी इनकी रिक्वायरमेंट्स, बेसिक नीड्स, जो उसकी सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है, पड़ोस में है, वो जब बाहर जाके सिटीज में जाके वो मेट्रो इसमें मॉल्स में घूमते हैं, तो लोगों के साथ अपनी जब लाइफ कंपेयर करते हैं कि यार मैं तो कहाँ जंगल में पड़ा था और यहाँ तो लोग अलग हैं, अभी अपॉर्चुनिटीज अलग हैं। तो अभी काफी मुश्किल है। जवानों को पुराना जैसा नहीं बना सकते, लेकिन इट इज देयर इज ह्यूज चेंज इज देयर, एंड ह्यूज चेंज हैज टू बी डन इन द कमांड स्ट्रक्चर आल्सो। जो फिर बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है बीएसएफ में बॉर्डर गार्ड करने की, वो सेम है, मॉडस ऑपरेंडी सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है, सिस्टम सेम है, लेकिन जो जवान करने वाला है वो अभी बदल गया है पूरी तरह से। सर एक लास्ट छोटा सा पॉइंट कि एज फार एज कमिटमेंट एंड वो सारी चीजें हैं, तो वो तो आप यू टेक केयर ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट एंड देन द इंडक्शन प्रोग्राम। तो सर अभी पहले के जवान और अभी के जवान का जो आपने डिफरेंस बताया कि अभी डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, और पहले का एक होता था कि 6 महीने बाद छुट्टी जा रहा हूँ, तो बहुत एक काइंड ऑफ होता था कि 6 महीने बाद घर जाऊंगा तो सबसे मिलूंगा। तो उसके कारण क्या उनके लेवल ऑफ कमिटमेंट पे कोई फर्क पड़ा है, या उनके वर्क कल्चर में कोई फर्क दिखता है आपको? पहले का आज से 20 साल पहले जो होता था रिक्रूटमेंट, अभी तो उन लोगों का कमिटमेंट लेवल किसका आपको बेटर लगता है? पहले जो पुराने कांस्टेबल थे, अभी भी जो पुराने लोग हैं जो हमारे से भी कुछ एज हैं जी, दे आर मच बेटर, दे आर मच मोर सिंसियर। दो पहले का लॉट है जो मोर डिपेंडेबल, मोर सिंसियर। Okay, so same as we are seeing in every organization, every type of organization rather, it's not about। तो मुझे लगा था शायद आपके यहाँ पे पता चले, क्योंकि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बात करते हैं, पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, so we are finding that this newer lot they are smarter than us, but as far as वही है ना कि जल्दी मनी मिले, जल्दी आगे बढ़ो काइंड ऑफ, वो सब चीजें जो बहुत ज्यादा दिख रही हैं वो कभी-कभी बहुत डिस्टर्ब करती हैं सर। Ma'am, I will just come in here. There's a research that I'm part of, Future of Work, जिसमें the problem is that the world is moving towards instant gratification. Everybody wants it quick, 2 minutes noodles. So nobody wants to go through that grind, and they're impatient because of the fact that they have been brought up like this. So societal, if they are displaying these things at workplace, there's somewhere or the other down. It's not that कि वो ऐसे ही आए थे, वो कुछ धारणाएं पहले से ही लेके ही एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, और वो कहाँ से आती हैं? Of course, उनका past experience, family, upbringing, उनको टोका नहीं गया. So those things are there. Of course, smart in terms of talking, smart in terms of voicing their concern, smart in terms of technology. But when it comes to scratch them a bit on surface, that's what my concern is कि smartness ऊपर से सब दिख रही है. When we come to knowledge or the soberness कि हाँ इस चीज को ऐसे डील करना है, वो चीज नहीं हो पा रही। I'm not talking about that 20 or 22 years old. I'm talking about 35, 30 years old also. Yes, who are in the organization. So this has been a change, and I think this is how we have accepted it. There is no choice. We have to accept. So it's not at BSF. It's in our education system. When we see the lots. I was asking them, is there any difference or no? Because what the world we have seen and their world is of course different. Though through AITD we have come to know a lot about BSF.
and their culture. But I was just curious about कि उसमें भी कैसे change हुआ है. हरमिंदर मैम, अगर हमें कुछ जानना पड़ता था पहले, जब इंटरनेट तो 2000 में आया था, जब मैंने पहली बार साइबर कैफे में जाके चीजें देखी थी, बट उससे पहले मैं लाइब्रेरी में जाके बुक्स 4 ढूंढ के फिर उसको पढ़ के देन आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड. अब क्या है, सीधा गूगल किया और इट्स जस्ट देयर, फर्स्ट पेज से ही लोग कॉपी करने लग जाते हैं rather than. इसीलिए तो प्लेगरिज्म आता है, इसीलिए तो थीसिस और पेपर्स रिजेक्ट होते हैं ना. Anyway, so thank ma'am, we are overshooting the time, so I'll just say that, sure. This was my last concern. I just wanted to see, is there any change in the working culture of BSF? No, ma'am, I think this is everywhere. Okay. And I was listening through most of the session. What a great way of voicing out things in the session. I think, ma'am, you must have had a good chance of. I had a good time. I really enjoyed. Yeah. I really enjoyed, because always I enjoy, because it's a lot of interaction. Yes. The commandants are assertive because of their work, but I think they're respectful as well. So thank you all. I would like my team to share the feedback link. Again, before we wind up, thank you, Harminder ma'am. It's always a pleasure to have you around. And get into the mindset of how do we develop culture in different teams. Thank you all. And as I always say, you are precious, and at the same time, you're not precious only for you, but for your family, for us and the entire nation. Please do take good care of yourself. Kal milte hain. Shubharatri. Jai Hind. Thank you, everybody. Thank you, everybody, for being such a nice and interactive audience. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am.